Yes? We are ready to kickstart? You want 5 minutes? Okay. Okay. I request everybody to please be seated. Ma'am, it's okay. It will take 5 minutes for us also to start. Please be seated. Thank you. Thank you so much. So good morning, everybody. Good morning. Are you having a good morning? Good morning or a great morning? Huh? It's a great morning. Of course, it's a great morning because I believe, first of all, I believe that today's world is not about being the smartest or being the strongest. I believe today's world is about adapting what is new in the world. How many of you agree with this? Please raise up your hands. How many of you agree with this? How many of you are actually moving ahead with pace in the digital world? Please raise up your hands. Trying. Even if somebody is trying, please raise up your hands. Perfect. Thank you so very much for participating. My name is Janvi and I'm here as your MC today. And this is a workshop on artificial intelligence, machine learning and cybersecurity presented by FEPI, Federation of Educational Publishers in India, in collaboration with Prayog Bharati. We have our collaborative partners, Prayog Bharati Foundation, and this is absolutely in association and powered by Class Map. Can we have a huge round of applause? We do have our event partners present here. We have JC Publication, Tarun, Prachi, Smart Books for Smart Learning, and Rohan Books. Come on, everybody. Can we have a huge round of applause? And this is absolutely a great morning to start with. What I personally believe is that we all have heard this everywhere that, AI is coming up in the market and AI is there to take your jobs away. How many of you have heard these statements in the market? Please raise up your hands. Everybody. But what I believe is this is absolutely partially true. Anybody who doesn't know AI is going to lose the job. Anybody who is learning AI, who is adapting AI in the market, going ahead with the natural pace, what is there in the digital market, is not going anywhere. In fact, they are going to be remarkable in the society itself. And alongside the artificial intelligence, we are going to have cyber security threats. So for that, I think these both things go hand in hand. And this day is not just about a workshop. This is actually about unlearning what you already know, and learning and adapting something new. So today, after the session, you're going to have some wonderful insights from the industry experts. We do have presenters who will be coming here on the stage and they will be technically telling us the realistic market state of artificial intelligence, how the world is moving, how we need to adapt and what we need to do. What are the next steps ahead? How many of you are ready to actually learn from today the valuable insights that we are going to do? Raise up your hand and put your hands together. Come on. Perfect. So now I think we are all geared up. And to start this wonderful session off, of course, when we are talking about knowledge, when we are talking about something that is going to make us more brilliant, we always have to thank Ma Saraswati, and for that we do have a traditional lamp lighting. We have our team members, our core team members of FEPI. I would request all of you to please put your hands together for the core member who are like the backbones of FEPI and actually giving their heart to the publishers of India, power to the publishers of India, and actually acknowledging well. Let's have a huge round of applause for the publishing community. Let's have our president, Gopal Krishan ji. Sir, thank you so very much, first of all, for your ablutions. And now we have General Secretary Rajesh Gupta ji. Can we please have a huge round of applause? We have our Treasurer Rajiv Goyal ji. Thank you so very much, sir. We also have Rakesh sir, but I think he's not yet here. But still a very thankful note to him as well. Ladies and gentlemen, we are now proceeding towards the lamp lighting ceremony. This is all about celebrating the knowledge. This is all about celebrating the divine wisdom that we are moving towards. Can we have a huge round of applause for this ceremony?
So here we have the core team of FEPI lighting up the traditional diya in the name of Ma Saraswati, the goddess of wisdom and knowledge. And of course, with the divine presence, we are going to grab a lot of insights in a much better way. Thank you so very much to Team FEPI for the continuous efforts to guide and empower the publishing community. Thank you very much to the entire team members. Can we have a huge round of applause? In order to actually set the tone right, I would request Mr. Gopal sir to please step up once again and please welcome our audience in your insightful manner. Can we please have you here on stage? Everybody, can we please warmly welcome him? Come on. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि दोबारा से हम लोग एक क्लास में बैठे हैं और फर्स्ट हाफ में दीपिका मैडम ने हमारी क्लास ले लेनी है और सेकंड हाफ में नरेंद्र सर ने। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन, रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ FEPI, fellow publishers and friends from the education fraternity. It gives me great pleasure to welcome all of you to this important AI workshop hosted by the Federation of Education Publishers in India. Today we are not meeting only to discuss a technology, we are meeting to understand a movement. Artificial intelligence is not just another tool, it is not just another trend, it is a force that is slowly entering every classroom, every teacher's table, every student learning journey, and every publisher's future. For many years, education has been built around books, teachers, classroom, and exams. These will always remain important, but the way children learn is changing, the way teachers teach is changing, the way parents expect learning support is changing, and the way schools choose educational material is also changing. This is the time when we as educational publishers must not stand at the side and we watch the change happen. We must become a part of the change. AI will not replace good teacher. AI will not replace good books. AI will not replace strong content. But AI will surely change how books are supported, how teachers are empowered, and how students practice, revise, understand, and grow. A child today does not learn only by reading a chapter. The child wants to see, hear, practice, interact, ask questions, receive feedback, and learn at their own pace. A teacher today does not only need a textbook, the teacher needs worksheets, assessments, lesson plans, activities, remedial support, and digital help to manage different learning levels in one classroom. This is where AI can become a powerful partner, and it can help teachers save time, it can help students learn better, and it can help publishers create smarter, richer, and more useful learning experiences. And most importantly, it can help Indian education move from only covering a syllabus to actually building understanding. But with every big change comes one important responsibility also. We must use AI wisely. We must protect the value of original content. We must respect copyright. And we must maintain quality. We must ensure that technology supports learning, not weakens it. We must remember that education is not only about information, it is about values, thinking, language, confidence, discipline, and character. As a publisher, we have a very special role to play. For decades, we have carried knowledge into school across the country. We have served teachers, we have supported students, we have built trust with institutions. Now we must take that trust into the next era.
The future will not only belong to those who have the biggest technology, the future will belong to those who combine strong content with smart technology. It will belong to those who understand the classroom, understand the teacher, understand the child, and then use AI to make learning more effective. That is why, that is why FEPI has taken this initiative. This workshop is not only about learning AI tools, it is about preparing ourselves for new behavior pattern of learning and teaching. It is about helping publication houses make a smooth transition. It is about ensuring that Indian publishers do not fall behind while the world moves ahead. We must race with time, but we must not panic. We must adopt AI, but we must not lose our educational soul. We must modernize, but we must not compromise on quality. Today, I request every publisher present here to look at AI with an open mind. Do not see it as a threat, see it as an opportunity. See it as a bridge between the printed books and the digital learner. See it as a way to make your content more powerful, more interactive, and more useful for schools. India is standing at a very important point in its education journey with NEP 2020 and NCF 2023. Competency-based learning, skill development, digital transformation, the direction is very clear. Education must become more practical, more personalized, and more future ready. AI can help us move in that direction. But the leadership comes from us. The responsibility must come from us. The quality must come from us. Let us not wait for change to force us. Let us prepare ourselves and lead the change. I strongly believe that the workshop will be a starting point for many new ideas, new collaborations, new learning models. Together we can ensure that the publishing industry does not just survive the AI revolution, but become one of its strongest contributors. Let us move forward with confidence. Let us innovate with responsibility. And let us build an education system where books, teachers, technology, and AI work together for the future of every child in India. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so very much for your valuable words. And I completely agree that when we are moving ahead in the technology, we also should learn to take the responsibility and the complete accountability of the same. And this is the time wherein now on, we will be getting to know more insights from the industry experts. And for that matter, we are privileged to have highly accomplished professionals who will bring deep knowledge and real-world experiences with us. First of all, let me welcome Dr. Deepika Jain, an expert in AI and machine learning with extensive experience in research, linguistics, and advanced technologies in education. Can we please have Dr. Deepika right here on the stage? Everybody, put your hands together for a learned expert right here. Before Dr. Deepika starts her session, this is my humble request from everybody to please put your phones on silent so that there is no obstacle between us and the learning procedure. Thank you so very much. Dr. Deepika, the stage is all yours. Very good morning, one and all. So, we are here to learn AI. First of all, as our publishers, Dr. Gupta, Dr. Sharma said in our first meeting that people are getting a myth that AI is taking the jobs. So actually it is a myth. Because AI is a model which you are training. However, human is training a model, it is giving the results. So the rubbish you give to the AI, the model is trained in that way, in a rubbish way.
it is giving the fake results. You must have gone through that the AI, the ChatGPT, had earlier given the wrong results, wrong solutions for the IAS exams, UPSC exams. So it's the human beings who will be correcting it. It's you guys, everyone, who will be looking into it and correcting it. So let's start with AI. So what basically is AI? Anyone? Anyone from the back? भाई इतना AI हो रहा है इतने सालों से तो कुछ तो पता ही होगा कुछ भी जो मन में आए पहला थॉट हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम इट It is the intelligence of a computer that gives you result as per your expectation. ओके सो व्हाट अबाउट हमने ये कहते थे कि पहले एक छोटा बच्चा होता है उसको हम कुछ सिखाते हैं वो वैसा सीखता है जैसा पेरेंट्स उसे सिखाते हैं वो वैसा सीखता जाता है दैट इज़ वी कॉल्ड एज पेरेंटिंग राइट सो AI इज़ अ पेरेंटिंग ओके तो जैसे हमने बच्चे को सिखाया वो वैसा सीख गया उसको आपने गलत सिखाया तो गलत सीख गया अच्छा सिखाओगे तो अच्छा सीखेगा ठीक है traditional publishing and artificial publishing so what we say just a second so traditional publishing पहले क्या होता था सारे आप publishers बैठे हैं पहले किस टाइप से आप पब्लिशिंग करते थे एक ऑथर आता था आपके पास कि हमने एक बुक लिखी है हैंड रिटन नोट्स बनाकर कुछ ऐसे ही कर कर आता था ठीक है फिर उसके बाद आप उसे रिव्यू करते थे ऐसे ही होता था फिर उसके बाद क्या होता था छाप देते थे बस उसमें मतलब मुझे याद है जब हम लोग स्कूल में होते थे बहुत छोटे होते थे हिंदी की बुक्स में बहुत सारी मात्राओं की और हर चीज़ की गलतियाँ होती थी कहीं कहीं वर्ड्स भी आधे अधूरे होते थे ठीक है तो उसी चीज़ को हम करेक्ट करने के लिए AI को लेकर आए हैं कि आपका भी टाइम कम लगे और पब्लिशिंग भी जल्दी हो ठीक है सो AI के थ्रू आप अब बुक से ज़्यादा ही ये AI है आप एनिमेशन वीडियोस शॉर्ट फिल्म्स इवन एनिमेटेड कॉमिक फिल्म्स इनके थ्रू सबके थ्रू आप AI का मेंटेन करते हैं आपकी ये 6 पाइपलाइंस हैं मतलब आई डोंट नो वेदर आई शुड बी ओनली इन इंग्लिश और शुड बी आई इन इंग्लिश whatsoever is comfortable you with everyone with the viewers with the listeners basically I'm comfortable with it okay so we have 6 stage pipeline covering with the authoring then we have editorial processing the proofreading design and typesetting production and the distribution so what do you understand by authoring yes authoring क्या होती है authors लिख कर आते हैं publications they submit their publications their manuscript to you and in the editorial process what do you do editors बैठे हैं कुछ तो बताइए editors क्या करते हो भाई proofreading copy editing composing so which all tools do you use now we come to the AI so what all tools do you use to have your this processes For languages, we usually rely on Grammarly okay and a couple of more chatbots type. okay Proofreading and all, we do sometimes rely on chat. ChatGPT. So there comes an AI plug. Okay. Now, what do you do in the design and type testing? Graphics, infographics, आप कैसे बनाते हैं? Illustrators. Photoshop. Draw.io, I guess. Maybe. People might be using. We have one more like Canva. Canva is also giving the better images and it is one of the authentic tool also. Okay. So, moving forward with such phases. So, आप typesetting में क्या करते हैं? Anyone? InDesert. Okay. Anything else from anyone? Ma'am की तरफ से ही आ रहे हैं. Ma'am, your good name?
Shalini, okay. Cheryl, you're from which publication, ma'am? Bicho Technology, okay. So anyone from any other publications or technology? Yes, please, ma'am. Backside. Okay. So any particular tool you are using in the current scenario? No. In design, okay. Okay, for the images, the layout, and everything, we can use Canva. For your printing, then production, what are your stages? Like you just deliver your manuscript to the author, and author gets your manuscript printed. Publisher gets your manuscript printed when the author says yes. Okay. So distribution and sales, obviously this contains another AI, because you have to maintain a record of numerous number of schools, or I think everyone is here from the school publishing. So numerous number of schools, and if you're for the universities, they demand their publications, their subjects, their core subjects. Accordingly, you make a list and distribute your books. So coming on to with the peer review process, we have different assisted AI tools, starting from Grammarly, as ma'am said. So I think many of the people have a good command on Grammarly. We have Canva AI. We have, moving forward, the Quillbot, Turnitin, and Grammarly. So these are the 4 major authentic tools which you can use and get your data checked for the AI plaque, for the normal plaque. As per certain discussions with the publishers, we have found that people are not able to get their data checked. Turnitin, आपके पास शायद access नहीं होता, आप लोग शायद individual Turnitin, obviously I understand subscriptions मिलना बहुत मुश्किल होता है. But the authors which belongs to universities or to an educational or academic institutions, generally they have their own Turnitin access. So they can check their own AI plaque, their normal plaque. They get the source from where they have taken the context. I'll show you with the hands-on in a moment. And similarly, in the Quillbot also, you can check your and also humanize the context. From AI content, you can convert into a human content. So from when we were talking, so we consider the books nowadays must be based on the NEP 2020. Anyone with the concept of NEP 2020, क्या लेकर आ रहे हैं आप? मतलब 2020 में आया था ये concept NEP का, अब 2026 चल रहा है. In the 5 years line, like where we are. Okay, so what is NEP? We are referring, sorry, thank you. Okay. Experiential learning, So yes. instead of rote learning, we are moving to more of the practical learning, and instead of focusing on a single answer, we are giving our students the aspect of giving more than one answer, so that outrightly it cannot be denied. We are giving them a thought and a food to think for, that this can also be the aspect. So single rightly, not only one answer, students can think beyond, and instead of just simple rote learning, it will be more of understanding and the more explanation which can be given. Yes, completely correct. We are moving forward towards industrial-based, real-life, whatever the एक बच्चे को बाहर निकलकर क्या वर्ल्ड भी फेस करना है, they have to face the world. So वर्ल्ड फेस करने के लिए उनको रेडी किया जा रहा है with NAP 2020. अब अगर आप देखें तो जो 12th के बाद एक कॉलेज में एक बच्चा आता है, वो बहुत सिंसियर होता है फिर भी थोड़ा सा, कुछ हद तक, ज़्यादा हद तक नहीं कह रही, कुछ हद तक. बट वहाँ पर आपने अगर देखा होगा NEP के अंदर एक आपका वेदास की नॉलेज है, योर ऋग्वेद, सामवेद, अदर वेदास, इन सब की नॉलेज है.
उस वेदास की नॉलेज, उसकी रिलीजियस नॉलेज या स्पिरिचुअल नॉलेज जिससे हम हमारा मतलब समाज पीछे हटता जा रहा है, उसे हम लेकर इसलिए आ रहे हैं ताकि उनके संस्कारों में आए एंड उनकी मॉरल एजुकेशन इम्प्रूव हो. ठीक है. एंड विद दैट कॉन्सेप्ट वी हैव वन डेमो ऑल्सो. But before that demo, we have a hands-on session for Turnitin. Anyone would like to volunteer for Turnitin with your documents? Sir, वो चीज़ नहीं आ रही उस पे. पता नहीं, उन्होंने शायद मुझे लगता है एक ही स्क्रीन कर लिया. स्क्रीन. ओके, फाइन, थैंक यू. जैसे हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स टेक कर रखे हैं, इफ़ एनी वन वॉन्ट्स टू वॉलंटियर विद देयर डॉक्यूमेंट दे कैन प्लीज प्रोवाइड मी. Here's a document. Which we have checked. It says that they have a similarity, that is a mean normal plaque of 6% and an AI writing of 0%. ठीक है. So AI writing अब कुछ नहीं है, तो they shows बिल्कुल यहाँ पर generate करके भी दिखाते हैं. AI generated content मतलब डायरेक्ट आपने ChatGPT से या Gemini से जो सा content लिया है, that is also shown here. अगर किसी ने context को rephrase करा है, because we rephrase also the context using Grammarly, generally using Grammarly, so that context is also shown here. The AI flag in a complete form is shown here. Then you have flags. In this flags, you are able to view the documents which are white backspaced or white space documents are viewed here. Then I'll show certain more. Let's post this one. Here the similarity report is 18% and it is showing that from where the context has been taken. These are the source areas from where the context has been copied and taken. It will generally show you from where it has been taken. This way you can click and get your context from where it is, कहाँ पर आ रहा है ये context. Similarly, the AI writing also, in this it shows 45 of the AI generated content. 45 means that 45 areas are there, 45 paragraphs are there where AI is there, which is comprising of the 90% of your AI. So when we come up, it is highlighting the entire context where AI is there. I think there must be one with the flag also. Yes. So this is where the hidden context is there. मतलब आपने लिखा है but उसके ऊपर white space कर दिया है ताकि वो दिखे ना, flag में छुप जाए. But that this is where like Turnitin is able to access your hidden context also where flag is there. So this is how Turnitin is working. Now when we come to your Canva, you can generate any figure from here. Let's suppose. Yeah. Any content what we are generating from here, if somebody is, or any author is giving us some content, so we can easily come to know whether the content has been copied. Yes, exactly. You can get to know. So the objective of this tool is to produce whenever the author is sending any content, right? Every time we are hurries to produce a new book, new release or something like that. So they are going to copy the content from here and there is an intellectual property. Everyone is holding their intellectual property rights, right? The copyright statements, and when you are
And when you are producing, right, anybody who's going to read in the futures, they can claim. And they can raise you the concern that why you are copying the content because this content is intellectual property of our organizations. We have built this content, right? And how can you copy it in your books? So this is something that the people who have built the platform, this is one of the example. We can build the platform on the in-house where the LLM and the RAG is going to check with your repositories to understand that the content that you have stores is where is coming, from where you copied, right? From where you are storing. So that is something that we can check through these tools. There is multiple tools are available in the market. This is one of the tools that we have access to the licensed versions. Other tools are the free, but there is a limited type of checks are available. So that is something that we are trying to give you the demo, that whenever the author is going to send, you can check on the first level. Instead of going through the deep dive, reading and writing to your statements in your book before publishing, that is something we can do it. The only condition is that the content should be available on the net. Yes, content should be available on the internet. There is one more, the exercise is coming very soon. Like those books are stored in the almiras, right? The government books, law, advisories, and the land acquisitions advisories where the land is acquired by someone, right? So those content is going to, very soon is going to digitalize, and next future is something that you can get the offline content also verified by these tools. So these are the tools is coming in the market. Yep. Thank you. To add on this, every university, since I said, have their own Turnitin access, so they have their own repository. अगर आपने एक बार उस मैन्युस्क्रिप्ट को अपने पास चेक किया है और अपने उस रिपोजिटरी से नहीं हटाया है, तो हो सकता है कि आपको वो फिर से 100% फ्लैग दे दे, बिकॉज वो आपकी रिपोजिटरी में है. तो आप अपनी रिपोजिटरी से हटा सकते हैं उसको एंड रीचेक कर सकते हैं. ठीक है. And yes, please, no problem. Well, just a scenario. Let us say that you have got a manuscript from an author, right? And the manuscript is in a very bad shape. Okay. Now, you as an editor, trying to think that, okay, fine, let me refine this entire content. For that, there is somebody who is using Grammarly, or let's say Claude or Gemini, it can be anything, right? Now, the moment that person does it, and after that, if you put it in the Turnitin, right? So we will be able to see that how much amount of AI has been used to manufacture this content, right? Now the point is, then how exactly, like, I'm just trying to think about the basic theme of this workshop. Is it for powering the editing part through AI? Because we are also talking about Turnitin. Both of these things are contradictory. No, sir. Because whenever you're writing, because in this AI world, you can't stop anyone writing from using the, you can refrain anyone using the ChatGPT or Gemini or Claude, anyone, right? So how you will improvise the learning, writing skills using AI? You have to first must be first helping the authors let know that they are using the entire AI flag. And obviously AI flag is not a I'll acceptable add thing. something Yeah, to you, right? So there is an organization policy. Every organization, every publisher has their policy that what is acceptable level to generating the AI contents. So you have the acceptable level policy. The tool is going to give you the indication that this is 70% AI generated contents, right? Your organization says that you have your research centers, you have your scholars, you have you giving advisory to government, you giving advisory to colleges and all. Their people are also smart enough to understand the language, okay, the content. But still they also understand the way the AI is moving, what level of restrictness we should implement. So the tool give you the suggestion that the modernization of acceptable level, right? Acceptable level, how much you can accept yourself, right? So that is something we need to build, work out, and accept the AI generated contents to publish. That is something we can do it. Yeah, because my question is what exactly then remains the value of the author. And if we can do it in-house, like me and my editor, we both will be sitting one day, like, because
one of our authors, right, recently. He sent us some material, and we found something very eerie in that, right? Probably the uses of M dashes, and not only this, the entire sentences were very strict. Now, when you're expecting something on manuscript level, it needs to be raw, like even understand the humanness with it. Right. So me and Mr. Yodi, my editor, we were thinking that if this is the scenario, if they're using AI so vehemently, we can just create the book in-house, right? Right. So because of this reason, right, everyone has their own mentality or the vision of thinking, where they wanted to reach by their words. They have their emotions, they have their connects with the books, right? The way that they are connecting to you or the readers, right? That is something we need to understand and build the policies to accept that level of content. What should the acceptance scale of AI? Sorry, come again, sir. Acceptance scale of AI, acceptance scale. Okay, so I tell you one story with the Fidelity. We all three works in the past in the Fidelity. Still, he is working. Right, Fidelity is the competitor of BlackRock. Right, so these are organizations manage the entire world, the assets. Right, where we have the assets in 400 plus cloud environment, 200 and 2000 scalable the AI solutions to understand who is doing the payments, to understand the forgery of the payment, to understand who is writing the advisory to the assets and the valuation of the assets, and everyone is using the AI. That we come to know that, okay, if someone is writing the asset evaluation, that someone has to go for reading and investing those evaluated assets values. So we can easily understand this is AI generated contents and the evaluation is generated by that. But still there is a crux of the sentences or the advisory by the advisors, asset advisors, where we can accept. So that is something somewhere we need to graph yourself where we can do the acceptance. Yeah, please. So I would like to add something to your question. So there is no right or wrong answer to your question. How much scale we can allow AI to come into our no. Actually, what will happen over the time, all the organizations, your competitor, your employees will start using AI. It's not that much as of now. But if you think that I will not use AI to keep my content natural, you will be behind. Okay? Because AI, if you see AI 3 months back and AI now, it's phenomenal. You can see the scale at it is going. So if you think that I want to keep my content natural, there are two sides of it. Maybe it become very popular. Maybe it lags behind. People do not, because everyone here, I can say around 10 or 15 people since they have joined this session, they may have gone to the AI tool. Even I was just using AI on my phone. Maybe many of the people will be using. Unknowingly or knowingly will be using. So there is no right amount of scale you can use AI in your organization. You have to define it. Where can it come from? It can come from your competitor. It can come from your requirement of the content, requirement of the users, the user you are catering to. Maybe you can take surveys. Maybe you can, look at the environment you are operating in. So it will be, today you may not know the answer. After 6 months, you already know how much AI is good or bad for your content. So this is everyone is learning. No. And if industry, set a standard too early, we may be limiting the, the scope which we can introduce into our environments. So it may be over few years, after 5 years, 7 years or something, a standard may come, but it is too early to adopt that standard as of now. Thank you. So like this, we can generate the images using the Canva. You can give any of your prompt to Canva and generate your images. Similarly, when we talk about the Quillbot, we have AI humanizer here, which means like if you're copying any context, let's suppose we take ChatGPT.
फीचर्स नहीं होते. God, just a second. Like you take any context, you're copying any context and you're converting it into using the AI humanizer. Still, it will be giving to some extent the AI predicted text will be there. It will not might not completely humanize your text. So there comes your expertise of your जिस पे भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी book पे आप काम कर रहे हैं, उसकी expertise, उसकी domain की expertise आपके पास है, मतलब authors के पास है. तो आप उसे edit कर सकते हैं अपने हिसाब से. But unless you have that expertise of the domain, you cannot edit the book. Yeah. Put this humanized thing into AI detection, right? Yeah, you can. AI detector. You can just paste the text and detect AI. 100%. It will humanize it. Humanize AI will जो आपने कंटेंट कॉपी कर रहे हैं वो उसे ह्यूमनाइज करने में आपकी हेल्प करेगा. बट ये कि until unless you will do it, बिकॉज वो कंटेंट कॉपी मतलब आप ह्यूमनाइज करने में उसको सेंटेंस चेंज कर सकता है, स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है, तो वो आप ठीक करेंगे. देयर इज वेयर योर रोल कम्स इन टू प्ले. नाउ व्हेन यू विल से दैट प्लैगरिज्म चेक कर सकते हैं, तो वो प्लैगरिज्म भी चेक करेगा, बट कंपैरेटिवली विद द टर्निटिन ज़्यादा अच्छे से करेगा, क्योंकि वहाँ पे वो AI प्लैग बता रहा है, आपको फ्लैग्स भी बता रहा है कि वो कैसे हिडन है अगर कोई प्लैग टेक्स्ट है, एंड देन योर नॉर्मल प्लैग ऑल्सो विद द सोर्सेज. जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हैं, कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं, आप 2-3 बार कोई भी एक रील स्क्रॉल कर लिया आपने किसी भी एक टाइप की, तो वो आपको सेम रील स्क्रॉल करके दिखाता है. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ए रिकमेंडर सिस्टम विच इज़ अ पार्ट ऑफ ए मशीन लर्निंग AI, राइट. सो यहाँ पर आपको 13% प्लैगरिज्म शो कर रहा है, एंड वी हैव जस्ट कॉपीड द कंटेंट फ्रॉम द AI, बट यहाँ पर वो उस चीज़ को नहीं बता रहा है, इसमें अलग अलग चीज़ बता रहा है. ठीक है सर. एंड अपार्ट फ्रॉम कि मतलब आपने ChatGPT से कॉन्टेक्स्ट लिए, एंड स्टिल इट इज शोइंग 13% नॉर्मल प्लैग. ठीक है. एंड नाउ आई थिंक आई कम अप विथ सर्टन रैपिड राउंड क्वेश्चंस मूविंग फर्दर, बिकॉज so this image represents what? बड़ा करना, फुल स्क्रीन. Okay. जूम कर सकते हैं. This image represents what? ना. AI created image. सारी AI created images हो जाएंगी सर, गूगल से ली हुई भी हो सकती है. अच्छा कैसे पता?
अच्छा फॉन्ट ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है सर। तो यहाँ पे अब ये गलती आपने पकड़ ली है, तो एआई की आप इमेज भी ठीक करेंगे ना, क्योंकि ये तो ऑथर ही करेगा ना। एनीवेज, व्हाट डज दिस इमेज रिप्रेजेंट? Something nearby, maybe. Okay, maybe. Anyone from backside? So guys, if you answer, we will pay for your energy. We will not use your energy for free. Feel free to raise your hand and answer. Ma'am, would you like to give some hints? We have already covered certain things like your maybe flag, your typesetting, whatever you are doing. Layout of a chapter. Anyone from this table? Is it a book? Useless content. It is some type of an AI typesetting. Sorry, no one there to answer. So let's move forward. This one. ये तो कर ही दोगे, इसमें तो बहुत सारे hints हैं. Yes, very good. So who is there for the chocolate? Madam? Share कर लेंगे. Okay. Next one. Fastest finger first. No. We have certain tagging is there. So what type of tagging is there? Content is generated by AI. Okay. What type of tagging is there? You have many types of tagging now in AI. Your sentence tagging, keyword tagging, so symbol tagging, something something. Keyword tagging, yes, sir. This one. Funnel. Oh my God, sir, chemistry नहीं है. We are talking about AI, not chemistry. So filtration step नहीं sir, कुछ और है. AI से सोचो sir. Giving prompt. No, we are not giving any prompt. सर आप बुक की समरी लिखते हो तो कैसे करते हो? सारे पेजेस की समरी, प्रीफेस लिखते हो, कुछ करते हो ना, क्या कहते हैं? इट इज अ समराइजेशन. समराइजेशन. नाउ दिस, इसको तो कर ही सकते हैं, अभी मैंने बताया कुछ होता है सोशल मीडिया पे. रिकमेंडेशन सिस्टम. यस. एंड दिस वन, ये तो बिल्कुल सामने एक छोटा सा क्लाउड स्टोरेज. So I would like to hand over my session further to Professor Dr. Sanjay Kataria sir, who is our Director, Learning Resource Center. He has his education from Harvard Education School. Welcome, sir. Good morning, everyone. I'm Dr. Sanjay Kataria, though we are working together in Benedict University. She's representing the School of Computer Science, and I'm taking care of Central University of Central Library of this Benedict University. Apart from that, I'm also teaching research skills to PhD scholars. It's my great privilege and pleasure to be here among you. And though I was looking at how she's conducting this session, and more people, very learned people are here from publishing industry. What I understand that, but I'm the person not publishing industry, but I'm close to publishing industry. I'm interacting a lot of publishers on day-to-day basis.
And good thing is that apart from publishing industry exposure, I'm also interacting the scholar community who are more engaged in writing and publishing. And though you people are one on the other hand, you know. So last more than 7 years, I'm interacting with young scholars, research scholars. And I'm in a 52 now. So I had to understand and experience the transition, this traditional publishing to this today is talking about artificial intelligence, environment publishing. Probably there is a lot of tools as available, though I'm not an artificial intelligence expert, core domain expert, though I'm like a you who's using more AI for different purposes from different activities as your respective profession. So I'll take a more few things. Then we'll have a more discussion end of this presentation, and I'll take some questions from your side, and I'll definitely will learn from your all industry experts here. So this probably image can look can give you some pictures, can understanding that how we have come from that traditional publishing to this. If you talk about the traditional publishing, we will talk more about printing, print-based, publications, and there was a kind of 80 to 100% process and provision was manual, and it was in a really tough time, especially not only for the publishing industry but scholar community as well, because that process was long and lengthy, and from submission to review process to proofreading, then we'll have a composing, different set of the printing press, and how the composing and delivering, and more dissemination was quite tough. That time there is no more postal services sending that journals and books through courier. But now this, thanks to technology and a person like Deepika, that how the computer scientists, this particular transformation, digital transformation, and made our life very easy. And the transformation was that from manual process to automation talking about submission to proofreading, and then more important was in a dissemination, because there time that how this paper was digitized from print to digital, and then there was a mass level access provision was there, and we librarian, how we have joined hand with a different publisher and made it accessible and available to the scholar community again. And this publishing cycle is complete ecosystem, from starting from that faculty who's going to, as an author, they're going to write, coming to you with the manuscripts, and then definitely the set of the process they're going to complete again. They're coming to the again that in a scholar community as in a reviewer, or that editors again, subject-based editor or the language-based editor, and then finally we are delivering. This is a complete cycle. Now there is a global shift, is that traditional publishing to open publishing. I don't know how many of you published open book so far. This open publishing is very great change. Now probably next 5 to 10 years you will look at the global impact of whole publishing industry. Not only AI, but now if you look at a Western country, they're more engaged. There is a lot of change took place, like Plan S in scholarly publishing. There is now discussion is going on. I'm a Commonwealth professional fellow. I was in UK for 6 months, and there was a time when we had a workshop with the University College of London. What they did, now what you people are doing as in publishing industry. Now university is engaged, involved in as in a publisher. And you'll be surprising to know that I'm the librarian. Then I registered my university library with the Raja Ram Mohan Rai Foundation. And in case you want to publish her book, she can come to me, I can provide an ISBN to her. So this is major shift. This is the traditional way, but I'm talking about open publishing means that all that process from faculty to complete publishing cycle and to dissemination, everything is freely available to everyone. All that content will be available free of cost to everyone. And now, what is that major game is that they want to look at
because why she's publishing with that, with major publishers? She want to share her domain knowledge and expertise and willing to share her intellectual, thing to their scholar community, and they can give her recognition and benefit, and what she will get out of that, scholar paper, she will get visibility as well as the impact of her work. Here, what is going on, I hope you understand the traditional metrics, research metrics, as well as an open metrics, alt metrics. Have you heard about alt metrics? How many of you are involved in the publishing journals, apart from book? Okay, there is two kind of research metrics. We can conduct some time of detailed session, how this industry is going to change over the period of time. Traditional metrics, I don't know whether have you heard about that impact factors, H index of a scholar, faculty members, or that journal impact factor, or that some kind of, I must say that citations of your research paper, something. All these are, these are considered as in traditional metrics. But when talking about alt metrics is nothing but a kind of web-based metrics. Means what she wrote today, like the way you people are using social media. Okay, how many download you got, how many people liked your, how many people commented on that. And if you share your, your research paper on Instagram or the other social medias, how many people has downloaded your paper? How many people has viewed your paper? How many people have read your paper? So all these are metrics is considered as alt metrics, and this is the new age of metrics. Why I'm talking about this change is not far from that, book industry. If you look at it, put on Google, University College of London, and now is in Hong Kong, there is one of my friend is there, and he's involved with open book publishing. Earlier, this faculty, a scholar community was coming to you to get published. There was a time when that people will not go the traditional publishing mechanism. They will rather can publish their book their own. This is a major shift now. What is the business angle? Business angle, because what she's publishing with you as in a form of book, she maybe get 10% or 15% royalty. But her major objective is not get 10 or 15% from you. Her major objective is to share his intellect and have a more recognition in the scholar community. So you want to get more promotion in her university rather than taking money from the industry. This is major shift. And how, in case she's going to publish her own, and as an open book publishing, she will look at that impact of her, publishing, because her book can be adopted at any of university. And how many people has downloaded her book? How many people has viewed her book? How many people has, adopted her book in their course curriculum, where the student going to read? This is major shift. Yes, please. So will it go through a review process? Yeah, definitely. See, who is reviewing your research paper? I'm the author of I published around 50 papers, so it's corpus index papers. I'm submitting my paper to X journal and Y journal. I'm also associated with the different journals as an editor, as an advisory board of editorial advisory board. I'm writing a research paper. Don't take it otherwise, please. This is I'm quite critical, and this is alarming for publishing industry, because I don't know how much you people are interacting nowadays with the community, scholar community. How many people are you interacting with the librarian? Because this major shift is going to take in a different way. And this is high time for you to understand and to involve and align with this change. In case you are not going to accept this change, that time will change you people. Yeah, let me answer your question. Yeah, what was the question of your? What is? Will there be a review process, and how is Yeah, so look at I'm not going to in a new age, let us in a traditional way. I'm writing a research paper, submitting X journal. What they're doing, first and foremost is DEX acceptance or rejection. What they're looking as per journal guideline, whether the paper is as per journal guideline or not. What is there? Font size, font type, formatting, and references. Scope of journal, yes, definitely, scope of journal. So there's a first step. Second is that then after they're taking that paper to a domain expert, and they are assigning reviewer. Who is reviewer? Not publishing industry. I'm now one professor, and my paper is going to her. She's reviewing my paper. And
She's giving a kind of comment and acceptance, rejection, whatever the way, and double blind review, or whatever review process is there, they're completing and publishing. But now this again open publishing journal, the number of journals available, accessible. I can show you the number of journal. Now you can download your research paper without paying any single penny. This is a major shift. And what I'm talking about, in case they're going to have an open publishing book, open publishing model. Nowadays, if you look at Europe, UK, America, they're talking about open data, open science, open scholar communications, and everything is nothing but idea is that because this, don't take another advice, like have you heard about the Elsevier publishers? Elsevier is taking, I probably is 60 to 80% revenue from the market. And I'm paying more than crore rupees to them. And what is there? And now they are shifting content from content to data analytics. I don't know whether you heard about Scopus or Cyvel or whatever. Look at that, how globally, the kind of publishing is there, and they're getting this revenue from the data analytics rather than content. How many paper, which journal has they, having a more impact, which paper has a more citation, and they can even look at their peer, different kind of, institution, how my university is doing in comparison of my peer institutions. This kind of data they're holding, and they're having a huge revenue. So I was talking about traditional publishing and to transformation to digital to AI based. And now look at this. When talking about traditional publishing, there was taking huge time, lot of time was there, and to manage those manuscripts, handling, assigning peer, reviewer, proofreader, okay, and then subject-based editors. And this process took a lot of time. Now that was in a month of time is, going to, within a few hours, you can do that kind of job with the help of the AI, and now the different platforms are available. Earlier, if you look at, and we are in India, Indian English is not our native language, and majority of scholar community is struggling to write and publish because of the language barrier. But now AI has removed that barrier also. Now, language is not a big barrier for that scholar community. You're going to write something, and some literature is available in Malayalam or some kind of Telugu. Even that, within a few minutes, you can translate. And what she talk about this Grammarly, and some other tools are available. Quillbot, yes. And major change is that I don't know. I can say, let me, rather than the presentation, I want to show something. One recent, we discussed about this Elsevier, na? 2 days before that, there was one workshop at my university I organized with Elsevier, and they conducted some kind of there is some survey. Probably you can take it better way. एक minute. Hope I'm not taking much time. You have a proper time that way? Yeah. Yeah. So I just want to show. This was a presentation from the Elsevier. I was talking about is a global publisher. Though I'm not going to take their the other kind of data, but just want to say that look at that questions. They conducted a global survey about AI in publishing, and they asked, why should we think about Gen AI is context of scientific writing and publishing? There was a perception that the question was that researchers recognize potential of Gen AI tool, and if they are not already using them, most expected they can use in next 2 to 5 years. So 96% of scholar community, they said, yes, we understand, we know that AI is there, but they don't know how to use and where to use, and that wasn't questions. And 31% people, they're already using AI to different tools. 95% think that it will help and speed discovery of their content. And another question was that many researchers have questions about technology and how it should be used. Should be used or should not? That wasn't there. Am I allowed to use the technology? Yes, you are allowed to use the technology, but in an ethical way. And how do I disclose it?
There was a question. There are many concerns about inaccuracy, unreliable references, copyright, and infringement of the teaching biased training biases and all. So I hope you understand that most of AI tools, whatever they design, developed with the help of algorithm, that all the tools has to give a proper training with the sum of datas, so they can train with that some pattern system and all. So, and in case she's not only teaching, but she's also involved in developing an AI tool with the help of ML and AI, and giving some biasness. X publisher content, Y publisher content, when somebody is going to use this particular platform, X and Y publisher cannot, but Z publisher should have come first. Like in Google advertisement, Google showing the advertisement, but having a there are many, but major concern with the AI is that still we are in testing phase. We don't know how we are getting a data, what are the sources of data, what are the limitation, and whether that AI is taking a text from that copyrighted material, and we are violating copyright directly or indirectly. So there are a lot of questions there. So there is an again, there is what do researcher and clinical think about AI, Jen? And most of people knows that about AI, but few use it regularly, and feeling are mixed, but learning positive, trust. So key concern related to Gen AI is that inaccurate information and unreliable sources, that is an hesitation, ethical concern and bias of algorithm, environmental impact. And practically said that we talking much about technological advancement, but we are really not ready to accept those kind of tools and technology, because we are not having a much kind of exposure and training. As a librarian, I used to interact with the research scholar, and I'm asking them to use this AI tool, but in an ethical manner. Major concern is in ethics. And we have to maintain our copyright. Copyright is one of the major concerns with the publishing industry. So these are the few things. There was a discussion, and what they did, Elsevier, what they did, they have introduced a platform like Leap Space. The way talking about ChatGPT, they introduced their own AI tool. That is a Leap Space. Leap Space, what they're doing, they have taken a tool from Microsoft. That name is Copilot, and integrated with the Scopus and Science Direct. So good thing is that when you are going to use Leap Space, whatever data, information generating through that particular AI, that is an authentic and reliable data, because data sources Scopus and Elsevier their own publications. So scholar community can use that particular tool without any hesitation, without any question mark. So as in publishing industry, you people come together. This is the great right platform to discuss about how, and this technology can help you out, because that earlier what I'm talking about, traditional publishing took a lot of time, energy, and cost also was much involved. Now you'll save the time, energy, and cost, and use this kind of platform in your publishing on day-to-day basis, and look at how not only you are getting benefit, but how scholar community can also benefit it. There was a barrier of 10 to 15%. Now let us have not only an author, but a partnership with that scholar community. In publishing and scholar community can work together as a partner, and both should be parallelly benefited. Now time has gone when there is only publisher got an 85%, okay, out of 85%, 10 to 20%, 25, 30% expenses were there, but still 50%. But author who generated actually 10% content are getting 10%. Something, I'm sorry in case I'm taking some irrelevant, but this is a, क्या हो गया? I think this voluntarily alarm from the government of India. We don't need to panic. We just need to check our system is responding well or not. So
I think we can be seated. They're just testing the TRI services, telecom services. Actually, this was a testing that all of us Some are awake kind or of, not. Some kind of fire Are we alarm. sleeping? Thank you. So this is the age for hybrid, publishing model. What I don't know. Can you see that, Deepika? Can my screen can be? Okay. So meanwhile I can take some question in case any question in your mind related to this, and otherwise. This is the basically in a PPT what I'm proposing to you people is in a hybrid ecosystem. You don't change entirely your process and your day-to-day business and practices, but adapt the technology in a better way where that speed, accuracy, cost and other impact where you can be benefited, and scholar community, definitely you people have to align and understand each other. So basically this is time for where you people have to think about hybrid system where AI is there. That means artificial intelligence is there or human intelligence is there. Whatever intelligence you're talking about artificial, have to need, because this is scholar publishing. You cannot make a mistake. So, and there is a possibility to have a manipulation with the data with the AI tool, free AI tool especially. Therefore, human intelligence is very important to recheck whether what we are generating, what we are doing is doing in a right way, ethical way, and with maintaining the proper laws and order, like in copyright. I'll happy to take question in case any question is from your side. And I'm sorry in case I'm quite critical related to publishing industry and all, but there is a major change is taking place, and whether you are accepting today or not, but after 5 years, in case somewhere we are meeting, I can let you know. We are also going to start an open publishing book. I told you that I'm able to provide an ISBN, and my university will be publisher. Libraries also is under massive changes nowadays. Earlier, there was a role of library was a passive. You people are publishing, we are procuring and putting in on stack. And the user used to come to the library and refer those particular books and resources, correct? But now time is gone. Time has changed now. There was a time when user used to come to the library, but now library is going to user. Somebody is my scholar visiting France, sitting in France and doing some kind of assignment and professional or academic work. They should have to have a connectivity, they will get a content. And my library is entirely available and accessible from around the clock, from any part from the world. You can have a remote access facilities there. So this is major change. Now librarian, not only custodian of material, librarian is also going to be partner with the scholar community, not only just read and write, but we are helping them to get published. And therefore we have started the research support services in my university, and libraries involved and given a training to researcher and young scholars how to write and publish impactfully, how to identify journal based on your manuscript. You just have to copy paste your title and abstract on that journal finder. Journal finder will let you know which particular journal is close to your research and where you have more possibility of acceptance of your research. So these things we are now teaching to the researcher and faculty members. So this is a major change. Yes, please. Sir, do you think that if open publishing happens too much, that will also lead to more predatory journals? How will you curb that? Because in India already we have so many journals which, if you go and just put it in Shimago journal for ranking, you won't even find them anywhere. Right? I mean, although it's a very different question from the exact theme we are talking about. No, your question is very valid and a very important question. Talking about predatory journals is a great threat to the scholar community. And what is the predatory journal? Predatory journal is nothing but kind of having a confusing the scholar community. They claim their journal is indexed, journal is more quality journal, having an impact factor. And when they are going to introduce their journal, they put their title of journal close to the title which is already published and indexed in Scholar Scopus. And if you look at their ISBN number, they're using almost same ISBN. Clone journal or predatory journal is the same.
And I'm teaching the research scholar how to avoid the predatory journals. That is, there is some check and balance is there, where scholar community should aware about. Like you said about Clarivate, there is many ways to identify. First and foremost, good publisher will not chase you on a day-to-day basis. They will not send you the email. You can get published from us. This and that we are providing, and they're claiming that they will publish your paper within a week or so. That is not really possible, because they will not go through the double-blind review on editorial process and all. Therefore, they're talking about. And if you look at if you want to see that identify the particular journal, whether it's a predatory or not, you just have to look at their website. They will not put any editorial people, their identity on their website. There is no phone number, no organizational identity is there, no email ID is there. You people just had some kind of hanky-panky, and if you look at their URL, the website of the journal, definitely there will be different than what exactly is there in Scimago and all. So there is many ways and means to identify that predatory journal, clone journal, and this is what I already told, that this is job of librarian nowadays to create more awareness among scholar community, how to publish, where to publish impactfully, and this is one of that. Again, I'm teaching them how to avoid a plagiarism, what exactly plagiarism is there, what is the government guideline is there, what is the copyright is there. Apart from copyright, I'm also teaching them communicative license. Have you heard about communicative licenses? Communicative license is basically, if you look at the criteria, is not kind of rigid law like in a copyright, but there is having a similar to copyright, where you can use any of scholar material under CC by 0. There is one clause. There is a total 6 category, and in case somebody has published a book or the article under CC by 0, that means scholar community can understand anyone can use that particular paper for their own writing. They can use, edit, and they can redistribute without asking any permission from the author. This is the major change. Creative Commons licenses. You can Google and you can understand how it is used in the scholar publishing. So we are creating an awareness. Though I'm taking class PhD scholar, I'm telling what exactly is the Creative Commons licenses and how you have to acknowledge. That is very important. So a lot of things is that in case I can start my whole story, probably they will be not enough, and I'll happy to interact sometime. And in case any question, you're most welcome. Otherwise, last message is there. We don't need to worry about that. Last message is there. AI is not here to replace publishing. It is here to redefine. नहीं सर, हमने वो सेशन रखा है कि हाउ टू रिवॉल्व जस्ट टू बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, सो दैट इज देयर. आई थिंक सर ने ज़्यादा डरा दिया हमें. डर तो नहीं है, बेसिकली यही कहूँगा कि डर के आगे जीत है. और मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि बिकॉज टेक्नोलॉजी इज देयर फॉर यूज एंड फेयर यूज एंड या correct. I think in our publishing industry also, we have to develop a kind of AI engine which is giving us and telling us that how our systems and how our books can be, original in our content if that AI is used with our whole publishing community. Yeah, definitely. Talk about Pearson. I had a story about different. I had a story. I had some. They have their own, as well as they have community as well. If something is there, then it can be a better thing, right? They have their community as well. That you rightly said that many publishers they already started fully or partially use of AI, and a few journals accepting in case you are going to use AI for your content editing or formatting and polishing, and all just you need to acknowledge. Acknowledgement is very important so that they can see what exactly is there. And you are not hiding that kind of. Ethically, you are very, sound. Anyway, thank you very much for this opportunity. Thank you, Professor Sanjay Kataria, sir. So I have my research assistant here,
विल बी शोइंग अ डेमो. जैसे आपने अभी लीव स्पेस देखा, लीव स्पेस एक एल्सेवियर का कॉन्टेक्स्ट है. एंड उससे पहले मैंने मेंशन करा कि हमारे एनईपी के अंदर आपके ऋग्वेद, सामवेद, अलग अलग वेदास और इन सब की नॉलेज है. तो उस चीज़ को हमारे सारे वेदास रामायण में कवर होती है ना सर? तो हम ने एक छोटा सा एक डेमो ही करा है. इट्स अबाउट कैसे रामायण की बुक को लेकर एक समराइजेशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करा गया है, एंड कैसे उसी के अंदर जनरेटिव एआई यूज़ कर यू कैन जनरेट द कॉन्टेक्स्ट यूजिंग दैट पर्टिकुलर थिंग. So I have my research assistant Ajay, who will be giving the demo on it. Ajay. So as everyone knows, this is a break time. Do we want the demo before the break, or we just want to go for the break first? Raise your hand who just want to go for the break. Okay, I am the only one. Anyone else? Tea break? Raise your hands higher. Okay, we have thank to you. Take tea break also. Okay, the people who want demo first? Great. Okay, all right. Keep this spirit up till the lunch. No worry. Thank you. So, hi guys, good morning. I am Ajay Kumar Devangan, a research assistant under mentorship of Deepika Jain ma'am and Dr. Nitin sir, working at Prayag Bharati Foundation. This project is basically a kind of AI about how AI will able to generate the whole PDF books, not PDF. It's a PDF book which can be easily sold by which can be easily be given to many school students and many kind of children who are age under 10. So let me go through it. मैम वहाँ पे दिख नहीं रहा. उनको बोलो प्रेजेंट करने के लिए. रुक जाओ मैं दिखाता हूँ आपको. उसमें आ रही है मैं ऑल राइट. हाँ ठीक है. इसमें बेसिकली क्या होगा, हमें बस एक क्लिक करना है और उसमें हमारी पूरी की पूरी पीडीएफ जनरेट हो जाएगी. पीडीएफ इन द सेंस ऑफ आपकी पूरी की पूरी स्टोरी बुक जनरेट हो जाएगी. इसमें कॉमिक बुक जनरेट हो सकती है एंड देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग. तो मैं आपका बेसिकली थीम बता देता हूँ एग्जैक्टली करना क्या होता है. तो पहले तो हमें एक छोटा सा प्रॉम्प्ट एरिया मिलेगा जहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट देना है कि यूज़र एग्जैक्टली क्या चाहता है, कि स्टोरी बुक जनरेट करना है, कि कॉमिक बुक जनरेट करना है, या फिर एनी काइंड ऑफ स्टोरी या फिक्शन बुक जनरेट करना है, कुछ भी दे सकता है. देन यूज़र को सिलेक्ट करनी होगी कि वो कौन से जर्न की दे रहा है. जर्न इसमें बहुत सारे टाइप्स के हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे पास 7 जर्न्स हैं, जैसे साईफाई हो गई, फैंटेसी हो गई, मिस्ट्री हो गई एंड हिस्टोरिकल, बहुत सारी चीज़ें हैं. और इसमें मैंने आर्ट स्टाइल भी रखा है कि कौन कौन से आर्ट स्टाइल भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि वाटर कलर्स हो गए, कॉस्मिक इंक हो गए, फोटो रियलिस्टिक में क्या होगा कि एग्जैक्टली आपका ह्यूमन टाइप का इमेजेस जनरेट होंगे इनसाइड द पीडीएफ. और इसमें मैंने एट मैक्स 80 पेज तक ये पीडीएफ जनरेट कर सकता है राइट नाउ, बिकॉज वी डोंट हैव कैपेसिटी ग्रेटर देन 80 पेजेस बिकॉज इट कॉस्ट सम XYZ अमाउंट ऑफ चार्जेस. एज एवरी वन नो, जहाँ यहाँ पे यंगस्टर होंगे जिनको पता होगा
कि ओपन एपीआई की कितनी ज़्यादा ही कॉस्टली पड़ती है हमें। तो राइट नाउ एक पीडीएफ की कॉस्टिंग अभी रेलेवेंट है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वन पीडीएफ की कॉस्टिंग अराउंड 150 रुपीज़ पड़ती है इफ़ द पीडीएफ इज़ अराउंड 30 to 50 पेजेस। ऑल राइट, सो मैं इसका आर्किटेक्चर समझाता हूँ, बेसिकली ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं इसका बेसिकली ओवर आउट समझाता हूँ आपको, ये व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। पहले तो साइड बार में होगा, इसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो पहले जो साइड बार होगा उसमें हमें इंस्ट्रक्शन दे दी जाएगी कि हमें क्या क्या चीज़ से जनरेट करा सकते हैं, मतलब कि पूरा डेमो दे देगा कि हम क्या पर्टिकुलरली जनरेट कराना चाह रहे हैं। राइट, तो मेन एरिया है जो हमारा प्रॉम्प्टिंग वाला एरिया है। प्रॉम्प्ट अगर हमने जितना ज़्यादा एफिशिएंट दिया इस एलएलएम को, तो उतने ज़्यादा एफिशिएंटली पीडीएफ बुक्स को जनरेट करेगा। एंड वो ट्राई करेगा कि यूज़र को ऐसा जनरेट करके दे कि वो पढ़ के ऐसा लगे कि यार ये बुक तो ऑलरेडी किसी ने पब्लिश की हुई है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पब्लिशर्स की अभी राइट नाउ वो एआई कंटेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट मैनी पब्लिशर्स आर यूजिंग राइट नाउ। सो इसमें हमें क्या करना होगा, प्रॉम्प्ट देने के बाद हमें जर्न सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है। देन उसके बाद सारी चीज़ सिलेक्ट करने के बाद व्हेन वी यू क्लिक ऑन जर्न बुक, कंजर्न बुक, द बूम विल हैपन। what exactly it happen, it will able to generate the complete pdf within 3 to 5 minutes। मैं आपको डेमो भी समझाऊंगा। बिफोर डेमो आई ब्रीफ द व्हाट एग्जैक्टली आर्किटेक्चर इट इज़। तो इसमें मैंने सबसे पहले जो टेक्स्ट जनरेशन वाला काम हो रहा है वो सारे के लिए मैंने यूज़ किया इस पे ओपन एआई का 4o मॉडल, 4o मिनी मॉडल। वाई आई शुड यूज़ दिस, बिकॉज राइट नाउ वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कॉस्टिंग, सो आई हैव यूज द बेसिक मॉडल right now, but it is not only a basic model, but it can able to generate high level contents also. Then for image generation in the PDF book, I have integrated a DALI 3 API key, because in DALI 1 there is a kind of diffusion models. All these kinds of models are diffusion based model, right? If any youngster who knows about diffusion models, is there anyone? Okay, let me tell you what exactly it is. डिफ्यूज़न मॉडल क्या होता है कि आप कोई पर्टिकुलर कुछ चीज़ जनरेट कराना चाह रहे हैं इमेज के थ्रू, राइट, मतलब कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। तो वो कॉन्टेक्स्ट को वर्ड बाय वर्ड समझेगा, देन उसके बाद एक छोटा सा नॉइज़ जनरेट करेगा पर्टिकुलर इमेज के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि एआई जनरेट कर रहा होता है कोई भी इमेज को, तो थोड़ी सी ब्लरी इमेज की आती है ना, कि ब्लर इमेज जनरेट कर रहा है पहले, फिर धीरे धीरे उसको कुछ कन्वर्ट कर रहा है, अपस्केल कर रहा है, देन वो कन्वर्ट करके पूरी फुल फ्लैज इमेज बनाता है। जो स्टार्टिंग का प्रोसेस है से लेकर एंड प्रोसेस तक है, वो नॉइज़ कहलाता है, कि नॉइज़ जनरेट करके वो धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है मॉडल्स को, देन वो पूरा इमेज को जनरेट कर रहा है। तो बात आती है कि इसमें पीडीएफ तो जनरेट हो गई, इमेज जनरेट हो गई, देन इसको स्टोर कहाँ करेंगे। अभी राइट नाउ आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्टोरेज, जैसे कि AWS में होता है, S3 बकेट हो गया, वो कॉस्टिंग आती है सम अराउंड। तो अभी तो मैं लोकली स्टोर करा रहा हूँ। तो लेट्स गो टू डेमो। हाँ, तो ये है हमारा डेमो, राइट। तो मैंने आपको जो बताया था प्रॉम्प्ट, मैंने तो ऑलरेडी पहले से प्रॉम्प्ट लिख के लाया हूँ ताकि टाइम आपसे भी का सेव हो। तो जैसे कि ये प्रॉम्प्ट दे रहा है, आरओ मल्होत्रा रिसीव अ लेटर इन्फॉर्मिंग हिम ही वॉज इनहेरिटेड एट कोस्टल, दिस काइंड ऑफ थिंग। तो इसकी जो है थीम मैंने रोमांस सेट करी हुई है, तो मुझे जर्न भी उसके अकॉर्डिंगली सेट करना पड़ेगा। तो जर्न मैंने रोमांस सेट कर दिया। लेट सपोज अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो मैं 10 पेजेस के ही रख रहा हूँ, और आर्ट में मैं फ़ोटो रियलिस्टिक रख रहा हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर मैंने इसमें इम्प्लीमेंट किया है, जो क्या करेगा, आपकी कॉस्टिंग को रिड्यूस करेगा। जैसे कि कई बार क्या होता है, टेस्टिंग में हमारे बहुत सारे टोकन्स वेस्ट चले जाते हैं। तो क्या होता है, जितने भी टोकन वेस्ट जा रहे हैं हमारे ओपन एआई के, जो भी क्रेडिट्स वेस्ट जा रहे हैं, तो उसको हम लिमिट कर सकते हैं कि अगर हमारा मॉडल इस पर्टिकुलर अमाउंट XYZ अमाउंट के बाद फेल होने वाला है, तो फर्दर उस चीज़ को जनरेशन को स्टॉप कर दी जाए। अगर वो स्टॉप हो जाएगा तो हमारे जो रिड्यूस एक्स्ट्रा वेस्ट वाले टोकन है वो तो बच ही रहेंगे हमारे, जो हमारे फ्यूचर में ऑब्वियसली काम आ जाएंगे। देन वी विल क्लिक ऑन कंजर्व बुक, देन इट विल एबल टू जनरेट, इट विल टेक सम XYZ अमाउंट ऑफ टाइम। सो तब तक मैं आपको एक चीज़ फीचर बताता हूँ इसमें कि मेरा फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन क्या है इस बुक में एग्जैक्टली। हाँ, तो इसमें मैं चाहता हूँ कि कॉमिक बुक भी इम्प्लीमेंट हो, जो कि आजकल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कॉमिक बुक भी पढ़ते हैं, एनीमे हो गई, मांगास हो गई, ये सारी चीज़ें बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या सोचा है कि अगर हम कॉमिक बुक जनरेट करा रहे हैं तो हमें पहले तो उसकी सीन्स बताने पड़ेंगे
कि पहला जो करेक्टर है वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है. दिस थिंग्स कैन बी डन लेटर ऑन स्टेज. और इसकी स्केलेबिलिटी के लिए मैंने अभी जो बताया आप लोगों को कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि मैंने इसका ऐसा मॉडल यूज़ किया हुआ है जो अभी काइंड ऑफ स्टेज में है कि जो डेवलप ही हो रहा है अभी तक, वो मतलब उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है. और रिलायबिलिटी के लिए भी जैसे कि मैंने आपको बताया, और कॉस्ट स्केलेबिलिटी दस ये सारी चीज़ें आती है. अब इसका फ्यूचर स्कोप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जहाँ तक मुझे लगा कि हम क्या कर सकते हैं कि जो चिल्ड्रंस की पब्लिशिंग बुक नहीं आती सर, जो मैनी पेरेंट्स क्या होते हैं कि पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चे को अच्छे से एजुकेट करना थ्रू क्या ये आपके जो बुक्स होते हैं ना, क्या नाम है, पंचतंत्र हो गए, बहुत सारे बुक्स हो गए. तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलरली जैसे कि स्टूडेंट है, एक मान लीजिए आरव स्टूडेंट है, तो हम उसके स्टूडेंट के नेम के बेसिस पे उस पर्टिकुलर बुक को जनरेट करा सकते हैं. तो उस बच्चे को इंटरेस्ट आएगा कि हाँ ये तो मेरी ही स्टोरी है, क्योंकि एवरीवन हैज़ देयर ओन स्टोरी, राइट. तो उसके अकॉर्डिंगली रिलेट करके एक पेरेंट्स अपने स्टूडेंट को टीच भी कर सकता है. ये एक बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर स्कोप मुझे अच्छा लगा इसका. देन एजुकेशन के कंटेंट में क्या हो सकता है सर, स्कूल क्या करते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट वाइड डिफरेंट सब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, राइट. तो उसमें भी यूज़ हो सकता है ऑलरेडी ये. और मार्केटिंग के लिए भी यूज़ कर सकता है, स्टोरी टेलिंग टूल भी आते हैं बहुत सारे चीज़ें. तो इस चीज़ की हम यूज़ भी कर सकते हैं फर्दर. देन इसमें अपग्रेडेशन के लिए मैंने जो सोचा था, अभी आपने किसी ने बोला था क्लॉड का, सोनेट का, जो भी रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मॉडल है राइट नाउ, 3.7 सोनेट. क्योंकि आप अगर अब कोई यूज़ करता होगा तो आई थिंक वो उसकी क्रेडिट्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, राइट. आप एक प्रॉम्प्ट दे रहे हो, दो प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, अपने आप क्रेडिट ख़त्म हो जाते हैं. आपको पता है ये सब क्यों हो रहा है? मैं इसको छोटा सा ब्रीफ करके बताता हूँ ये एग्जैक्टली हो क्यों रहा है आप लोगों के साथ. क्या होता है, इंटरनली जो मॉडल है ना आप लोगों का, वो क्या करता है, टेक्स्ट को ले लेता है इनपुट, और जो फालतू कंटेंट है ना वो वापस आपको जनरेट करके दे देता है. बट आपको तो चाहिए ना रिलेवेंट कंटेंट. तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर आपको प्रॉम्प्ट बनाना पड़ेगा. उस प्रॉम्प्ट को अगर आप सोनेट मॉडल को देते हैं, क्योंकि सोनेट में सेटिंग्स होती है बहुत सारी, वो मोस्ट ऑफ द यूजर्स को पता नहीं होती है कि वो सेटिंग्स एग्जैक्टली करती क्या है. तो वो सेटिंग्स में अगर आपने वो प्रॉम्प्ट दे दिया ना, तो आपके टोकन्स भी सेव होंगे एंड आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी. और आपका जो आता है ना कि लेट मी जनरेटिंग द कंटेंट, देन उसके बाद लिखा देता है आपका कि लिमिट हैज़ बिन रीच, यू कम लेटर. आपके बाद फिर आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. तो आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं, तो मुझे भी पता है, मैं भी एक टेक स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए जो प्रोजेक्ट मुझे शाम को दिखाना होता है वो मेरा डिले हो जाता है नेक्स्ट डे के लिए. तो ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, वो कॉमन इशूज़ हैं. तो जैसे कि इमेज जनरेशन के लिए मैंने बताया कि वो डिफ्यूज़न मॉडल वो भी है जो डाली API का, डाली 3 का, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं. बट इससे ज़्यादा अच्छा एफिशिएंट मुझे ये लगा मिड जर्नी का हो गया, या फिर मिड जर्नी स्टाइल प्रोवाइडर हो गए बहुत सारे, राइट. तो मैं आपको अभी तक शायद से जनरेट हो गया होगा, राइट, जनरेट हो गया. आपको डेमो दिखा देता हूँ, ये रहा. ये जनरेट हुआ है, मैंने बताया था ना आपको आरव मेहता है, तो उसके अकॉर्डिंगली यस सर, ओके ओके. हाँ सर, राइट. तो ये जो PDF है इसका आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं. इसका जो फर्स्ट पेज है वो भी तो मैंने बेसिक लेवल पे रखा हुआ है. तो उसने खुद के बेसिस पे इस चैप्टर्स को भी क्रिएट कर दिया कि मैंने जितने चैप्टर्स उसमें दिए हुए थे, जैसे कि मैंने बताया था आरव मल्होत्रा सेट इन हिज किचन, बट इसमें दूसरा प्रॉम्प्ट दिया था मैंने. बट इसने क्या किया, उस पर्टिकुलर सीन को क्रिएट किया. और ये जो सीन यहाँ पे क्रिएट किए गए ना सर, वो सारी चीज़ सीन का जो एग्जैक्ट इमेज है, मतलब को रिलेट करके जो इमेज जनरेट हो रही है, वो सारी की सारी डाली API और जो क्या नाम है ओपन API, दोनों आपस में क्रॉस अटेंशन मॉडल यूज़ कर रहे हैं. तो दोनों आपस में कम्युनिकेट करके एक पर्टिकुलर इमेज को जनरेट कर रहे हैं. देन इसमें आप मैंने जो बताई थी बहुत सारी चीज़ जनरेट होगी, वो ऑलरेडी इस पर्टिकुलर बुक बन चुकी है. और इसका कोई कॉपीराइट इशू भी नहीं है राइट नाउ, क्योंकि ये तो खुद जनरेट हुई है ना. कोई ऐसी कंटेंट है कि जो किसी कॉपीराइट इशू करके यहाँ पे आ रही है, तो ये सब चीज़ इसमें नहीं हुई. तो ये चीज़ बेटर मुझे लगा कि ये कंटेंट है. हाँ सर, आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं, रीडिज़ाइन भी कर सकते हैं. इसमें बहुत सारे मैंने पैरामीटर्स रखे हैं कि आपको साइड में बार लगाना है या पर्टिकुलरली फॉन्ट चेंज करनी है, मतलब सारी चीज़ इसमें अवेलेबल है, आप चेंज कर सकते हैं. व्हाट मीन्स सर?
हाँ सर, अगर आप इंस्ट्रक्शन में देते हैं ना सर प्रॉम्प्ट में कि हमें इस जो पर्टिकुलर जो कॉन्टेक्स्ट है उसकी राइटिंग हमें दूसरे स्टाइल में चाहिए, तो वो पर्टिकुलर सेक्शन की राइटिंग आपको दूसरे स्टाइल में भी प्रोवाइड कर देगा ये। राइट सर, राइट सर, राइट राइट सर। राइट सर, क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छा है, बट राइट नाउ सर क्रेडिट, यस सर, जो लिख रहा है सर क्रेडिट तो उसको जाएगा ना। हाँ सर, दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा एट द पॉइंट, वो तो है। हाँ So AI will become a commodity. Everyone will have access to it. So it won't matter. Most of the content will be generated with the help of AI. So whomsoever generate the content will own the content. राइट सर, कॉग्निटिव ऑफलोडिंग करके एक चीज है जहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं वो हम आउटसोर्स कर रहे हैं एआई को करने के लिए एंड दैट लीड्स टू समथिंग कॉल्ड कॉग्निटिव एट्रोफी। ओके सर, क्रिटिकल थिंकिंग का कम होना, रिसर्च पेपर्स है, मैं अभी एक साइंस डायरेक्ट में पढ़ रहा था। राइट सर, राइट, अब ये जो चीज है आई डोंट नो, इट्स लाइक कैच 22 काइंड ऑफ सिचुएशन। हम लोग एग्जैक्टली कैसे हैंडल करेंगे दोनों चीजों को? So I think everything has a cycle. As of now, AI is booming. Everyone will understand the problems it will create, and then there will be people who will come out with the solutions for that as well. Yeah, everything works that way right, only. Exactly. So I think that's all. Thank you for listening. All right, thank you so very much. Thank you so much, Dr. Deepika. I believe we will continue the session. We'll be having certain activities post your short tea break. So I'll request everyone to please have your interaction and form your groups so that it's easy for you to have a team activity and also for us to evaluate your activity. Thank you. Amazing. So now the platform is open for all of you to network, to, analyze and give us such more productive day. And for that matter, once again, I would like to hand over the stage to Dr. Deepika once again. Ma'am, all yours. Thank you. Thank you, Janvi. So yes, thank you for gathering once again. We'll be having a group activity. One is your creative activity and other one is your debate activity. So in your first creative activity, you'll be designing an engaging book. Nowadays you see that the students are getting away from the books. So you'll be designing an engaging book with your experience to make the student-centric learning so that the student is more enabled towards the books, maybe it an textbook or an audiobook, howsoever you want to make it in a creative manner. That is one creative activity which you have to do. And the other one is a debate activity, which is AI versus traditional publishing simulation lab. Like, I want the people to contribute, to volunteer themselves as group A people
who are talking about the pros and the cons of the traditional publishing team and the Group B activity people with the AI assistant publishing team. So the judge for this two activities is Dr. Nitin Jain. Sir is an associate professor and also a research in AI. He will be describing the rubrics for this activity. I'll hand over the stage to him. So good afternoon, one and all. So I must thank Dr. Deepika for calling out and sharing the rubrics with you. So there are, as she has explained, there are two different activities are there. So the criterion or the rubrics for the first activities are, very first criterion is concept clarity and relevance. So whether the concept is relevant to AI or relevant to theme. So in this we are having 10 marks. So we are having this evaluating parameters are clear mapping to publishing stages, and plagiarism. Plagiarism is an important aspect in this, and design check. And second one is innovation and creativity. So the idea we are thinking about must have some creativity, the originality, the innovation, the newness in the idea, and the unique idea beyond the basic tools like the storytelling and the bias detection. Third one is tools utilization. So how well we are using the tools, the AI tools, that is Grammarly and ChatGPT and various other AI tools, and demonstrate the correct, meaningful use of the tools. Not just using the tools, but using the tools in a very correct way, right way, and productive way, I would say. Next one is again the team collaboration. So as she has discussed, we need to make out some teams, and we need to work in teams so that we can work on the idea in a better way, in a good way, productive way, and coordination and rule distribution and balanced participation. So each team member must participate in this activity. And last one is the engagement and interactivity, the audience involvement, along with the evaluation indicators are live demo, quiz, decision makings, and various other activities are there. And the rubrics for the second activity, that is debate. We are having this. So how well you are, like the very first criterion is how well you are presenting your idea, how will you are, is it visible now, I think? Huh? Yeah. So how you are supporting your idea, how your argument strength, and the logic you are building behind your idea, the evidence, the data you are presenting behind your idea. So use of real world publishing example, real world case studies you may argue, or to strengthen or corroborate your ideas. The next is the subject knowledge, the topic you are talking about, the debate topic. So the subject knowledge is very important, the understanding of AI capabilities and limitation, and the balanced views, the bias, ethics, and automation limits. Again, the very important in this debate is communication skills, the clarity of thoughts, clarity of your argument, clarity of the things you are presenting, and the articulation, confidence, tone, and structured delivery and impactful statements. Next rubric in this league is rebuttal and critical thinking, ability to counter opposing views, and spontaneity and analytical thinking. Next is again the team coordination is very important in this debate also. Equal participation and role clarity, and the smooth transition, no overlap. It must be seamless. Ethical and future perspective, discussion of IPR, bias, creativity, and also a insightful look of the topic for which we are debating. Yeah. Thank you so much. Okay.
थैंक यू थैंक यू। तो हम लोग आपको एक चार्ट पेपर दे रहे हैं। एवरी टेबल हैज़ टू डू द वर्क। अपने एक एक्सरसाइज करनी है और आपको अपने रिसोर्सेज जो अभी आप तक को समझ में आ रहा है, जैसे भी आप लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आप बुक प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा कौन सा नया आइडिया हो सकता है, कौन सी नई पिच हो सकती है, कोई नए ऐसे कौन से AI टूल्स हो सकते हैं, कोई नए ऐसे टूल्स आप यूज़ करके अपने बुक्स और प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आप इस पर लिख सकते हैं और फिर आपको एक 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। एंड देन विल ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कौन सा टेबल ग्रुप ऑफ टेबल एक अच्छा आइडिया लेके आता है, एंड देन विल प्रेजेंट द नेक्स्ट लेवल ऑफ द एक्सरसाइज। थैंक यू। आकर हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। Yes, we have a prize. So whosoever is going to present the creative, as he mentioned that कि किसका creative होता है, किसका the selection of tools or presenting of idea is different, unique, and something is way beyond that. तो हम उसको एक good prize देंगे, and then we are going to select the three, right? Three winners, right? So the first, second, and third, and other people will have the chocolates, right? So please, ये आप लोग दे दें. And the time, what is the time now? 12:40. So the 12:40 is there, and before 1:30, right? We have a lunch. Before 1:30, we have to conclude, and every team member should get 2 to 5 minutes to explain their ideas, their presentations. Yes, please. Yeah. हाँ जी, वो कर लेंगे। स्केच पेन स्केच पेन। तो कुछ और ऐड कर देते हैं कि आपके माइंड में कुछ भी आ रहा है, आप जब बुक प्रोड्यूस करते हो तो कितनी क्रिएटिविटी हम ऐड कर सकते हैं उसमें, क्या नए टूल एज यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम प्रोडक्शन अपनी रेवेन्यू किस तरह से बढ़ा सकते हैं। दिस ऑल ऑब्जेक्टिव इज आफ्टर द एंड ऑफ द सेशंस वी शुड enable ourselves to increase the productivity, increase the revenue of the organizations. That is something we are trying to get this from the exercise, right? So the 30 minutes for the activity and 5 minutes each for presentation, and after the lunch we'll announce the winner. Closing ceremony will announce the winner. We'll be announcing the winners in the closing ceremony, so that you don't leave after the lunch. We still have 2 minutes to start. We'll start at 12:45, and 1:15 everyone has to submit the idea. We have our first activity displayed, the creative activity displayed on the screens, just for a glimpse to know what the idea is about.
If there anyone who is not clear with any of the activity, please let me know. On the first activity, creative activity, if you are not clear with anything, anyone? Yeah. We are creating a chapter, you can say. Not exactly a book, but a chapter, preface, something. It's basically a chapter because it's a short time. We can say a chapter we are phrasing. So where you can engage a student कि वो chapter को पढ़े. Any other query? It can be any type of book. मतलब because हर बच्चे का अलग अलग इंटरेस्ट होता है. किसी का कॉमिक बुक पढ़ने का इंटरेस्ट होता है, किसी का फिक्शन बुक पढ़ने का इंटरेस्ट होता है, कोई टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहता है, कोई कैसे पढ़ना चाहता है. अगर आप अलग अलग टेबल्स पे मान लो आपने टेक्स्ट बुक पे काम करा, तो आप टेक्स्ट बुक को किसी कोर बुक को किस तरह से आप उसे इनोवेटिव बना सकते हो. कॉमिक बुक को हर कोई इनोवेटिव बना सकता है कार्टून कैरेक्टर्स डालकर, बट आप टेक्स्ट बुक को कैसे इनोवेटिव बना सकते हो, एक फिक्शन बुक को कैसे इनोवेटिव बना सकते हो. They are free to use. So guys, you can choose the AI tool you want to use. Because it is an AI You have enabled. full liberty. Use the AI tool which you want to use, and create the content. So this is the agenda of the exercise.
15 minutes over, half time. So 15 more minutes to go.
Yes, everyone. I hope we have given some amount of time. Yes, yes, yes. We have given some good amount of time and we are about to start with the evaluations now. Our judges will be coming over your tables and you have to narrate your ideas, your howsoever you want to start with your presentation or your wish. I hope it's not a, yeah. Should I? Huh. See, hello all. Attention, please. The first review is going on the first table, so you all can listen about it, what they're asking and what they are explaining about the concepts. So in the meanwhile, if they're reaching to your table, you can do some kind of more innovations if you want, right? No, it's okay. Yeah. So it's a narrative, right? We will start with that. It's a futuristic classroom, 2059. Now, वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है who is terrified of history. Like we all know, social sciences में लोग बच्चे terrified होते हैं. अब वो जो बच्चा है, उसके एक AI bot ने उसको बोला है कि you should go to the central library, which is a tech or a technology library somewhere in the middle of the street. वो वहाँ जाता है,
एक रूम में एंट्री करता है, मान लीजिए चारों तरफ ग्लासेस हैं, और उस ग्लासेस में देयर इज दिस मैन, ओल्ड मैन, दाढ़ी ऐसी बहुत लंबी सी है, ग्लास के अंदर वो एक एआई वो है, राइट, एआई विजडम वाइज मैन, वो ऐसे मतलब पीठ के ऊपर हाथ रख के घूम रहा है, और वो बोलता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है तुमको, वेयर एग्जैक्टली इज योर प्रॉब्लम, नहीं लाइक सर आई एम टेरिफाइड ऑफ हिस्ट्री। वो बहुत सोच के बोलता है लेट अस डू वन थिंग, एंड कहता है जस्ट सिट इन द मिडल ऑफ, देयर इज अ सीट इन द मिडल, वहाँ बैठता है, एक वीआर उठाता है और वो पहनता है, एंड देन द वॉइस ओवर स्टार्ट्स। वी हैव क्रिएटेड द वॉइस ओवर यूजिंग क्लॉड और समथिंग, या क्लॉड एआई से हम लोगों ने पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक चैप्टर का हम लोगों ने वॉइस ओवर किया है। अब वॉइस हम लोग अमिताभ बच्चन वाला वॉइस चूज करना चाह रहे हैं, बिकॉज दैट इज समथिंग लाइक लगान की शुरू में जैसे आपने देखा था, राइट? अब यहाँ पे सिर्फ ऐसी कोई वॉइस ओवर नहीं है, दैट्स इंटरैक्टिंग विद द स्टूडेंट, राइट, स्टूडेंट्स मेंटल स्टेट एंड एवरीथिंग। सो बच्चे ने वो पहना और सामने डिजिटल स्क्रीन में ऐसे बहुत सारे पॉइंटर्स आ गए हैं। 2059 है तो न्यूरोलिंक तक हम लोग पहुंच चुके हैं, जहाँ पे हम लोग बच्चा अपने हिसाब से आइस के मूवमेंट से वो नीचे करता है, और इंडस सिविलाइजेशन का लाइफ एंड द पीपल उसको टिक करता है, एंड देन द वॉइस ओवर स्टार्ट्स। नाउ दिस एंटायर थिंग इज हैपनिंग, व्हाई एग्जैक्टली, हम लोग ये क्यों करना चाह रहे हैं? सबसे पहला, सोशल साइंसेज में इमर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब तक आप खुद नहीं फील करेंगे, खुद नहीं जानेंगे, आप सोशल साइंसेज को नहीं पढ़ सकते। तो हम लोगों ने यहाँ इमर्शन के लिए वीआर का यूज़ किया है। हम ये सोच के चल रहे कि अगर एआई और वीआर को, वर्चुअल रियलिटी, अगर दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो बच्चा वो एक्चुअली फील कर सकता है कि वो मूव कर रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत पहले जाके, तो उसके लिए लर्निंग होगा। तीसरा, भाषिनी एआई अगर आप लोगों ने सुना है, उसको डेवलप किया जा रहा है। बच्चा जिस लैंग्वेज में सुनना चाहता है उसके पास सामने है। अगर वो एकदम मान लीजिए बुंदेलखंड का बच्चा है तो उसके हिसाब से सोचना चाहता है तो उसके सामने हिस्ट्री वैसे ही आएगा, क्योंकि उसकी इमर्शन की बात है। एंड इट शुड एंड विथ समथिंग कॉल्ड पर्सनलाइज्ड असेसमेंट, कि अगर आप वहाँ होते तो आप किस तरीके का क्लोथ्स पहन रहे होते, क्योंकि बच्चे ने जब वो कर लिया है, ही हैज इमर्स्ड हिमसेल्फ इनटू इट, वो डेफिनेटली जानेगा। दिस इज आवर एंटायर आइडिया ऑफ अ फ्यूचरिस्टिक हिस्ट्री बुक, और हमने इसका नाम रखा है न्यू एज इमर्सिव लर्निंग 2059। थैंक यू सो मच। And I want to add also a few things, because this is all about the product, the program that will be there for history. But there should be one textbook also. So that textbook will be having the kind of content that he is able to visualize in the app, through the video. So the text will also support with the pictures, and those pictures can be created by Canva or Photoshop. So, that kind of visualization can also be done if the VR is not available with the students, because there are limitations with a lot of schools, but the learning and education should not be limited. So whatever is we are asking them to read or understanding, that will be well supported by the pictures created by any AI tool, and those pictures will be looking like they are they're feeling, if that person, that student would have been there over the in that age, so he can feel about, or she can feel about, this kind of setup I would have been seen, right? And as he told before, getting into the chapter immersion, so aura will be created, so that the person, the student will be totally immersed into that kind of time period, and he or she will be able to visualize accordingly, exactly we want to have that kind of visualization. Apart from this, for entire chapter, the chapters are generally divided into, topics, subtopics. So for each topic, there will be a video. For say, it talks about the city layout, it talks about the life of the people, it talks about food, occupation, different kind of, things, topics we teach in a history chapter. So these things will be segregated with the help of small pieces of videos. So Canva will be used, and the text that is there in the books, that will be well supported, the voiceover in the videos, so that the child will be able to relate, and he or she will be able to answer the questions in examination. So the text gap will also be not there at all. Thank you. Thank you. Yes, please. Who is going to represent?
तो ये पूरी वर्कशॉप एक एआई पब्लिकेशन के इंडस्ट्री के लिए है। तो हमने एआई टूल्स को यूज़ करके हम कैसे अपनी बुक जनरेशन के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो हमने पहली बात एक चैप्टर बनाया है और उसका नाम दिया हमने एआई ऑन ट्रायल नेविगेटिंग रिस्क एंड चैलेंजेस। बट आप अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमने चैलेंजेस जो लिखा है उसको हमने चैलेंज को एक डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करा है। हमने चैलेंज जेन क्वेश्चन मार्क जी ये हमने लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि हमने इसमें बहुत एक मेटाफर यूज़ करा है इसके अंदर, चैलेंजेस के अंदर, कि चैलेंज जो है सबसे ज़्यादा जेनजीज के साथ आता है। और हम लोग जेनजीज की बात कर रहे हैं तो क्लास 9th एंड अबव जो जेनजीज जनरेशन है। तो हमने पहले इस प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए हमने क्या करा कि हमने टूल्स जो यूज़ करे हैं, टाइटल कवर यूज़ करा है हमने, चैट जीपीटी, जेमिनी, कैनवा, फ्रीपिक, गूगल फ्लो। उसके लिए उसको हमने यूज़ करके टाइटल कवर जो है हमने उसको जनरेट करने के लिए, उसका आइडिया लेने के लिए हमने यूज़ करा है। कंटेंट के लिए हमने चैट जीपीटी, जेमिनी यूज़ करके हम कैसे पब्लिकेशन इंडस्ट्री के अंदर एक बुक को हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद इलस्ट्रेशन, वीडियोस, एनिमेशन, ऑडियो के लिए इन्वेटो, फ्रीपिक, कैनवा, फायरफ्लाई, इवन लैब्स हम ये यूज़ कर सकते हैं। लेआउट डिज़ाइनिंग, टाइप सेटिंग के लिए इलस्ट्रेटर, इनडिज़ाइन जो हम यूज़ कर ही रहे हैं, उसके अंदर भी ऑलरेडी एआई फीचर्स आ चुके हैं। कॉरल ड्रॉ, इनडिज़ाइन, इनके अंदर एआई फीचर्स आ चुके हैं। एआई फीचर्स को यूज़ करके हम उसको आगे लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। डिजिटल रिसोर्सेज, क्यूआर, ई बुक, उसके लिए कैनवा, गूगल ड्राइव, यूट्यूब, इसके थ्रू हम अपना डिजिटल कंटेंट, डिजिटल रिसोर्सेज बना सकते हैं। तो एंड आफ्टर दैट जो हमारी इस चैप्टर को लेके हमारी टारगेट ऑडियंस जो रहेगी वो क्लास 9 से अबव रहेगी टारगेट ऑडियंस। उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बट उसके अंदर एआई रिस्क, एवरीथिंग हैज़ अ रिस्क एंड एआई ऑल्सो हैज़ अ रिस्क। चैप्टर नेम है हमारा एआई चैलेंजेस एंड रिस्क स्लैश बेनिफिट्स। एवरीथिंग हैज़ रिस्क एंड बेनिफिट्स। Description, trial on AI and navigating challenges at the beginning, also risk that sensitive information being shared on AI which can be dangerous. इसके की पॉइंट्स जो हमने रखे हैं, प्राइवेसी, डेंजर, जॉब ऑटोमेशन कैसे हो सकता है इस बुक के अंदर, मिस इन्फॉर्मेशन जो कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। जैसे सपोज आजकल जो जेंजीज, जो मैंने जेंजीज के ऊपर इसलिए मेटाफर दिया है, इसके अंदर मेटाफर इसलिए लिखा है जेंजीज के अंदर, जेंजीज बहुत खुराफाती होते हैं, आपने देखा होगा बहुत खुराफाती होते हैं और वो मिस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। मतलब सपोज आप जेमिनी को यूज़ करके आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक लड़की साथ में बिठा दो मेरे, तो वो आपने प्रॉम्प्ट दिया और वो क्रिएट हो गया यहाँ पर। तो वो मिस इन्फॉर्मेशन का, कि वो मिस इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड हो रही है। इस चैप्टर के थ्रू, इस बुक के थ्रू हमने ये बताना चाह रहे हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा एआई के थ्रू आगे फैल रही है। फिर उसके बाद चैलेंजेस विद जी जनरेशन, जेनजीज, ये चैलेंजेस क्या हैं जो जनरेशन हमारे को आगे चैलेंजेस फेस कर रही है। आपका हमारा सोचना बहुत अलग होगा। मैं पब्लिशर की तरह सोचूंगा, आप एक प्रोफेसर की तरह सोचेंगे, और बच्चे जो हैं जेनजीज वो कुछ और तरीके से सोचेंगे, उनकी नज़रिया एक अलग होगा। तो वो चैलेंजेस क्या हैं, वो चीज़ें क्या क्या हैं, वो उसके अंदर दिए जाए। बाकी एक इसके अंदर हम लोग चैप्टर ऐड करेंगे बायसेस एंड फेयरनेस, कि कितना एआई बायस है, कितना फेयर है। बायस भी हो सकता है एआई। And thank you so much. Thank you. That's all. I'll also like to add, yeah, team part. Team part. So I'll tell you, we have named our team SSHVA: Saraswati, SPD, Himadri, Venus, and AI. So SSHVA is Shiva. Thank you very much. Yeah, next. Who is going to represent from here? No? Okay, fine. Yes, ma'am. Please. Okay, so the problem, okay, we'll start from the, I'll start from the problem. First we get the manuscripts which are in very layman language, और थोड़ा सा वो मतलब हाँ raw form में होती है, वो refined नहीं होती है. So our tool is actually to refine the manuscript which the editor has received. I mean the AI program. So this is, sure, Okay, so yes. So when the editor or the editorial team receives the manuscript, तो ये एक subject matter expert का काम होता है to reframe it
and align all the topics in the chapter. So we are basically taking one chapter of science for grade 1, right? So grade 5, sorry, grade 5, it's chapter 1. And the thing is, the chapter is too long. When children start reading it, it's 5-6 pages and there is a lot of content. So we are basically making the content little more relevant and shorter, so that because nowadays kids don't want to read more. ठीक है? So ये एक start होगा with the flow chart, right? From the raw material, it will be picking up the main topics and it will form a flow chart. और हर topic का elaboration will be there, right? We are basically using the tools here, Content Draft, Chat GPT and Gemini. And here for Notion AI, we can make a flow chart, and using these tools, we can copy the content here and making it more relevant, and it will also taking into consideration the facts and the reality checks of the things which are mentioned, right, from internet. Here there will be a tool where there can be an image which will be using Canva and other this thing, and there can be a diagram. Again, we can use these tools for this, right? After everything is done here, there can be audios, right? Audios भी होगा यहाँ पर, video भी होगा, so that because children are more interested in listening to the content rather than reading it. और इसमें एक ऐसा ऑप्शन भी होगा जिसमें वो ऑडियो फास्टर भी कर पाएँ, क्योंकि आपने देखा होगा बच्चे ऑडियो या वीडियो फास्ट करके देखते हैं, 2 times 3 times 4 times करके देखते हैं, राइट? वीडियो भी दिस विल बी अ शॉर्ट वीडियो, राइट? And then more important, apart from this whole topic, more important is the summary. Because बच्चों को पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, उनको बस क्रक्स सुनना है ताकि वो पेपर में जाके क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाएँ, राइट? सो यहाँ पर वो समरी होगी जिसमें हर चीज़ एक प्रॉपर फॉर्मेट में, अगेन देयर विल बी अ माइंड मैप जो हर चैप्टर के एंड में वैसे भी होता है, बट ये माइंड मैप थोड़ा सा इलेबोरेटेड होगा, उसमें सिर्फ टॉपिक नहीं होंगे, टॉपिक के साथ थोड़ा सा कंटेंट भी रहेगा, वो कंटेंट जो उनके एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, जिसमें उनकी डिफ़िकल्ट टर्म्स रहेंगी, उसका शॉर्ट में डेफिनेशन रहेगा, एंड यहाँ, ठीक है, उसके बाद देयर विल बी एन असेसमेंट और द क्वेश्चंस एंड आंसर्स और एक्सरसाइज, और वो भी हम उसमें इनपुट दे पाएँ कि कितने फिल इन द ब्लैंक्स हम डाल सकते हैं इसमें, कितना डेफिनेशंस एंड कितना लॉन्ग क्वेश्चंस एंड आंसर्स. सो वो इनपुट्स हमारी साइड से यहीं से ही जाएंगे, एंड देन इट विल क्रिएट सच अ थिंग. सो दैट्स इट. One small question from my side is, what's the difference between a conventional chapter which are having Okay. art textbook these days? Yes. Chapter when it begins, it starts from introduction. फिर एक टॉपिक आता है, उसके सब टॉपिक्स आते हैं, फिर अनदर टॉपिक आता है, उसके सब टॉपिक्स आते हैं. जब तक बच्चा यहाँ से रीड करना शुरू करता है और यहाँ तक पहुँचता है, वो रीड तो कर लेता है, बट वो माइंड में वो एक फ्लो चार्ट नहीं बना पाता कि हमने एक्चुअली 2 टॉपिक पढ़े हैं, उसके 10 टाइप्स पढ़े हैं, 5 टाइप इसके, 5 टाइप इसके. तो वो यहाँ समरी में आ जाएंगे, ताकि पहले वो समरी देखे कि उसको 2 चीज़ें जो राइट, और उसके बीच में जो 5 चीज़ें हैं, जब तक वो तीसरे पेज पे आता है उसको पता ही नहीं है कि वो किसके सब टॉपिक्स पढ़ रहा है, राइट? सो समरी में ऐसा आ जाए, उसको उसके माइंड में सेट एक इमेज बन जाए कि वो इसके बारे में 5 चीज़ें पढ़ रहा है, राइट? Yes, of course it is from them. This chart has been made by them only. I am only the speaker. No, actually, he asked कि मतलब usually it is a very boring concept to make them read and write. So we divided the content into topics and provided the videos and audio, which we call it as a kinesthetic learning for a kid, where they are using their sound for hearing and visuals for seeing the concept and visualize the thing, how the things written here would be presenting a visual effect. Yes. Yes. And for make it more interactive, every topic has some small quiz or inquisitive. So first of all, my name is Rahul. We are from Book Magic, India. So our topic today is from pre-primary and primary segment of
school publishing. We have taken one topic which is on photosynthesis, a very concept-friendly, easy topic for a learner to understand. It begins from pre-primary and it's a vast topic which leads till the primary level. So our main motive was to make learners understand how this topic can be taught in a different way. More of we have seen in school books, in textbooks, that this topic begins with a core topic which begins with a concept on photosynthesis, how plants prepare their food. But this can be taught with the help of a pictorial representation. So we have given one prompt which I can just, yes, we have made it into a form of a story. So which the tool which we have used is particularly ChatGPT, and for image creation we have used Canva Pro. The prompt which we gave was very interesting. If you can just relate it to the pictorial representation, was generate an image in watercolors. This was the first prompt, based on photosynthesis, promoting imagination, building curiosity on the topic photosynthesis. It should be in a comic book format, where the child is diving in a leaf of a plant to understand the insides of a leaf and how does it help. Image should consist a zoom into the leaf, and child should be in a size which should be very big comparatively to a child, so that it looks like a child. So it is basically a prompt which gives an elaborative way to how this particular topic can be taught. The technologies which, the key principles which NEP talks about, we have integrated them in our chapter core content, which is followed after this pictorial representation. We have used some prompts and created the entire chapter. But it is hard. Which, can I continue? Which starts from an, which starts from an activity-based warm-up. First of all, the chapter core content begins with a warm-up, followed by a core content of the chapter in the form of basic concepts plus some assessment tasks in between. And the core concept also relates to a topic on photosynthesis, which is taught with the help of tabular formats in the form of assessment strategies. At the content end, we would like to add up to this. I'll pass it on the mic to my team member. Apart from that, we are trying to integrate AI technology, and this thing that we generated, the prompt, can also be in multimedia platforms. So it can be a VR thing and something that can be projected on a screen, and teacher can use that to teach photosynthesis. So it's something, the image in the storybook format, it's something that is very tangible, that you can touch and that you can see. So it's a multimedia format that we have tried to cover. So, yeah. The basic idea was to create something from 2-3 platforms, AI platforms, and use it effectively. The important thing is to use prompts well. The prompt has to be particularly very... AI is just a tool in Yes. real-life examples. So human intervention is very important. Without Thank you very much. Thank you. Thank you. It's a good idea. Yes, sir. Who is going to present? Madam. Not more than 2.5 minutes, please. Maximum 3 minutes. Sir, you are the human in the loop. So you will be the right judge of whether these are the correct AI tools. So what we've done, as we understood the assignment, is to create a workflow as well as the chapter and everything that we want to put into it, the product, etc. So for us, firstly of all, it's called New Gen Book Creation. Yes, please, attention, please. So I think we can all hear each other without making so much of a chaos. लग नहीं रहा पब्लिशर्स बैठे हैं, ऐसा लग रहा है हम थोड़ी मंडी में बैठे हैं. Sir, हम 10 seconds extra लेंगे for that interruption. Okay, so our textbook or our product is called AI, but AI does not. I think so. Each and every group is created and having their own creativity, and I believe that each member must listen carefully. Yes, ma'am, please.
So AI for us is not artificial intelligence, but alpha intelligence, because we are creating this for generation alpha. Okay. So step one is the agent that we want to use for doing a market survey, because it's important to get information as to what is available in the market, etc. So we would use Jasper for that. Step two is where we want an agent which will create a summary, a framework, and a syllabus. So we talked about the NEP earlier. NEP NCF is giving us some guidelines. There is a syllabus which is available. If you want to do a book on, let's say, a new subject like CT and artificial intelligence, then we need to look at the CBSE guidelines, the syllabus. And we would use something like Claude to summarize and filter out the information for us. The next step is the manuscript creation. This is obviously a very crucial one, and because we are publishers, we have our existing content, so you would be able to upload existing documents, train the AI on that, and create certain prompts. We think Claude is a good tool to use over here. The fourth step is one of editorial review. So to check for plagiarism, to check for content authenticity, etc., where we've thought of using Turnitin or Quillbots. Agent 5 is once we've got the manuscript. Ek minute. Thanks. Agent 5 is that once we've got the manuscript, we would want to create diagrams, layout, the designing, the pre-press part of it. So something like Copilot for the diagrams, Notebook LM for creating flowcharts, Canva for creating the design. Agent 6 is when we're looking at editing. So Grammarly, Gemini, these are all good tools to use. At the seventh step, and the next, so these two are the most interesting for us. There is the textbook, right, and the print content. And then there is the layer of learning that has to happen on it. Right now, that learning is done by the teacher. How can we empower the teacher with the right AI tools and the learner as well with the right AI tools? So in terms of what we give, assessments, activities, QR codes for every concept, which will have animations and lesson plans, games that we can do. There is a set of, as you can see, Claude, Midjourney, HeyGen, tools that we have identified and that we would use. Now these would give all the immersive, interpretive tools to the teacher and the learner. But the final step for us is the delivery on an LMS. And this one, sir, if I may take a moment. So firstly of all, we would need a tech stack or an articulate to create the LMS. So we've identified that. But on the LMS, there are four crucial things. One is learning, one is emotional support, one is assessment, and one is entrepreneurship. Learning is straightforward. All these things that we're giving will enable learning, right? And we want everyone to have that learning. Emotional support, why? And something like a Darwin box, not that AI will provide the emotional support, no, but AI will trigger the alerts that the child is struggling with learning, the parent needs to get a prompt, they are having difficulty, they are losing attention, AI can help us there. Assessment obviously is a huge space, and I will conclude with entrepreneurship. So we started today by saying what is the point of the NEP NCF? The point is holistic development, the point is real world application. So we want to be able to give students a set of tools on the LMS which they can use to create an app on their own. So student sees litter on the road, student identifies that as a problem statement. They say, okay, I can scan this, a trigger can go to the MCD saying this needs to be cleaned up. Some child somewhere can come up with a brilliant app which can change the world. Thank you. Would you like anything? Yeah, fine, thank you very much. It's a good concept. Yeah, definitely, it's good. Yes, sir. Who is going to represent? Good afternoon. We are from Viva, Morningstar and Jones Publishing. And as per the requirement, our target audience is primary schools textbook and our concept is Save Water. We have distributed this journey of creating a textbook in 6 stages, from manuscript to pre-press and production. And for each stage we have used manual. We have integrated manual with AI. So let's start with first stage, which is manuscript.
For manuscript, our research will be through Perplexity. And when it comes to writing, we have used ChatGPT, and we have created our manuscript in Google Docs. Second stage is editing. Of course, manual thing will be there. For AI, we have used Grammarly and Quillbot. Third stage is formatting and designing. For layouting, we have used Adobe InDesign, which is completely manual thing. For graphics, we have used Adobe Illustrator and CorelDRAW. For image sources, we have used Shutterstock and FreePix. Of course, we have used AI. We have used prompt for creating some complex images through FreePix and Shutterstock. When it comes to after-sales services, we have used QR. By scanning these QR codes, end user can watch videos which we have created through Grok, and we have used infographics which we have created in Adobe Express and Canva, and we have also created QRs where we are giving augmented reality, using which they can see what is the stage of water earlier and what could be next. When it comes to proofreading, we have used Adobe Acrobat, which will be manual, and ChatGPT for AI support. Before going to print, the last stage is editorial review, where subject matter expert will review the book. And for the checklist, we have used Notion, which is an AI tool. And finally, we have shared it in Google Drive for the printing, a high-resolution pre-pressed PDF. What exactly is the innovation in terms of learning enhancement and all? In terms of learning? Learning enhancement. When you talk about saving water, you will show something before and see. And it's a very small thing. 5 years ago it was this way, and today it is like this. So why should we do what we are preaching? Yeah. The innovation for pre-primary students. No, I'm good. I like to talk like that. Yeah. Yeah. Primary students, if you say save water, they will not really understand. It wouldn't affect them emotionally. Learning is about experiencing things, right? Especially for primary students. So the chapter starts with a water droplet. Like the QR codes are, like they start an AR, VR water droplet, which talks to the students directly. So we start like the journey of water, where it comes from, how it goes. Got it, yeah, fine. Thank you. That's good. So don't you think this step would come here instead of like at the 5th stage we are doing the subject matter expert? So this step was. He said that editing part. Editing is coming twice. Once, and this is final review. This is the final review. Yeah. After the CR, for the CR. Yeah, fine. Great. Okay. Yeah, fine. We understand. Yeah, thank you very much. Yeah. Who's going to represent? What is your concept? Good afternoon, sir. I'm David. This is my team. We are from EduSoft. And we actually have tried to create not a particular chapter, but a template using which multiple chapters can be created, multiple content can be created, and in different subjects. It could be science, it could be mathematics, it could be IT, whatever. And if people can follow this, they can create several books instead of one. So, and how AI has to be used. Now, what happens is in a chapter, in anything, once upon a time is the phrase which catches everybody's attention. So, storytelling has to be important. And NEP says that joyful and playful learning has to be there. So, it's beginning with the two characters talking with each other. And during their dialogue, an activity is thrown at the students to do so that they engage in the mood of learning for that chapter. And then the chapter follows. Scaffolding is done by the help of various activities created by AI. And then the illustrations and assessments. Once the chapter is finishing,
Then higher order thinking skills and critical thinking skills are promoted here. Those activities can be created with the help of Gen AI by discussing the topic with it. Then life skills activities which are actually listed by UNO, United Nations. Those 7 or 9 life skills can be incorporated in the chapter, and how they can be incorporated, the help can be taken from AI. Followed by multidisciplinary learning is very much important, how this learning of a topic can be applied into a different subject. So the connect with various other subjects is another important issue here. So we can take help of AI, how my topic connects with mathematics, or how my topic connects with EVS. And we can create those tasks in the chapter. And finally, we can go beyond the book. We cannot put everything into a limited number of pages. So we can make use of AR, VR links and QR codes, where we take the students out of the book and go online and learn more about it. So we can encourage the students to use AI in a constructive manner within the premises of that topic. So that's the whole idea. And if this template can be followed, a science teacher can write the science book, a math teacher can write the math book in the same template. So that's the universal usage of this approach. And those are the NEP points we have covered in the entire thing. And all kind of learners are taken care of. Learners who learn by doing, learners who learn by listening and reading, all of them. So that's the idea. Thank you very much. It's a good idea. Yeah, please, let's go. See you. Thank you. आपका हो गया? आपका हो गया? Yeah. You want to say something? Yes. No, sir. I am here as a sponsor, sir. Oh, very good. अभी कुछ बचे हैं? आप लोगों का हो गया? I want my sheet. Where is your sheet? Where? Who has my sheet? Okay. Hello, hi, I'm Ishika and I'm representing Tarun Publications. So you've all heard of gamified apps, right? But have you ever heard of gamified chapter? So this is the concept, and the TG we have selected for this is competitive exams, aspirants, and the book type is research-based content. But this is an overarching concept that has applicability across different disciplines. This is for competitive exam aspirants and research-based content, right? So imagine a concept is of a nutrition chapter. So there are different UN SDG goals. One of them is a nutrition goal, which is SDG 3, good health and well-being. Now, what are the pain points of most of the aspirants, right? One is memory recall, another is subject matter retention, third is top of the mind recall, right? So can you synthesize and articulate information top of your mind once you've formed those neural patterns? And the other is assessing exactly where they stand in their prep journey and what is the motivation to get started, right? So how do we solve that? We use applicability of the theory that they're reading in the chapter itself. And we also incentive-based gamified systems as well as cognitive health boosting through activities. How we do that, I'll give you a deep dive through an illustration. Imagine there's a mind map. I don't know if it's visible right now. But the first thing is you give them a pre-study motivation. How do you do that? You tell them, imagine that these meals combine complex carb, lean protein, and healthy fats, right? You give them examples, eggs, berries, nuts, and seeds. And how we do that, this chapter is actually in collaboration with an app called Healthify Me. I'm sure you must have heard of it, right? It's a very popular app. What you do is the aspirant will go, whatever the chapter says, they'll take a snap of their meal and they'll put it on Healthify. And Healthify logs that as one of these scans, right? And they'll give them your macros in the plate. What is your protein? What is your carbs? What is your fats? Every time you do that, Healthify takes a note of it. I'll come to this later now. Second is this chapter reduces the cognitive load of the candidate, which is the biggest problem in not even just aspirants, but also in MBA colleges, schools, 12th class, boards. How? Your meals and your breaks are already incorporated in this chapter. So you never get up from your study table for useless or mindless activities, right? So the aspirant is able to study for longer hours and give a better retention.
Third is a QR code. Every time you complete a chapter, there's a QR code that takes you to a reset quiz. What it does is it's a quick test. Have you slept less than 6 hours? Are you craving sugar while studying? Are you facing afternoon brain fog? Every time you do that, based on the answer, AI spits out a current state. Are you in a crash mode? Are you in a survival mode? Or are you in a peak performance flow mode? And basis that, it gives you remedies, how you can better take your study. And the third is an incentive-based system, right? So every time Healthify Me has logged in your scans, after, it's a point system. So each aspirant who reaches a certain level will be able to redeem it through a restaurant coupon. So you get an ice cream, imagine, right? Every time you do that. What it tells you, it actually teaches you an 80-20 rule. 80% you eat healthy and 20% you can eat your favorite junk meals, right? So that's how you are applying theory to practical life, solving the retention problem of candidates, helping them study longer, and overall improving their mental and physical well-being. So thank you so much. Yeah, that was us from Tarun Publications. Thank you very much. It's you. Thank you. It's well done. कौन सा है यार? आपका हो गया ना? हो गया? वो वाली टेबल है। वो लेडीज दो बैठी हैं। Aji sir, Aji. Ma'am, I want you to repeat this part. How you gonna related with the social studies. So our team's topic was computational thinking and artificial intelligence related to the CBSE, and which has come out with the modules for CTA and AI from grade 3 to 8. So one of the major questions what we as publishers have been receiving, how is AI going to be related or embedded within the subjects? So how am I going to teach AI within social studies? Or how am I going to teach English with AI? Or how am I going to teach maths with AI? The simplest example with which we can start with AI for social studies is the GPS map. Because they all know that their parents had been using it, whether they are going to the vacation or whether they are not. Now this is one aspect, because mobiles, it will not be provided within the class. Now other aspect or another query which we can relate, social studies, when we are teaching them the concept of population density. Now we are telling them within the textual words, India has this much population, China has this much, and then other countries have this population. Now, being the age of from 9 to 11, the student is a lot confused with different names of the country and then with the different population, unless and until the student is of next level. So instead of giving them just the text, we can provide them visually the data. Because visually it will be a lot more helpful, and if I'm just seeing it, my graph, then it is simply saying me India is at the top of the line and then Pakistan is at the bottom of the line. It will leave an impact. When we talk about the communication, more than 70% of our communication is not with the words, it's with the visuals, which will leave an impact on the students. The same can be done with the maths also. Now, if I'm asking you 352 divided by 667 or 498 divided by 583, which one is more? You might need to calculate that. But if the same I'm giving you in a graphical or a pie chart, it is easier to identify. So let's go to the level which my students can relate. Now coming to the other subject, now if we are talking about English, now, we have been listening that the problems with the English, that how AI can be implemented. Create a story, what we have already seen, create it in a pictorial format, just rearrange it. And ask your students to just arrange it in the sequence. Yeah. Maths is okay, social studies is okay. How a student through AI can learn the technology? One or two lines. Okay, now coming to the technology. See, AI is being implemented with the help of technology. Now, when we are using these concepts of abstraction, pattern recognition, decomposition, or algorithmic thinking, these also form the basics of my coding. We agree to it or not.
So once these logics are clear, then it will help the students to form the code, and it will be a first step to the ladder of learning the technology. So, yeah, it can be. Now, it totally depends on me. I can teach the same concept to an MBA student. I can teach the same concept to a 3-year-old. We have written our publications. We got your idea by the way. Check one. All right, very well done. Well, I believe it was a great session. The results will be announced by the end of the program, so you will have to wait by the end. So till that time, I would just request all of you, this is our time to actually appreciate each other's efforts. Can we please have a huge round of applause for all the participants? How many of you actually think you are going to win this? What do you think? Whose idea was the great one? Everyone's idea was great? So everyone is getting the gift, right, Mr. Nagin? Perfect, perfect. Well, that is up to the jury panel. For the time being, let us now invite, as you have already seen our posters also, we have our powered partner, ClassMap. So let me invite the founders of ClassMap right here on the dais, Mr. Gaurav Jain and Mr. Akash Sethia. Can we please have a huge round of applause, everybody? We are going to have a lot of context on AI, evaluation, assessments, and whatnot. So the stage is all yours. Thank you. Thanks a lot. And first of all, सबसे पहले खुद के लिए huge round of applause आप सबके लिए, क्योंकि अभी इस सेशन में जितना AI के आइडियाज आप लोग निकाल के लाए हो, एज अ कंपनी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है वो. So thanks a lot. Next, again, हाँ जी, स्टार्ट करने के लिए लास्ट 18 घंटों में 2 फ्लाइट मिस करके फाइनली वी आर हियर. सो बहुत एफर्ट मार के यहाँ आए हैं. एंड आई मेक श्योर दैट नेक्स्ट 15 मिनट्स, क्योंकि आपके और आपके लंच के बीच में सिर्फ हम दोनों खड़े हैं अभी, सो विल मेक श्योर कि आपके ये 15 मिनट वर्थ इट हो, फ्रूटफुल हो और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन के साथ हो. राइट? सो शुड वी स्टार्ट? शुड वी स्टार्ट? गुड. चलिए. So yes, we are from Fun Scholar Innovations, that is our parent organization, and we have 2 products as you can see on your screens, ClassMap and Fun Scholar. एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दे देते हैं. सो गौरव जैन इज बिटवीन अस. ही इज आवर सीईओ फ्रॉम IIM Calcutta. बहुत दिमाग है. नेक्स्ट वी हैव निखार मालू. अनफॉर्चुनेटली वो आज आ नहीं पाया. ही इज आवर CTO फ्रॉम IIT खड़गपुर. अगेन द आइडियल टेक गाय जो आप एनविजन करते हो अपने टीम में होने वाला, ही इज दैट गाय. एंड फाइनली सबसे कम पढ़ा लिखा लेकिन सबको बांध के रखने वाला आकाश सेठिया. आई हैंडल द ऑपरेशंस. राइट? हाँ जी, हाँ एक्चुअली थैंक यू. यस, सो एक छोटी सी जर्नी दे देते हैं. 2015 में हमने अपनी शुरुआत की थी और 2025 आते आते 3000 स्कूल्स के साथ हम काम कर चुके हैं इन फॉर्म ऑफ सेटिंग अप रोबोटिक्स लैब, स्टेम लैब्स, AI लैब्स, और अब 2025 में हमने शुरू किया है इन द फील्ड ऑफ AI. राइट? और डिटेल्स में हम आगे आएंगे. एक छोटी सी झलक दे देते हैं फॉर आर रोबोटिक्स, बिकॉज यू आर द पीपल हु हैव द फीट ऑन द स्ट्रीट. आपके वो नौजवान हैं जो स्कूल जा जाकर स्कूल्स के डायरेक्टर, प्रिंसिपल्स, टीचर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं. आपसे अच्छा कोई नहीं जान पाएगा कि आज के डेट में रोबोटिक्स इज द न्यू थिंग. राइट? सबको रोबोटिक्स चाहिए. 2015 में जब हम शुरू किए थे हमें बताना पड़ता था भाई रोबोटिक्स है, कर लो कर लो. आज के डेट में स्कूल से फोन आता है, भाई रोबोटिक्स कराते हो क्या? राइट? So as a company we provide few solutions as in 3D printing हुआ, IoT हुआ, robotics lab हुआ, whatever your ask is, that is what the technical know-how can be provided by us.
टीचर ट्रेनिंग हुआ, वहां पे लैब सेटअप करना हुआ, एक वर्कशॉप करवाना हुआ रिलेटेड टू रोबोटिक्स इज व्हाट वी कैन डू फॉर यू, राइट? सो एज एन ऑर्गेनाइजेशन, these are few of the images that we have done with few schools, setting up the infrastructure and everything. So how we can tie up, एक छोटा सा स्क्रीन उसके लिए कि आपको अगर कहीं पे रोबोटिक्स का सामान सप्लाई कराना हो, किसी टीचर को ट्रेनिंग करवाना हो, थैंक यू फॉर जूमिंग इन, end-to-end application when it comes to robotics, STEM and AI lab, that is where we come in, right? चलिए अब आते हैं असली मुद्दे पे, AI. So इतने सारे आइडियाज, ये ऊपर चढ़ के ना वो थोड़ा राजा और प्रजा वाला फीलिंग आता है, नीचे आने के बाद थोड़ा अपनापन आता है, राइट? अच्छा, फॉर दैट मैटर मैं पूछना भूल गया, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम? लाइक हिंदी दिल से निकलता है, इंग्लिश के लिए फिर ट्रांसलेशन करना होता है यहाँ पे, राइट? चलिए, AI के बारे में हम सब ने बात किया, लेकिन अब हम क्या AI का कैपेबिलिटीज के बारे में बात करते हैं? फॉर दैट मैटर, डू वी अग्री ऑन दिस फैक्ट कि AI से अब पर्सनलाइज लर्निंग कर सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? मैं वो टीचर हूं जो आंसर निकलवा के छोड़ता हूं, राइट? तो पर्सनलाइज लर्निंग हम करवा सकते हैं, लेकिन कैसे? दैट इज व्हाट विल बी लर्निंग नाउ. एक छोटा सा वीडियो है, देखते हैं इस वीडियो के एक समराइज्ड वीडियो से. सर जी वॉल्यूम दे दीजिएगा ना. ऑडियो टीम, सर जी, अरे आप ही से बात कर रहा हूं सर. दादा, ऑडियो ऑन कर दीजिए. Changed it. For decades, assessments have measured learning, but it has hardly changed it. A student takes an exam, gets the score, and moves on, without even understanding where they went wrong. And ClassMap changes this fundamentally. Hi, I'm Akash from ClassMap, an AI-powered assessment tool that turns every test into the starting point for improvement. We do not just evaluate answers, we give deep student-level insights. We provide in-depth analysis of where the student is lacking, where are their weaknesses, and what they should improve. But more importantly, we act on those gaps. After every test, student gets a personalized worksheet, which is based on the weaknesses that they have shown on that particular test. And the support doesn't end there. Every student gets a personalized doubt solver, which is trained on their weaknesses, their strengths, and their learning needs. So whether it's a question from a worksheet or a concept that they didn't fully understand, they get accurate help the moment they need it. For teachers, this means no checking of manual answer sheets, delivering personalized learning at scale, and getting gaps of the students for the entire class at once. For students, it means instant report right after giving their exams and 24/7 support whenever they need it. So we are making assessments not just efficient, but way more meaningful. हाँ जी, कुछ समझ में आया? बहुत ज़्यादा इंग्लिश था, राइट? एग्जैक्टली मैं यही सोच रहा था वीडियो चलाते समय, अरे यार पूरा वीडियो इंग्लिश में बोल तो दिया, 4 घंटे लगे इस वीडियो को बनाने का, लेकिन उसका एफिकेसी नहीं निकल के आया. इसलिए एक छोटे छोटे स्लाइड से एक एक पॉइंट के ऊपर जाएंगे ताकि जल्दी से समझ पे आ जाए कि एग्जैक्टली सिस्टम काम कैसे करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इज हर टीचर को पढ़ाना पसंद है, लेकिन चेकिंग किसी टीचर को नहीं पसंद. और वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे सब्जेक्टिव आंसर्स जो बच्चे लिख के दे रहे हैं, पूरा पूरा बंडल बन जाता है, उसकी चेकिंग हम एआई के थ्रू कराते हैं, राइट? सिर्फ चेकिंग ही नहीं. सो दिस इज जस्ट वन शीट. थैंक यू फॉर जूमिंग इन. अगर आप देखेंगे यहां पे एक डायग्राम का यहां पे पोर्शन था, यहां पे उसका रिलेटेड उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है. डायग्राम का फीडबैक डायग्राम के ऊपर आया, टेक्स्ट का फीडबैक टेक्स्ट के ऊपर आया. This is on-screen marking generated by the system. It's not manually done. It's generated by AI, right? And if you zoom out, इन सब का एक summarized report यहाँ पर भी आता है along with marks, right? You can see there. Now this is the best slide. इसे थोड़ा zoom करना, थोड़ा नीचे, right? Zoom out. Thank you. क्लास टेस्ट हो गया एक, 40 बच्चों ने क्लास टेस्ट दिया, 40 या 50 मार्क का whatever क्लास टेस्ट था. क्लास टेस्ट देने के बाद सबको मार्क्स मिल गया. उस क्लास टेस्ट के बाद आउटपुट क्या है? टीचर को लगता है हाँ ठीक है, ये सब टॉपिक मेरा खराब था तो वो चैप्टर में रिवाइज करा देता हूँ, राइट?
बच्चों को लगता है हाँ ठीक है चलो 40 में 10 आए 20 आए, चलो मैं और पढ़ लूंगा, या फिर जब एग्जाम आएगा तब देखा जाएगा। दिस रिपोर्ट एग्जैक्टली गिव्स कि कौन सा वो सब टॉपिक था जहां पे बच्चों ने गलती की है। अगर मैंने एग्जाम दिया है, दिस इज दैट पर्टिकुलर जो रेड में आ रहा है, ये वो सब टॉपिक्स है जहां पे मैंने एकदम स्कोर नहीं किया। एंड एज अ स्टूडेंट अगर मैं रिवाइज कर रहा हूं तो दिस इज दैट सब टॉपिक जिसे मुझे रिवाइज करना है। एज अ स्टूडेंट मुझे जो सबसे अच्छा आता है मैं उसका पढ़ना ज्यादा पसंद करता हूं, वो ग्रीन पोर्शन है, उसे हमें नहीं पढ़ना है, जो मैं आगे दिखाऊंगा कैसे हो रहा है वो। अगेन पैल, पर्सनलाइज्ड अडैप्टिव लर्निंग, राइट, जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि एआई के क्या कैपेबिलिटीज है, एंड दिस इज वेयर पैल कम्स इन, बिकॉज सिस्टम नोज एग्जैक्टली मैंने जब एग्जाम दिया तो मुझे क्या क्या गलती की, आपने जब एग्जाम दिया तो सर ने क्या क्या गलती की, हम दोनों का वर्कशीट अलग होगा, मेरे गलतियों पे मेरा होमवर्क बनेगा, सर के गलतियों पे सर का होमवर्क बनेगा। तो क्लास के 40 बच्चे ऑल्दो एक ही एग्जाम दे रहे हैं लेकिन सबका होमवर्क अलग है, सबका होमवर्क पर्सनलाइज्ड है अकॉर्डिंग टू देयर वीकनेस, राइट। दिस इज द कैपेबिलिटी ऑफ एआई। नाउ टीचर के लिए क्या, टीचर को एग्जैक्टली पता चलता है अगर 40 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं कौन से वो टॉपिक्स है जहां पे कंसेप्चुअल एनालिटिकल मिस्टेक हो रही है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, कंसेप्चुअल मिस्टेक हो रही है, एप्लीकेशन मिस्टेक हो रही है। और अगर नीचे जूम इन करेंगे प्लीज, राइट, रेमेडियल एक्शन प्लान नीचे आता है, राइट। एग्जैक्टली मुझे कौन सा सब टॉपिक टू दी सब टॉपिक लेवल, कौन सा सब टॉपिक मुझे रिवाइज करवाना है, वो टीचर को पता चलता है हर एग्जाम के बाद कि इन सब टॉपिक्स में क्लास की प्रिपरेशन ठीक से नहीं हुई है। सो एक ही रिपोर्ट में ये पता चल गया टीचर को। सो एक समरी कर देते हैं कि स्कूल्स के लिए क्या क्या है। सबसे पहले एआई बेस्ड क्वेश्चन जनरेशन हो सकता है। ऑब्वियसली मैं किन के सामने ये बात बोल रहा हूँ, सबसे अच्छा क्वेश्चन बैंक्स आप लेके बैठे हैं, लेकिन आपके बैंक से अलावा अगर केस स्टडी बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, अगर आपको और एआई बेस्ड क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं वो भी स्कूल कर सकता है। यहाँ पे डिटेल गैप एनालिसिस, ऑब्वियसली जो मैंने आपको दिखाया, जो डिटेल गैप निकाल के देता है ये स्टूडेंट्स के लिए। रेमेडियल एक्शन प्लान अभी हमने देखा। टीचर्स के लिए परफॉर्मेंस एनालिसिस, जब मैनेजमेंट को पता चले कि कौन से टीचर ने कितना होमवर्क, कितना क्लास वर्क करवाया है, उस होमवर्क में या उस क्लास वर्क में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और उस पार्टिसिपेशन में कैसा परफॉर्मेंस रहा है बच्चों का, तब जाके एग्जैक्टली पता चलता है। अभी क्या पता चल रहा है, अभी पता चल रहा है एग्जाम में रिजल्ट कितना है, क्लास टेस्ट पे, होमवर्क में, डेली के काम में बच्चे का कितना पार्टिसिपेशन है, ये डेटा यहां से निकल कर आता है। एंड लास्ट पेरेंट कम्युनिकेशन, जब हफ्ते के एंड में एक बार में पेरेंट को पता चलेगा कि आज इस हफ्ते बच्चे को 3 होमवर्क मिला, उसमें से एक पे ही आंसर दिया है बच्चों ने और उसमें ऐसा परफॉर्म किया, तो अपने आप घर से डंडा पड़ेगा कि भाई क्या हुआ, होमवर्क क्यों नहीं कर रहा। सो रियल टाइम एप्लीकेशन, रियल टाइम बच्चे की ग्रोथ दोनों तरफ से होगी, राइट। नाउ म्हारो की फायदो, राइट, बनिया तो यही बोलता है अपने अंदर का कि भाई मेरे लिए क्या है। सो यू पीपल सिटिंग हियर, आपका क्या फायदा है इसमें, अब सब पे ध्यान देंगे, राइट। कंटेंट क्रिएशन बेस्ड ऑन योर डेटा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके किसी चैप्टर में कनिका बात कर रही है राम से और वो कुछ एक एग्जाम्पल दे रही है, तो जो कंटेंट एआई बना के देगा वहां पे कनिका ही राम से बात करेगी, which is a good correlation with your data that you have created in your books, right? Question generation based on your data. Again, question generator AI अपना दिमाग लगाएगा, लेकिन उसका डेटा बेस आपका डेटा रहेगा, राइट। आंसर इवैल्यूएशन, लेट्स से आप एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो किसी स्कूल में, प्री बोर्ड्स का एग्जाम काफी सारे पब्लिशर्स करवाते हैं, उस प्री बोर्ड्स का चेकिंग कैन बी डन थ्रू एआई, और उस प्री बोर्ड्स का एग्जैक्टली आप बता सकते हो बच्चों ने क्या क्या मिस्टेक किया, क्या क्या उन्हें इंप्रूव करना है। दैट इज द परफेक्ट स्टेज प्री बोर्ड, जब बच्चे को कहां पे इंप्रूव करना है, कौन से टॉपिक पे इंप्रूव करना है, वो आप तुरंत विद इन डेज फॉर दैट मैटर, क्योंकि एआई चेक कर रहा है 2 मिनट में 20 पेज चेक हो रहा है। सो विद इन डेज आप पूरे स्कूल का एक रिपोर्ट बना के दे सकते हैं कि भाई आपके इन बच्चों में इन सब टॉपिक्स में ये प्रॉब्लम है, यहां पे टीचर को रिवीजन करवाना है और ये बच्चों को प्रिपेयर करना है। लर्निंग गैप मैप जो मैं दिखाई रहा था अभी आपको, पर्सनलाइज्ड ट्यूटर, अगर आपने वीडियो, वो जो अंग्रेजी वाला वीडियो आपने ध्यान में देखा होगा, तो बीच में उसमें एक डाउट सॉल्वर आया था। सो वॉट एवर वीकनेस इज वॉट द एआई इज कमिंग अप विथ,
वो वीकनेस डाउट सॉल्वर से मैप हो जाता है. सो मैं एज अ AI चैटबॉट उसमें अपने जितने भी डाउट्स है उसको रिजॉल्व कर सकता हूं. दैट गोज अंडर योर ब्रांड नेम, योर पब्लिशिंग हाउस ब्रांड नेम, राइट. और ये हम करते कैसे? सबसे पहले तो कंटेंट सिक्योरिटी, ये सबसे जरूरी है आज के डेट में. योर रियल IP इज योर डेटा, योर कंटेंट, योर बुक्स दैट यू हैव प्रिंटेड, राइट. वो कहीं और नहीं जाना चाहिए. पर उसके ऊपर AI का लेयर अगर ऐड हो जाए तो एनालिसिस और बेटर हो जाती है. एंड दैट इज वेयर आवर नॉलेज बकेट कम्स इन. एवरी पब्लिशर गेट्स देयर ओन नॉलेज बकेट. उस नॉलेज बकेट में आपको आपका डेटा फीड करना है और उस डेटा जो आपने फीड किया है उसके ऊपर ही AI अपना एनालिसिस करेगा, अपना इंटेलिजेंस लगाएगा, राइट. सेकेंड इज ग्रेटर क्लासरूम रीच. ऑब्वियसली ये GPT का ज्ञान है, इसे छोड़ दीजिए. बेटर लर्निंग आउटकम्स, राइट. ऑब्वियसली जब बच्चे को पता चलेगा एग्जैक्टली किस किस सब टॉपिक में उसे बेटर करना है तो ऑब्वियसली लर्निंग बेटर होगी. सॉरी सर. एंड न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम. भाई एंड ऑफ द डे अगर पैसे पॉकेट में नहीं आए तो काम करने का फायदा ही क्या, राइट. सो ऑब्वियसली देयर विल बी बेटर रेवेन्यू एंड अ रिकरिंग रेवेन्यू फॉर यू गाइज एज वेल. सो दीज आर 3 मोटा ways हाउ वी कैन टाई अप विद यू. फर्स्ट इज आपके बुक के एंड में आप क्वेश्चन आंसर्स, एक सेक्शन क्वेश्चंस का होता ही है. वहां पर एक QR हो सकता है जहां पे बच्चा खुद से वहां जाकर AI से क्वेश्चन जनरेट कर सकता है उस चैप्टर के ऊपर और उसका खुद से आंसर लिख के सबमिट कर सकता है और उसका इवैल्यूएशन ले सकता है, राइट. दैट इज वन वे. सेकेंड इज लर्निंग ऐप एनालिसिस बाय द स्कूल. स्कूल जहां पे अपना क्लास टेस्ट ले रहा है, अपना होमवर्क ले रहा है, अपना एग्जाम्स ले रहा है, वहां पे इसका यूज केस आ सकता है और उसका एनालिसिस निकल सकता है ऑन अ डे टू डे बेसिस. एंड थर्ड, इफ यू आर टेकिंग फाइनल समिटिव एग्जाम्स इन स्कूल्स, प्री बोर्ड्स हुआ या कोई भी टाइप का एग्जाम अगर आप कंडक्ट करवा रहे हो तो उसका इवैल्यूएशन कैन बी डन विद इन डेज बाय अस, बाय द सॉफ्टवेयर, राइट. बहुत शांति है रूम में, क्या सब कुछ सुन रहे हैं? हाँ ना? हाँ हाँ हाँ. चलिए नेक्स्ट. It gives me immense pride. If you have heard of EAA, E-Assessments Association, it's a worldwide organization based out of London, UK. And we 306 लोग participate किए थे इस साल in the field of assessments, and we are the top 3 finalists for this year 2026. जून में इसका रिजल्ट आने वाला है. So hopefully अगर जीतते हैं तो और बड़ा celebration. But yes, this is a big achievement for ClassMap. So thank you. This was my 15 minutes for you guys. Me, Akash, Gaurav, we are here. We'll love to have a demo session with you. अगर आप चाहते हो कि आपके डेटा के साथ, आपके पब्लिकेशन के साथ कैसे इसे कोलैबोरेट करके हम साथ में मिलकर AI को effectively schools तक पहुंचा सके, we are here for us. If you want to book a demo, please meet with us. पीछे हमारा टेबल है. Tuesday तक हम खुद दिल्ली में रह रहे हैं. If you want a physical meeting and online demo, we are up for it. Thank you. When the event started, the sir started with a small thing, saying that a child today does not learn only by reading a chapter. The child wants to see, hear, practice, interact, ask questions, receive feedback, and learn at their own pace. A teacher today does not only need a textbook, the teacher needs worksheets, assessments, lesson plans, activities, remedial support, and digital help to manage different levels of learning in one classroom. Did we match the expectations, sir? This is what we do. This is what we're trying to do. Help us grow. Thank you so much. How this homework or answer sheets of the question papers will be uploaded? It will be either image will be taken or a scanning can be done. Either image or scan. Okay. It will be a tedious task for a school. This is one roadblock. True. Yes. So you're talking about personalized learning, right? That's good. That's amazing. It has to be like this. लेकिन हम लोग लर्निंग रेट को कैसे यहाँ पे ऑब्जर्व करें? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझाता हूँ. एक एग्जांपल, 2 बच्चे हैं, दोनों का कैपेसिटी अलग अलग है लर्निंग रेट का, राइट?
अब हम कह रहे हैं कि जो पर्सनलाइजेशन है वहाँ पे क्या हो रहा है कि उसके कैपेसिटी के हिसाब से वो किया जा रहा है, राइट? नाउ बट इन आवर सिस्टम टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट देयर इज वन एग्जाम फॉर ऑल ऑफ देम, राइट? अब मान लीजिए 1 to 10 का स्केल है, एक बच्चा 1 to 4 तक ही पहुंच पाया, उसने कोशिश करी, उसका कैपेसिटी है, दूसरा ऑलरेडी 7 में था, वो 10 तक पहुंचा। तो हम इस चीज़ को सेम प्लेटफॉर्म पे कैसे लाएं, ये मेरा पहला सवाल है। और दूसरा, क्या ये टेस्ट किया गया है पायलट, और उसका इम्पैक्ट कहाँ पे कैसे हमें समझ में आएगा? थैंक यू। पहले क्वेश्चन पे मैं आता हूँ कि पैल का जो 2 अलग अलग बच्चे, उसका कैसे हम लोग इसको केटर कर रहे हैं। फर्स्ट, जब पहला क्लास टेस्ट हुआ, क्लास टेस्ट के बाद एक वीकनेस एनालिसिस निकला, वीकनेस एनालिसिस पे ऊपर क्वेश्चन आ गया, वो सबको मिल गया, उसका आंसर दिया बच्चे ने। एआई तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है, एआई को एग्जैक्टली समझ में आ रहा है कि उसका आंसर कैसा दिया है बच्चे ने। नेक्स्ट सेट ऑफ पैल इज क्रिएटेड ऑन दैट फर्स्ट सेट ऑफ पैल। पैल मीन्स पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग। सो एज इन मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया, सॉरी। पहला जो टेस्ट बना, उस टेस्ट के बेसिस पे दूसरा टेस्ट बन रहा है, और उसके क्वेश्चंस वेइंग ऑन, अगर बच्चे ने आंसर कर दिया है, जरूरत नहीं है फिर अगले टॉपिक पे जाओ, अगर आंसर नहीं कर पाया तो उसका इजियर लेवल ऑफ क्वेश्चन ऑन दैट सेम टॉपिक। सो पैल 1, पैल 2, पैल 3 ये चलता जाता है। वो बच्चे के ऊपर है कितना लेना चाहता है, वो कितना खुद को टेस्ट करना चाहता है। नो नो, कंप्लीटली इन हाउस। सो LLM, नहीं देखिए क्या होता है, LLMs is definitely has been adopted from Gemini and ChatGPT, but then it has to be fine tuned. We are not building the LLMs here, we are fine tuning the LLMs according to the need and structuring that the way we want it. Questions? Yes, ma'am. I have an answer. Okay. Okay, thank you. There was first question what was to raise that once the evaluation is going to increase the load for the teacher. CBSE has already started OSM scheme. Yes, yes. So it is what they are preparing. True. Absolutely. True. Absolutely. Thank you so Thank much. you. Thank you. How accurate are the answers? Answer तो बच्चा लिख रहा है, उसका evaluation is how accurate. It's 90%, 90 to 95% based on the formatting of the paper. Formatting का मतलब मैं बताता हूँ आपको, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्वेश्चन 1 2 3 4, सेक्शन बी में फिर से क्वेश्चन 1 2 3 4। अब इस केस में एआई भूल जाता है भाई क्वेश्चन 1 2 बार क्यों आ गया। अगर फॉर्मेटिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज परफेक्टली फाइन एंड बच्चे का आंसर वहां पे ANS1, ANS2, ANS3 करके लिख रहा है, वो फिर आंसर लिख रहा है परफेक्ट, 90 to 95%, नो, नॉट एन इशू, राइट? गुड, दिस इज वेयर थिंकिंग कैपेबिलिटी। सो मैम का क्वेश्चन था कि इवैल्यूएशन हो कैसे रहा है, कि हम जो मॉडल आंसर की दे रहे हैं क्या उसके बेसिस पे चेकिंग हो रहा है, या फिर बच्चा कोई भी तरीके से आंसर लिख रहा है, इंटरनेट से वो नॉलेज ले रहा है। That this is where thinking capability of the AI comes in. So every AI can think on its own. एक आंसर तक पहुंचने का एक सही रास्ता होना जरूरी नहीं है, 1000 रास्ते हो सकते हैं उस आंसर तक पहुंचने के लिए, एंड AI can think all the ways through. So हम उनके इंटेंट को पढ़ते हैं rather than the मॉडल आंसर की। कॉन्ट्रास्ट मतलब ओके हाँ, राइट, अब इसका आंसर मैं 2 तरीके से दे सकता हूं। पहला, isn't NAP exactly about this? Are we going in the right direction? और दूसरा तरीका भी है, मैं बोला 2 तरीके से आंसर दे सकता हूं। दूसरा तरीका ये है, the power in the end of the day lies exactly in the hand of the teacher. So there's this toggle in the system where आप उसे strict, moderate और lenient में change कर सकते हो। And when you are at a specific level of strictness, exactly जो keyword है, keyword से match होना चाहिए।
नो नो इट्स नॉट अबाउट करेक्ट, वो माइंडसेट है, हर स्कूल का माइंडसेट अलग अलग है, हर टीचर का माइंडसेट अलग अलग है, और उसके लिए ही वो फीचर्स एंड ऑफ द डे टेक्नोलॉजी को ह्यूमंस के लिए अडेप्ट होना है. यस सर. I think now we can have the discussion on a table because we are already getting late for a lunch. थैंक यू, आपने लंच छोड़कर मेरे बातें सुनी. दोज हु आर आस्क द क्वेश्चंस, प्लीज आपके लिए चॉकलेट है, पीछे आके ले लीजिएगा. थैंक यू. जरूर जरूर, डेमो के साथ. So yeah, I'm 100% sure that people are very curious to ask from you, Akash, and of course he's here. So you may please take your lunch and then you can maybe informally connect with him and clear your doubts if you have any. For the time being, let's proceed further for the lunch and let's meet once again at like right after 30 minutes. Thank you so very much for doing that. I request you to please step here ahead on the dais, and I also request FEPI core members to please take a step ahead. On the dais, President Sir, Mr. Gopal Kishan ji, General Secretary, Mr. Rajesh Gupta ji, and our Treasurer, Mr. Rajiv Goyal ji. Thank you so very much once again for stepping here and felicitating the jury of today. So he has already done his part, by the way. Dr. Nitin has already done his part. He has given you the points based on the ideas you have presented, and very, very soon we will be representing those marks right here. Thank you so very much. Well, now is the time when we should proceed further in today's session. When we are talking so much about artificial intelligence, what kind of data are we providing to the artificial intelligence database? That is literally very much reflected to the cyber threat. And it is very important to actually follow the right kind of cybersecurity procedures. And for that particular knowledge, I am going to invite here on stage Mr. Rakesh Kumar, who is a seasoned cybersecurity and AI governance leader with over 19 years of experience, specializing in securing AI ecosystems, cloud platforms, and driving responsible AI strategies. Can we please have a huge round of applause for Mr. Rakesh? The platform is all yours. Thank you. Good morning, everyone. Back there, good morning. Cyber security session after lunch. So I have to compete with biryani, sleep, and low blood sugar. Are we still awake? Okay, let me ask you a question. How many of you have used the same password everywhere? You can raise your hand. Anyone else? I like the honesty. Hackers too. Okay, yeah, this is actually, we do it everywhere. We use the same password whenever we get the chance. But to protect us from using the same password, organizations have what? Password policies. And what goes into a password policy? We all know. Uppercase, lowercase, symbols, numbers, emotional trauma. And last but not the least, our journeys of pilgrimage. So these are the things which makes the password. So password, why we are talking about the passwords here? Because password is the first thing when we talk about the cyber security. This is the first thing which comes into our mind. And we use it everywhere, same password over and over again. And this is the one of the first thing where we get trapped. So let me ask you one more question. I think the slide is visible to everyone. Which of these everyday action could put our content, data, and business at risk? There are 4 options here. So which one is the biggest risk? The person who will give the right answer will get a prize from our side. You have 1 minute to answer the question. Okay. Yes, ma'am, your answer, please. Answer number 4. Editor click urgent invoice. Okay. So there is an external email, and it's a
what is this? What kind of email is this? Anyone? Phishing email. So any other contrarian view here? Any other option? Anyone want to choose? All going for the option 4? What about the option number 3? Publisher at 123. How many of you use this password? I like you, sir. You'll definitely get a chocolate. Okay. So all of them are equally important. It's not like, can you please just not zoom it? Zoom kar de, kam karte bhai. Full mode. Okay, so it's not like the 4th is the important one. The 1st, 2nd, and 3rd, all of them are important. So how many of you have already done the first crime? Great. So this is what we do. We just forward the files on WhatsApp. Why do we do this? Someone is saying we use WhatsApp for official purpose. Is it approved inside your organization? Yes, that's why you all are here in this session. So I am going to make a promise today. I am not going to make you cybersecurity expert, but definitely after going from here, after attending this session, you'll definitely learn how to deal the cyber things in a better manner. So obviously, it's the same thing. Another tool, same thing, sharing in a different way, but the problem is this: anyone with the link can use or open the manuscript here, or the regular offender password, publisher at 123, admin at 123, you will find it everywhere. The next one, obviously everyone flag that one, because we all, many of the times we must have fall victim of this one. So today we are going to talk about how to save yourself from these kind of risk, how to make your organization deal with cybersecurity incident in a better way. So I would like to invite my friend Yogesh here to take you to a journey of deep dive into the cybersecurity concepts and how you can utilize those into your organization. थोड़ा हिंदी में रखते हैं। मैं आपको अपने एक डिकेड का ना साइबर सिक्योरिटी का एक सार बताता हूँ। साइबर सिक्योरिटी ना आजकल बहुत बड़ा है, पूरी की पूरी बीटेक इंजीनियरिंग एक ही टॉपिक पे हो रही है साइबर सिक्योरिटी में। तो मैंने क्या सीखा लास्ट के 10 साल में साइबर सिक्योरिटी में काम करके, कि हमें सिर्फ 2 चीज़ें फोकस करनी है, और वो चाहे एआई हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो पेमेंट हो, सिर्फ 2 चीज़ें। फर्स्ट इज़ डेटा, सेकेंड इज़ आइडेंटिटी। डेटा इज़ एवरीवेयर, डेटा इज़ गोल्ड। हम लोगों ने एआई के टूल खरीद लिए, कैनवा खरीद लिया, पेमेंट प्लान ले लिया कैनवा का, चैट जीपीटी ले लिया, क्लॉड ले लिया, सब ले लिया भाई साहब, और पेमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्लॉड के पास हम डेटा अपना स्टोर कर रहे हैं, क्लॉड उसको आगे कहाँ बेच रहा है, वी डोंट नो। दैट्स कॉल्ड शैडो आईटीज। उसके लिए भी अलग से कंपनी आ रही हैं कि उस चीज़ को कैसे रोका जाए, क्योंकि उसकी विजिबिलिटी हमें नहीं है। तो कुछ चीज़ें हैं जो साइबर सिक्योरिटी हम लोग अंदर ज़्यादा नहीं घुसेंगे, बट मैं आपको बेसिक 3-4 चीज़ें लिख के लेके आया हूँ जो आपको समझाता हूँ। वो आपको समझ आएगी तो आपको पता लगेगा कि मुझे अपने साइबर सिक्योरिटी के प्लान्स कैसे बनाने चाहिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सिक्योर रखना चाहिए। तो सबसे पहले कोई भी साइबर सिक्योरिटी के टॉपिक में अगर हम बात करते हैं तो डेटा और आइडेंटिटी, बस ये 2 चीज़ होती हैं। कंप्लाइंस होते हैं, जीआरसी होती है, बहुत बड़ा है, उसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जो आपको एक्सप्लेन करेंगे, बट मैं आपको डेटा और आइडेंटिटी के कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ। देखिए, सेंसिटिव डेटा कैटेगरीज क्या होती हैं। सेंसिटिव एक होता है डेटा, लेकिन डेटा के अंदर भी कैटेगरीज होती हैं। जैसे कोई डेटा पेटेंट डेटा है, आप लोगों ने बुक पब्लिशिंग हाउस हैं आप लोगों के, जैसे कंपनी है विली, पियर्सन, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इनके पास पीआईए डेटा आता है, बहुत सारा पीआईए डेटा आता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं। इन लोगों के पास टैगिंग टूल्स होते हैं। जैसे ही डेटा इनके ऑर्गेनाइजेशन में आया, पब्लिश होने के लिए, यूज़ होने के लिए, कोई पेटेंट आया जिसको इनको पब्लिश करना है, अपने वेबसाइट पे डालना है, इसका ये चार्ज लेते हैं। तो ये अपने वेबसाइट पे डालने के लिए भी बहुत सारे क्लियरेंस लेते हैं। किससे लेते हैं? जो हमारे इंडिया में तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन बाहर के कंट्रीज़ में उन लोगों के कंप्लाइंस रूल्स होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं। वो अप्रूवल लेते हैं, उसके बाद जाके वो डेटा स्टोर करते हैं। तो उनके पास टैगिंग के टूल होते हैं। तो जो पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ,
वो है सेंसिटिव डेटा कैटेगरीज। जैसे ही मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट डाला, मुझे पता लग जाएगा उस वर्ड डॉक्यूमेंट में बिना देखे कि ये PIA डेटा है, कॉन्फिडेंशियल है, हाईली कॉन्फिडेंशियल है, पब्लिक डेटा है, सिर्फ उसकी स्कैन करके ही। और वो स्कैन मैं नहीं करूँगा, वो मेरी पॉलिसीज करेंगी, जो मैंने एक टूल खरीदा हुआ है फॉर सेंसिटिव लेबलिंग। क्यों करना है हमें डेटा की लेबलिंग, क्यों करना है? अब व्हाट्सएप पे मैं डेटा भेज रहा हूँ, अगर मैं पब्लिक डेटा भेज रहा हूँ तो मेरी कंपनी को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं, भेज लो, बिकॉज उसकी कैटेगराइजेशन पब्लिक है। बट जैसे ही वो कॉन्फिडेंशियल या सेंसिटिव डेटा होगा, वो मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया, तो वहाँ पे दिक्कत है। इंडिया में हम लोग इस चीज़ को बड़ा इग्नोरेंस लेते हैं, यार छोड़ कोई बात नहीं, चला गया, मैं तो रिज़ाइन कर दूंगा, मैं तो कहीं और ज्वाइन कर लूँगा, भेज दिया मैंने तो। लेकिन बाहर ऐसा नहीं होता, बाहर दे विल ट्रैक यू और हो जाएगा काम, कंपनी का भी ब्रांड रेपुटेशन और सब कुछ। तो उसके लिए वो बहुत सारे टूल्स खरीदते हैं, DLP टूल्स खरीदते हैं, सेंसिटिव लेबलिंग टूल्स खरीदते हैं, और डेटा टैगिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। और ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर ये अपने आप में एक फील्ड बन गई है कि डेटा को टैगिंग कैसे करी जाए, कैसे पता लगाया जाए बिना चेक करे कि ये डेटा कॉन्फिडेंशियल डेटा है। तो उसके लिए कुछ पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं, उसके लिए एक प्रॉपर टीम बैठानी पड़ती है, और सिर्फ वो यही काम करती है, सेंसिटिविटी ऑफ डेटा। सो ये हो गया एक टॉपिक। दूसरा है डेटा इन ट्रांजिट। अब वो डेटा भेजना है मेरे को बाहर, कहाँ पे? ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी। जब मैं कहता हूँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और मैंने लिया हुआ है सब्सक्रिप्शन जेमिनी का, तो मैं उसको बाहर भेज रहा हूँ कि अंदर ही अंदर भेज रहा हूँ, आई डोंट नो, वाया इंटरनेट भेज रहा हूँ, लेकिन वो मेरे इंस्टेंस पे सेव हो रहा है, जो मेरी कंपनी ने उसके साथ खरीदा हुआ है। कंपनी A ने भी जेमिनी खरीदा है, कंपनी B ने भी जेमिनी खरीदा है। जेमिनी के पास दोनों का डेटा है, उसने सेग्रीगेशन किया हुआ है, पियर्सन वालों का भी, विली वालों का भी, A का भी, B का भी। लेकिन वी आर नॉट श्योर कि उसने हमारा डेटा उसके साथ भेजा या नहीं, वी आर नॉट श्योर। उसने बस हमारे साथ NDA साइन किया है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, दैट्स इट। उसके अलावा हमारे पास कोई ट्रैकिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बट वी आर ट्रस्टिंग बिकॉज वो हमारा पार्टनर है, दैट्स इट। तो डेटा इन ट्रांजिट हमारा कैसे सिक्योर है, हम सिर्फ यही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन वो करते कैसे हैं, तो उसके लिए हमारे यहाँ नई नई प्रोटोकॉल्स आ रही हैं। TLS 1.3 तक हम पहुँच गए हैं, TLS 1.2, HTTPS, ये सारी प्रोटोकॉल्स हम मेक श्योर करते हैं कि HTTPS का एरर ना आए जब भी हम कोई डेटा अपलोड कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, तो हम ऑथेंटिक वेबसाइट से ही डेटा डाउनलोड करें। तीसरा आता है डेटा एट रेस्ट। अब डेटा मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरी छुट्टी हो गई ऑफिस की, डेटा मेरा सर्वर पे पड़ा हुआ है। अब वो डेटा सर्वर पे पड़ा है भाई, उसको हम बोलेंगे, कैटेगराइज करेंगे डेटा एट रेस्ट। वो डेटा यूज़ नहीं हो रहा बट एट रेस्ट है। क्या वो डेटा इंक्रिप्टेड फॉर्म में रखा हुआ है या ऐसी प्लेन टेक्स्ट रखा है, कोई भी आके उसको एक्सेस कर लेगा? तो इसके लिए स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं साइबर सिक्योरिटी में। डेटा एट रेस्ट के लिए मैं क्या स्ट्रैटेजीज बना सकता हूँ, कैसे उसको इनक्रिप्ट कर सकता हूँ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है। ये सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं कि हम इसको हैंडल कैसे करेंगे। अब मैंने एनक्रिप्ट तो कर दिया, लेकिन उसको अनएनक्रिप्ट कौन कर सकता है? किसके पास राइट है उसको अनएनक्रिप्ट करने का? क्या मैंने उसका डेटा ओनर डिफाइन किया है, कौन है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं साइबर सिक्योरिटी में, जिसमें हम लोग अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि भैया मेरी ऑर्गेनाइजेशन की नीड ये है कि मेरे पास पेटेंट डेटा आ रहा है और मुझे इसकी स्ट्रैटेजी बनानी है। अब साइबर सिक्योरिटी तो बहुत बड़ा फील्ड है, तो मेरे लिए क्या बेस्ट सूटेबल है, उसको मैं डेटा और आइडेंटिटी के फॉर्म में सोच के अपनी स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ। जैसे सर का क्वेश्चन था कि हमारा PI डेटा है या इंटेलेक्चुअल डेटा है, अब उस डेटा का क्लासिफिकेशन कैसे करें? तो देयर इज़ अ एक्सरसाइज टू मेक योर डेटा क्लासिफाइड। जब क्लासिफाइड कर रहे हैं तो हम ये बता रहे हैं अपने डेटा को, दिस इज़ हाईली कॉन्फिडेंशियल डेटा, should not go outside your system, your network or your web servers or your file servers. And who is going to be see those data? That is data ownership defining. So आप role based access define कर रहे हैं, we call as a RBAC, role based access controls, where we are saying that कि इस डेटा को एक्सेस कौन करेगा और किस हद तक करेगा, राइट? मान लीजिए आपने एक बुक लिखी है और उस बुक के अंदर ये डिफाइन किया है कि एडिटर ही सिर्फ उसको देख के एडिट कर सकता है, प्रिंटर सिर्फ व्यू कर सकता है, उसमें एडिट नहीं कर सकता। जो प्रिंटर डिपार्टमेंट से है, जो इन्वॉइस डिपार्टमेंट से है, वो सिर्फ इन्वॉइस कर सकता है, कॉपी शेयर कर सकता है, बट कहाँ पे शेयर कर सकता है उसकी बाउंड्री सेट कर सकते हैं। सो दैट बाउंड्री वी आर सेटिंग और एज वेल एज रोल वी आर डिफाइनिंग कि आपका डेटा कौन यूज़ कर रहा है। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, आप अगर इंडिया में क्या होता है, किसी की हेल्थ इशू है, अब उसका मेडिकल रिपोर्ट आता है, हम तो पूरे गांव में बता देते हैं कि मेरे को ये हेल्थ इशू है,
सबको पता होता है कि मेरा हेल्थ इशू क्या है, मेरा हेमोग्लोबिन क्या है, मुझे कौन सी डिसीज़ है. बट HIPAA कंप्लाइंस सेज कि आपका कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये आपकी हेल्थ की इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है. वो क्यों है? आप में से कोई बताएगा क्यों कॉन्फिडेंशियल है? हाँ जी ऑडियंस, आपकी हेल्थ की इंफॉर्मेशन, आपका होमोग्लोबिन कम है या आपको डायबिटीज़ है, अगर बगल वाले को पता चलता है तो उससे क्या हार्म होगा, क्या रिस्क होगा? क्या रिस्क है? तो आपने कभी सोचा है? डेटा की टैगिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम पॉइंट बताने की कोशिश कर रहे हैं. वहाँ पे हम कॉन्फिडेंशियल क्यों कहेंगे, इसको पब्लिक क्यों नहीं कहेंगे? मेरा डेटा है, मेरे को शुगर है या कुछ भी, मेरे को ABCD है. प्लीज भाई, तो- चॉकलेट्स खत्म हो गई क्या? हाँ भाई लेके जाओ. सो वी नीड आंसर. या श्योर. हाँ हाँ प्लीज. गुलाब जामुन कम पड़ गई थी क्या? ओके, मतलब गुलाब जामुन कम पड़ गई थी क्या? अगर किसी का हेल्थ इशू है और उसका डेटा अगर लीक हो जाता है, रिस्क ये है कि अगर किसी को डायबिटीज़ है, सपोज उसको हाई शुगर है, तो उसको चॉकलेट खिला के मार सकते हो आप जान से. किसी को BP है, हाई BP है, क्या कहते हैं, आप उसको जल्दी से क्या कहते हैं, और उसको BP हाई टैबलेट दे दो, टेल्मा 40 टेल्मा 90 दे दो, चलो मर गया, निपट गया. और वो अकेला है, उसने शादी नहीं करी, उसके 50 किले हैं, आपके हो गए और किसी को पता ही नहीं. शुगर तो नहीं है. वेरी गुड आंसर सर. सो वो मैम एक पीछे. दैट्स गुड. तो पॉइंट हियर इज कि डेटा की क्लासिफिकेशन, जो हम सोचते हैं कि ये नॉर्मल डेटा है, वो नॉर्मल डेटा नहीं होता, वो रिस्क होता है उसके अंदर. जो अगर वो डेटा लीक हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनीज आपको अपना वो बेचेंगे नहीं. वेरी गुड पॉइंट. एक पॉइंट वो और है, आपको क्लासिफाई कर देंगे कि ऑलरेडी बीमार है, इसको पॉलिसी नहीं बेचनी, इसको कोई सर्विस नहीं बेचनी अपनी. वेरी गुड. और इसके ऊपर का मैं एक और पॉइंट बताता हूँ. वो आपके टर्म्स एंड कंडीशन में पहले से ही जानती होंगी कि आपके पास है, बेचेंगी जरूर, लेकिन वो टर्म्स एंड कंडीशन आपके लिए कस्टमाइज कर देंगी, प्रीमियम बढ़ा देंगी. सर ने सही कहा. दैट्स राइट. पैसा ज़्यादा दो. हम आंसर सुनना चाहेंगे बिजनेस एंगल से थोड़ा सा, बिकॉज वी ऑल आर सिटिंग हियर जस्ट टू इन्वेस्ट आवर टाइम इनटू द मनी. I'll convert it into business a little later. Let me just explain what was there in my mind. Yes, sir. So, the person whose data is being leaked can be an object of cyberbullying, which is going to be impacting his reputation throughout everywhere, which is going to impact its business. Absolutely right. सीधा सीधा ये एग्जांपल है कि एक कंपनी का CEO अगर वो बीमार है और उसको क्रिटिकल इंजरीज हैं, क्रिटिकल डिसीज हैं, आपका कॉम्पिटिटर आपको देख रहा है, आपको एनालाइज कर रहे हैं, इसको कहते हैं शैडो एनालाइजिंग, राइट. आपको एनालाइज कर रहे हैं कि आप की जो बीमारी है कितने दिनों तक आप सर्वाइव कर सकते हो. नाउ ही इज़ गोइंग टू लॉन्च द प्रोडक्ट, ही इज़ गोइंग टू लॉन्च दी और एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल cases, any kind of competitions in front of you to destroy your identity. कॉर्पोरेट की भाषा में मैम, अगर मैं आपको सच बताऊं, कॉर्पोरेट की भाषा में इसको बोलते हैं कि ब्रांड इमेज इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू साइबर सिक्योरिटी. व्हाई? एक बैंक को बस एक केस चाहिए, एक केस अगर मीडिया में आ गया बैंक का, उसके लाखों करोड़ों कस्टमर्स एक ही दिन में चले जाएंगे, सारा इन्वेस्टमेंट धरा रह जाएगा. अगर उसने लगा लिया साइबर सिक्योरिटी की भैया मेरा तो ऐप है, मेरा ऐप बहुत सिक्योर है, पेन टेस्ट कराता हूँ, वल्नरेबिलिटी नहीं है मेरे बैंक में, बस एक अटैक की ज़रूरत है, चाहे वो 5 साल बाद आ जाए, चाहे एक आ जाए, सारा इन्वेस्टमेंट, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसने बिल्ड किया है, इट विल वाइप आउट इन जस्ट वन डे. जस्ट वन अटैक, यू आर जस्ट वन अटैक अवे. सो ब्रांड इमेज और साइबर सिक्योरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर वो गई तो आपका ब्रांड भी गया. तो ये एक बहुत सीरियस टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं. और DLP एक अलग से कॉन्सेप्ट आता है इसके लिए कि भैया डेटा हमने समझ लिया, क्लासिफिकेशन हमने लगा दी, PII लगा दिया, हाईली कॉन्फिडेंशियल, सेंसिटिव, हमको सब पता लग गया मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डेटा है वो ये है. अब सवाल आता है कि ये डेटा ऑर्गेनाइजेशन से बाहर ना जाए, इसके लिए मैं क्या करूँ? तो साइबर सिक्योरिटी में एक अलग से फील्ड है जिसका नाम है DLP, विच इज़ कॉल्ड डेटा लॉस प्रिवेंशन. अब उसके लिए भी माइक्रोसॉफ्ट अलग से इन्वेस्टमेंट कर रहा है सिर्फ इसी चीज़ के लिए. माइक्रोसॉफ्ट के पास 50,000 बंदे हैं जो सिर्फ DLP में ही काम करते हैं. और वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ बनाती है, फ़ोन्स बनाती है, 1,00,000-2 लाख उनके एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ 30,000 एम्प्लॉयज़ सिर्फ DLP पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि DLP कितना बड़ा टॉपिक है. सो
वट एवर वी आर डिस्कसिंग इज़ वेरी सीरियस हेयर. तो हम लोगों को जो भी अपनी स्ट्रेटेजीज बनानी है अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, हैव टू थिंक कि डेटा और आइडेंटिटी. आइडेंटिटी मैंने आपको अभी नहीं बताई, सर ने थोड़ा सा हिंट दिया कि RBAC क्या होता है, रोल बैक एक्सेस कंट्रोल. सो मेरा एक डेटा पड़ा है, दो कॉन्सेप्ट आते हैं यहाँ पे, एक होता है ऑथेंटिकेशन, एक होता है ऑथराइजेशन. ऑथेंटिकेशन, मैंने वो डेटा लेना है, कैसे जाके ले लूँगा, ऐसे थोड़ी ना है. मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा, यूज़र नेम डालना पड़ेगा, फिर वो डेटा लेना पड़ेगा. नाउ देन इज ऑथराइजेशन. मेरे को कौन से डेटा का एक्सेस मिलेगा, ये होता है ऑथराइजेशन. उसके अंदर 50 तरीके का डेटा पड़ा है, लेकिन मेरे को सिर्फ इसी डेटा का एक्सेस है, इसका नहीं है. इसका सिर्फ मेरे वाइस प्रेसिडेंट को एक्सेस है या मेरे CEO को एक्सेस है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल हमने लगाए हैं. तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, नेक्स्ट स्लाइड, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, तब जाके एक साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है. अब हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले पासवर्ड्स की, तो आपको पता है अभी ऑर्गेनाइजेशन शिफ्ट कहाँ पे जा रहा है? ऑर्गेनाइजेशन शिफ्ट ऑथेंटिकेशन में जा रहा है, पासवर्ड लेस की तरफ. पासवर्ड लेस की तरफ जा रही है दुनिया. अब पासवर्ड याद ही नहीं रखना, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कहते हैं उसको, FIDO2. तो बायोमेट्रिक आ गई है, रेटिना आ गया है, पासवर्ड लेस होना चाहिए सब कुछ. मैं इतने पासवर्ड याद ही नहीं रख सकता यार. याहू का याद रखना है, गूगल का याद रखना है, बैंक का याद रखना है, मैं तो पागल हो जाऊंगा. तो व्हाट वी डू इज पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन कैसे करी जाए. तो उसके लिए बहुत पब्लिशर्स काम कर रहे हैं. OIDC, SAMLs, नई नई प्रोटोकॉल्स आ रही हैं जो पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन करती हैं. जैसे आपने देखा होगा IRCTC, तो चलो हमारे इंडिया की है, जैसे ईज माई ट्रिप हो गई और बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई. उसमें सिर्फ आप अपने ईमेल डालते हो, उसमें ऑप्शन आता है लॉग इन वाया गूगल. जैसे ChatGPT में लॉग इन वाया गूगल, आपने लॉग इन वाया गूगल किया एंड यू विल बी एंटर इनटू द डैशबोर्ड ऑफ दैट एप्लीकेशन. आपने कहा यार इसने लॉग इन वाया गूगल कर दी, मेरे को एप्लीकेशन का एक्सेस दे दिया, इसने मेरे से पासवर्ड ही नहीं लिया. बट आपने उसको ऑथोराइज किया गूगल अकाउंट में जाके कि यस इट्स मी. सो वो गूगल से आपकी इंफॉर्मेशन ले रहा है. तो आपने यहाँ पे एक पॉइंट नोट किया होगा कि गूगल के पास आपका ईमेल डेटा है और गूगल ने ChatGPT को ऑथोराइज कर दिया है, ईज माई ट्रिप को ऑथोराइज कर दिया है कि आपको उसका एप्लीकेशन का एक्सेस दे दे बिना पासवर्ड के. सो दैट इज OIDC. हमारी जो शिफ्ट हो रहा है वो इस तरफ हो रहा है. तो हम भी जो काम करते हैं अभी कॉर्पोरेट में, पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन के ऊपर ही करते हैं कि पासवर्ड लेस कैसे बनाया जाए ऑर्गेनाइजेशन को, और आगे आने इंडस्ट्री को कैसे पासवर्ड लेस की तरफ ले जाया जाए. क्योंकि पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, नहीं याद रखा जाता. और अगर याद रख भी लिया, जैसे सर ने बताया था कि 16 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, अपर केस, हाई केस, लो केस, सब होना चाहिए भैया. लेकिन अगर रख भी दिया तो उसको मैं नोटपैड पे सेव कर लूँगा, अपने मशीन पे सेव कर लूँगा, स्टिकी नोट्स पे सेव कर लूँगा, फिर भी वो रिस्क में तो रहेगा ही रहेगा. कोई फोटो खींच के ले जाए, कुछ ले जाए. तो इसके लिए नई नई पासवर्ड लेस की तरफ इंडस्ट्री हमारी जा रही है. तो ये पॉइंट था. तो यूज़र और डिवाइसेस हमें स्टोर कैसे करने हैं, हम लोगों को एंटीवायरस डालना चाहिए अपने लैपटॉप में, डिवाइसेस में. हमेशा अनऑथोराइज लिंक, जो लिंक रेड कलर के कोडेड होके आते हैं वो कभी नहीं करने चाहिए, लिंक उन पर क्लिक नहीं करना चाहिए. तो आइडेंटिटी एक्सेस ये होता है कि एक मशीन, जैसे आपने एक बॉट बनाया अपनी कंपनी के लिए, आपकी कंपनी में कोई आया कि भैया मुझे बुक पब्लिश करानी है, और एक मैं लेट्स से मैं एक स्कूल हूँ और मुझे अपनी स्कूल की एक अपनी एनुअल फंक्शन की एक बुक पब्लिश करानी है फॉर एग्जांपल. वो आपकी वेबसाइट पे गया, आपने एक नीचे बॉट लगाया हुआ है. अब वो बॉट जो है ना, वो एक आइडेंटिटी है, इट्स अ मशीन. सो इट्स टेकिंग अ डेटा फ्रॉम अ कस्टमर और वो मशीन आगे डेटा दे रहा है अपने सर्वर को. सो यहाँ पे दो कम्युनिकेशन हुए, एक हुआ ह्यूमन टू बॉट, एक हुआ बॉट टू डेटाबेस. तो एक हुआ यूज़र टू बॉट मीन्स यूज़र कम्युनिकेशन, एक हुआ मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन. तो यहाँ पे दो तरीके की आइडेंटिटीज़ आई. एक बॉट ने डेटाबेस से कनेक्ट किया, दैट इज़ मशीन टू मशीन. एक ह्यूमन ने बॉट को डेटा दिया, दैट इज़ यूज़र टू बॉट. सो आइडेंटिटीज़ दो तरीके की होती हैं, एक होती है यूज़र, एक होती है मशीन. टेक्निकल भाषा में इसको बोलते हैं एक यूज़र आइडेंटिटी या नॉन यूज़र आइडेंटिटी. तो इनके ऊपर भी कैसे साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस होती हैं वो भी एक अलग टॉपिक है. एक लास्ट में पॉइंट, जैसे कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि सर ने अभी पॉइंट किया था मॉर्निंग में कि आपका डेटा कोई लेके चला गया. सिंपल सी बात है, राइट. आप उससे पहले एक स्टेप पीछे आते हैं. आपका डेटा किसने एक्सेस किया, आपको कैसे पता चलेगा? हाँ जी, आपके सिस्टम में एक ड्राइव में डेटा पड़ा हुआ है, किसी ने उसे एक्सेस किया, जस्ट व्यू, इट्स नॉट एडिटेड एनीथिंग, राइट.
आपको कैसे पता चलेगा कि वो सिस्टम का डेटा एक्सेस हुआ है? Guys, raise your hand. I will pass प्लीज the mic. रेज योर हैंड। इज द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट इन द ऑर्गेनाइजेशन कि आपका डेटा कोई देख रहा है, आपको पता ही नहीं है। बेस्ट आंसर। चॉकलेट दे दो उनको। लॉग रिपोर्ट कैसे आएगी? कैसे आएगी? राइट राइट। देखो अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं। लॉगिन रिपोर्ट होती है यूजर एक्टिविटी, एडमिन और वो। अब जो बड़े बड़े एंटरप्राइज है जहाँ पे 40,000 लोगों की एम्प्लॉय की कंपनी है, एनीथिंग आपका मैं समझ गया। दैट्स राइट दैट्स राइट। जो हमारा लास्ट पॉइंट है ना SIEM, which denotes कि why sir have touched this topic because of that particular point, SIM, जहाँ पे 40,000 लोगों की एम्प्लॉय की कंपनी है और उनके करोड़ों कस्टमर्स हैं। तो मेरे पास अगर रिपोर्ट मैंने जो आप बोल रहे हो सर्वर की रिपोर्ट निकाली, तो मैं तो उसको पढ़ते पढ़ते ही, चाहे मैं पावर BI में उसको बना दूँ, मुझे तो बंदे एक टीम रखनी पड़ जाएगी 5 करोड़ लोगों के लिए कि भैया मैं उनकी रिपोर्ट पढ़ूँ बैठ के। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर SIM का कॉन्सेप्ट होता है, सिक्योरिटी इवेंट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी इंसिडेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट। उसके लिए प्रॉपर टूल्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के, ट्रेंड माइक्रो के, अलग अलग। तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे ही किसी ने आपका सर्वर लॉगिन किया और उस पैटर्न से नहीं किया जो पैटर्न आपने अलाउ किया, फॉर एग्जांपल आपने किया है मेरे सर्वर पे लॉगिन कोई करेगा तो पासवर्ड लेस से करेगा, बायोमेट्रिक से, और वो कुछ नहीं कहेगा, फिर सिम टूल आपको कोई रिपोर्ट नहीं देगा। जैसे ही आपने वो सर्वर एक्सेस किया विद यूजर नेम एंड पासवर्ड, वो एक अलर्ट पॉपअप कर देगा कि इस बंदे ने रेड कलर से मार्क कर देगा ताकि आपकी नज़रें वहीं चली जाएं। हाँ, उसका कॉन्सेप्ट मैं आ रहा हूँ अभी नेक्स्ट पे। 2FA लगता कहाँ पे है? 2FA लगता है ह्यूमन ही कर सकता है 2FA, ह्यूमन आइडेंटिटी। मशीन टू मशीन कैन नॉट हैव 2FA, राइट? तो यहाँ पे इसलिए मैंने वो चीज़ हाईलाइट की थी कि यूज़र एक आइडेंटिटी है, मशीन टू मशीन एक अनदर आइडेंटिटी जो नॉन यूजर। तो MFA का जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी आजकल दिक्कतें आ गई हैं। तो हमारे फ्रेमवर्क होते हैं NIST, जो हम लोग इंडिया में बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं कि अपनी साइबर सिक्योरिटी हमें बनानी है तो हम क्या फ्रेमवर्क बनाएं। तो हमारे नरेंद्र सर की एक कंपनी है एनर्जेटिक सॉल्यूशंस, वो बेसिकली आप लोगों के लिए साइबर स्ट्रेटेजी प्लान बनाती है पूरा, जीरो ट्रस्ट मॉडल यूज़ करके। नहीं, द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कि जीरो ट्रस्ट मॉडल होता क्या है कि हमें ट्रस्ट ही नहीं करना किसी को, ना डेटा को, ना आइडेंटिटी को, ना अपने कस्टमर्स को। क्या पता कस्टमर गलत इंटेंशन के साथ मेरा बॉट एक्सेस कर रहा हो, मेरा URL तो ओपन है पब्लिक के लिए, क्या उस URL पे DDoS ना मार रहा हो। तो हम लोग क्या ऐसा करें कि हम बेफिक्र रह के आराम से सोएं कि मुझे पता है मेरा एनवायरनमेंट सिक्योर है। 100% तो नहीं कह सकता बट 99% सिक्योर है। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज बनती हैं इसमें, कैसे बनाया जाए, जीरो ट्रस्ट कैसे किया जाए, आइडेंटिटी नेटवर्क किस लेयर पे बनाया जाए, पहले नेटवर्क को सिक्योर किया जाए, फिर डेटा को, फिर आइडेंटिटी को कैसे, और सिम से कैसे। बट ये बहुत इन्वेस्टमेंट है। तो एक चीज़ 100 बातों की एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे मैंने AI के इंफ्रास्ट्रक्चर, आजकल हर कंपनी अपना अपना AI बना रही है। वो कह रही है यार ओपन AI तो मुझे सेम सही आंसर दे रहा है। अब हो क्या रहा है इंडस्ट्री में शिफ्ट कि अगर मुझे इमेज के लिए करिए तो मुझे अलग से AI खरीदना पड़ रहा है। क्लॉड कह रहा है कि यार मैं तेरे को बहुत अच्छे आंसर दे सकता हूँ, ChatGPT से तो मेरा आंसर मिला ले, तेरे को मेरा आंसर बहुत अच्छा लगेगा। और ये बात सच भी है। क्लॉड तो अब सोनेट के बाद ओपस पे भी आ गया है, तो ओपस तो और भी ज़्यादा तगड़ा LLM है। तो क्लॉड तो बेसिकली एक एप्लीकेशन है, पीछे तो LLM ही काम कर रहा है। तो वो LLM पे ही सारी इंजीनियरिंग हो रखी है जितनी भी हो रखी है। तो वो LLM क्या होता है, वो बेसिकली उस एप्लीकेशन से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, वो अपने अपने कस्टमर्स को कैसे बांट रहे हैं, सारे कस्टमर का डेटा लेके उसको ट्रेन करके दूसरे कस्टमर को चिपकाते हैं। बट क्वेश्चन ये आता है कि LLM हमारे लिए बेस्ट कौन सा है? क्या पता कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए ChatGPT अच्छा हो, क्लॉड अच्छा ना हो। लॉ फर्म्स हैं जैसे, उनको वो कहते हैं हमारे को क्लॉड नहीं पसंद है, हमारे को तो ChatGPT अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना इन हाउस LLM रैपर इंस्टॉल कर रखा है, API ले रखी है, और जितनी भी लॉ फर्म्स हैं वो अलग तरीके से काम करती हैं। उनको कहता है मुझे ChatGPT अच्छा लगता है, क्लॉड अच्छा नहीं लगता। क्लॉड 99 दुनिया के लिए अच्छा है लेकिन लॉ फर्म्स के लिए नहीं है। सो इट डिपेंड्स कि आपने कैसा एनालिसिस किया है अपना, और कैसे आप लोगों ने उसका आउटपुट एनालाइज किया है और कैसे देखा है। तो जीरो ट्रस्ट का मॉडल का मतलब ये है कि वी आर नॉट ट्रस्टिंग एनीवन। सिंपल सी बात है। मेरा ट्रैफिक आया मेरी वेबसाइट तक, किसी यूज़र ने किस इंटेंशन के साथ मेरी वेबसाइट खोली, आई डोंट नो। सो स्टार्टिंग फ्रॉम देयर आई एम गोना सिक्योर एवरीथिंग टिल माई सर्वर। जब तक वो मेरे सर्वर पे लॉगिन करके नहीं पहुंच जाता, मैं वहाँ तक किसी को ट्रस्ट नहीं करने वाला। अगर वो ट्रैफिक, तो क्योंकि मेरी वेबसाइट तो ओपन है पब्लिक के लिए, उसको चाहे अमेरिका से खोलो चाहे इंडिया से खोलो, वो तो वेबसाइट खुलेगी। लेकिन उसके बाद का अंदर का जो खेल है सारा, वो मैंने कैसे सिक्योर किया हुआ है, दैट्स हाउ वी कैन हेल्प।
So piracy reality, modern DRM defenses. So वही है सारी चीज़ें जो हम लोगों ने अभी डिस्कस की कि हम लोग कैसे पासवर्ड लेस की तरफ जा रहे हैं, कैसे कैसे लीक्स होते हैं, टैगिंग कैसे कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की, उसके बाद फिर स्क्रैपिंग, डीकमीशनिंग, ऑथोराइज ट्रस्टिंग. तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसके बाद हम एक एक करके डिस्कस कर सकते हैं. बट आई एम जस्ट कॉन्शियस ऑफ टाइम कि हमारे पास टाइम नहीं है ये सब डिस्कस करने का. बट मोटा मोटा ये बात है कि साइबर सिक्योरिटी हर लेयर पे लगती है, रादर देन कि भाई मेरे को तो ये टूल खरीदना है, फायरवॉल लगानी है, ख़त्म मेरा काम. दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है. फायरवॉल को तो बाईपास आजकल कॉलेज के बच्चे ही कर देते हैं. So we were talking about MFA. I'll come to this one. Can anyone tell me the full form of MFA? Sorry, multi-factor? Okay. So if your eyes are still open after the lunch, you have already passed the first factor. Congratulations. Okay. So here, in publishing industry, the most important thing is piracy. We face it every day. So like I was talking about this in the starting of the session, sir, for you. So like sharing, your manuscripts over the WhatsApp. What does it do to your business? Anyone? From the backside? Damage. What kind of damage? So is this financial damage, or can you think of anything else also? Anything else? Anyone? It will come back to the finance also. Financial? Again? Anything? Isn't it financial loss? Benefit of the? Again financial. Guys, do we need coffee? Coffee break? Sorry? So in different terms, we can say that we the ultimate loss is a revenue loss, but there is a reputational damage also. In reputational damage, you lose revenue as well as your peace of mind also, because to build that damage, whatever you have whatever is got damaged, you have to rebuild it from the scratch. It's not like your organization is hit by some ransomware attack, and you have to, there is some of the compliance session also after this. So she will talk about more about the compliance in that session. But I'll touch a little bit on that. If now there is a DPDP Act in India. So if you, there are certain industries which are coming under DPDP. If your data is compromised, you are hit by the ransomware, then you have to not only penalized by the financials, you will get the damage of the reputation also, because your the incident will be publicized in the industry, and everyone will come to know that this organization has already hit by ransomware. So your customers will not come back to you. You will have to build that reputation from I'll give you the story, right? Yep. पिछले साल आप लोगों ने ransomware attack का एक एग्जांपल देखा था जिसमें सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी. Yes. किसी को याद है? Right? अब यहाँ पे कैसे कोरिलेट करेंगे? Indigo was hit very badly. Right. Right. Absolutely right. So अब हिट हुआ कहाँ था? सब कह रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट कॉम्प्रोमाइज हो गया. माइक्रोसॉफ्ट कॉम्प्रोमाइज हो गया. तो रेपुटेशन लॉसेस फॉर किसके लिए? माइक्रोसॉफ्ट के लिए. लेकिन एक्चुअल में माइक्रोसॉफ्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ था. राइट? आपने उसके अगर डिटेल में रूटर्स की या किसी और भी आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे, तो देयर इज the EDR solution installed on the VMs. I'll tell you what is the VMs, what is the EDR. EDR is just understand for you is antivirus, simple. But this is the extended version of antivirus. This enabled with AI ML features to understand the behavior of your machine, your system, to understand what is happening, your control is under your control or not on your servers, your applications, your files or your data in an API. But जब Microsoft का जो सिस्टम डाउन हुआ, उसमें हमारी सारी VMs डाउन हुई. VM in the sense virtual machines.
पहले आपने देखा था कि क्लाउड शिफ्ट हुआ, अब एआई शिफ्ट हो रहा है, राइट? जब क्लाउड शिफ्ट हुआ तो सभी लोग मूव करके फिजिकल डेटा सेंटर से क्लाउड डेटा सेंटर के ऊपर। अब जब वीएम लॉस हो जाएगी तो आपका प्लेटफॉर्म चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो या जीसीपी गूगल क्लाउड हो या AWS का अमेजोन का सर्वर हो, आपकी कोई भी वीएम नहीं चलेगी। तो उस समय द एंटीवायरस कॉल्ड इज डैमेज just because of wrong code is deployed. And why it is deployed? Because of role-based access was not implemented properly or not checked. Why role-based access is important? कि किसको क्या access होना चाहिए, जैसे सर हमने अभी बात की थी कि डेटा पे किसका access होना चाहिए, तो कोड डिप्लॉयमेंट पे किसका access होना चाहिए कि कौन डिप्लॉय करेगा कोड प्रोडक्शन में। अगर कोई गलत व्यक्ति गलत कोड डिप्लॉय कर देता है तो उसके अलग ही हार्म्स हैं, राइट? तो वो उस समय यही हुआ कि गलत कोड डिप्लॉय हुआ जिससे कि सारी वीएम लॉस हो गई और सारी एप्लीकेशन डाउन हो गई, जिससे कि हम फ्लाइट, आपने देखा होगा कि सारी ब्लैकआउट हो गया उस समय, राइट? इट वाज माइक्रोसॉफ्ट बाय द वे। Yes. That's right. That's right. Right. Yeah. There is one more recent example. A company's production database was deleted by a AI tool. Sorry? Yes. So you will keep learning about it because everyone is learning on the go. No one has experienced AI just 2-3 years back. We are into that era now. So while we were talking about the financials, here are some financials numbers which you can relate to, and what does a cyber security cost against those breaches. So if I talk about a ransomware breach can cost somewhere starting from 15 lakh rupees to 50 lakh rupees. And so let me ask a question again. How many of you know, I don't know if someone is here from the IT background or maybe the IT department, how many of you know that your organization has a IT budget or a cyber security budget to be specifically? Can you raise your hands? Okay. Okay. Any idea in numbers? No. Okay. So many of the industries which are not directly impacted by the cyber security, they think that cyber security is kind of overhead. We don't want to invest because this does not generate a business for us. It just add to the cost. हम ये भी तो सोचते हैं कि क्लाउड प्रोवाइडर को डेटा दे दिया, हमने सर्वर दे दिया, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा सिक्योरिटी की. But this is not the fact. It's equal responsibilities when you are storing a data, you are running your machine. It's equally responsibilities to customer as well as the service provider to make the right control to this system. आपने वेब सर्वर लॉन्च किया VM पे, राइट? क्या आपने कभी चेक किया कि मेरे VM को किसने एक्सेस किया, कितने रैंसमवेयर अटैक हुए, कितनी फाइल मैनिपुलेट हुई, कितने फाइल इनक्रिप्ट हो रही है 1 मिनट के अंदर, लाइक रैंसमवेयर अटैक? कभी हम चेक नहीं करते क्लाउड प्रोवाइडर के सर्वर पे लॉगिन करके, हम बस ये चेक करते हैं हमारी एप्लीकेशन चल रही है कि नहीं चल रही. बट इट्स इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारी है, बनती है कि हम उसको चेक करें कि क्या राइट सेट ऑफ कंट्रोल इम्प्लीमेंटेड है या नहीं है. Yeah, the cyber security is kind of a health insurance, so you keep paying for it, maybe sometime throughout the lifetime of the organization, and you never get hit. So and once you get hit, you only know the cost of it, because if you see here that these numbers are very in very conservative manners, up to 2+ crores. If you see these impacts, one hit and you don't know how much you have to pay for the ransomware. And the cost of the prevention is just roughly a fraction of it. So there are multiple ways you can start building your cyber security organization. There are different tools based on your requirement, based on the data you are using, based on the systems you are building, or based on the the need of the organization. You can start implementing these kind of cyber security controls, and you can save yourself from the. Sorry, sir. One of our portal was, there was our logo was there. Suddenly we saw that our logo was changed. Yes, it mostly happens. With what could be that? Most of the Indian government websites. So there are multiple Pakistani groups which keep hacking the Indian government websites, and they keep changing the logo. Sometimes they put their flag also there. So they can hack the websites. आप एक एग्जांपल, रियल एग्जांपल लेते हैं. आप सभी की वेबसाइट होगी, राइट?
हाँ मतलब अब सभी की वेबसाइट होगी। क्या आपने कभी अपनी वेबसाइट का VAPT कराया है? VAPT इज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, सिंपल। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये एक तरीके का प्रोसेस होता है जो रेगुलर रिव्यूज़ में होता है, लाइक 6 महीने में, साल में, डिपेंडिंग ऑन द क्रिटिकलिटी ऑफ योर वेबसाइट। तो उसमें क्या होता है, उसमें लूप होल्स पता लगते हैं कि आपकी एप्लीकेशन SQL इंजेक्शन से या किसी MITM से या किसी अलग तरीके के अटैक से आसानी से हैक हो जाएगी। वो एक रिपोर्ट आपके सामने ला के रख देते हैं। फिर आप क्या करते हैं, अच्छा मेरी एप्लीकेशन SQL इंजेक्शन से हैक हो जाएगी, ठीक है भैया, इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए? उसको ठीक करने के लिए रेमिडिएशन प्लान होते हैं। सोर्स कोड ठीक किया जाए, उसके आगे एक WAF लगाया जाए। ये WAF क्या होता है? वेब एप्लीकेशन फायरवॉल होती है, एक हार्डवेयर होता है, उसको एप्लीकेशन के आगे बढ़ाया जाता है कि भाई तू ये सारे अटैक्स सेव कर दे। तो इस तरीके से साइबर सिक्योरिटी के प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। So this is one of the example of reputational damage. So if your customer is trying to access your website and they say a black box or maybe a face there, so they will not, they will see that what kind of organization is this which cannot even maintain their websites in good manners. Okay, I got the question. The digital arrest is nowadays you must be listening about it a lot. So what happens in a digital arrest? Someone calls you impersonating a police officer, a CBI officer, or from a tax department, and they will give you a call, a video call. So on the video call, what will happen? They will ask you some question. They will say that don't leave this house because you are being arrested by the CBI department. If you are a criminal, for example, if I am the person who is doing business and I have done some tax chori or something, so I'll think यार कुछ तो हुआ है कहीं ना कहीं से, तो किसी ना किसी से पता लगा है, and I'll get afraid. So they take advantage of the insecurity of the people, and this doesn't happen randomly. ऐसा नहीं है कोई भी आपको कॉल कर देगा. They do a lot of research about you. For example, like you, if I am the person, I must be having a presence of on social media. मेरा Facebook अकाउंट हो सकता है, मैं YouTube पे कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ या कुछ भी. तो they do the recce of the social, they do the social engineering. They find the information about you. What am I? What do I do? What are my weaknesses? Where do I go? And using that information, they give a call to you, impersonating a CBI, police department or someone. They will give you a call कि भाई तुमने कुछ चोरी किया है या तुमने ये किया है. We just need there will be multiple people. They'll ask you to stay in your house in front of the camera using the video camera of your device, and you have to follow their, because we are afraid. This is our weakness. सर का एक एग्जांपल बताता हूँ. आप जब एक सिटी से दूसरी सिटी में फ्लाइट चेंज करते हैं तो आप टैग कर देते हैं. Yes. कि मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गया. Going on vacation. मैं वैकेशन पे चला गया. मैं पेरिस चला गया, मैं लंदन चला गया. Yeah, so this is the information we are giving to them. So the people who are watching you, we call as a user behavior analysis. User behavior analysis, there is a multiple concept called user का behavior समझना. कि आज हमारे ट्रेंड्स में क्या है कि हम नई ड्रेसेस पहनते हैं, फोटो खींच के डालते हैं. नए रेस्टोरेंट में जाते हैं, फोटो लगा देते हैं. हम कहीं भी जाते हैं, नई गाड़ी ली हमने फोटो लगा दी, स्टेटस चेंज कर दिया. तो पर्सन हु आर इंट्रूडर्स, हैकर्स, दे एनालाइज दिस काइंड ऑफ पीपल कि किसके पास कितना पैसा है, कौन हमें पे कर सकता है. यस, राइट. उनको वीकेंड्स के स्केड्यूल भी पता होते हैं कि वीकेंड्स पे आज आप पक्का मार्केट जाएंगे और इस मॉल में जाएंगे, बिकॉज दे नो दे आर ट्रैकिंग यू फ्रॉम लास्ट 1 year. योर गूगल मैप इज गेटिंग ट्रैक. या your question, sir. So how to सर हम रैंसमवेयर की बात कर रहे हैं. रिसेंटली मेरी कंपनी पे भी एक अटैक हुआ था रैंसमवेयर का. तो हाउ इट वाज डन, जो एंटीवायरस था हमारे सिस्टम में, एक कंप्यूटर में, मतलब सर्वर्स में से, सर्वर के अंदर नहीं था, सर्वर के साथ जो कंप्यूटर कनेक्टेड था अकाउंट्स का एक, तो उसके अंदर एंटीवायरस इंस्टॉल था. वो एंटीवायरस एक्सपायर हो गया. एक्सपायर होने के बाद वन ऑफ माई एम्प्लॉयज सर्च्ड फ्री एंटीवायरस ऑन गूगल. तो उसने वो एप्लीकेशन डाउनलोड करी. डाउनलोड करने के बाद तुरंत क्या कहते हैं रैंसमवेयर आया और सारा डेटा इनक्रप्ट हो गया मेरा. तो व्हाट आई डिड इन द, मतलब इमीडिएटली मैंने क्या किया, मैंने पूरा सिस्टम फॉर्मेट कर दिया, क्योंकि मेरे पास उसका ऑलरेडी बैकअप था सिस्टम का. एवरी डे आई टेक बैकअप, 3 बैकअप 4 बैकअप्स. मैं एवरी टाइम स्लॉट पे बैकअप लेता रहता हूँ कंप्यूटर सिस्टम्स अपने कंपनी के.
तो अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या फॉर्मेट करने के बाद भी वो रैंसमवेयर सिस्टम में रहेगा? सब एक क्वेश्चन है। आपका जो बैकअप है, आपने जो बैकअप लिया है वो रैंसमवेयर आने के बाद भी बैकअप लिया है? उसके बाद आपने कोई बैकअप नहीं लिया है? देखो इसमें एक चीज़ हो सकती है कि अगर वो सर्वर आपके और सर्वर से कनेक्टेड है, नेटवर्क पूरे नेटवर्क में है ना, रहेगा। इट मीन्स योर ऑर्गेनाइजेशन इज फेलिंग इन नेटवर्क सेगमेंटेशन। तो होता क्या है, जब भी कोई सर्वर अगर वो इंटरनेट से कनेक्ट है तो मैं उस सर्वर को कहाँ पे होस्ट करता हूँ, उसका नाम होता है टेक्निकली DMZ, विच इज़ डीमैटेरियलाइज जोन। उस जोन के अंदर रखता हूँ ताकि वो सर्वर के अंदर कल को कुछ भी ABCD आ जाए वाया इंटरनेट तो वो उसी VLAN में रहे, उसी वर्चुअल LAN में रहे, उसके अलावा मेरी पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हार्म ना करे। एक ये तरीका है जो ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है। दूसरा तरीका ये है, जो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा स्पेंड करती हैं साइबर सिक्योरिटी में, जो मोर कॉन्शियस हैं, वो क्या करती हैं, वो ऐसे URL से कुछ डाउनलोड ही नहीं करने देती, बिकॉज दे हैव देयर मेच्योर फायरवॉल एंड WAF पॉलिसीज एट द इंटरनेट लेवल। वो बंदे ने डाउनलोड तो कर लिया, बट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा तो आसानी से हो सकता है जहाँ पे 5-5 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ तो कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वो ऐसी वेबसाइट को एक्सेस ही रोक देते हैं उनका। उससे पहले एक और आंसर देते हैं। आप लोगों ने कब विंडो का लाइसेंस खरीदा है? कभी विंडो का लाइसेंस खरीदा आपने? कभी उबंटू का लाइसेंस खरीदा है? लिनक्स का लाइसेंस खरीदा है? मैं सारा पेड वर्जन यूज 1 और 2, राइट? आप खुद ही पायरेटेड वर्जन यूज कर रहे हो। yes. आप ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो। आपके डेटा में क्वालिटी नहीं है कि आपको साइबर अटैक करे कोई। So all the आपके डेटा में कोई क्वालिटी मिलेगी उसी दिन अटैक हो जाएगा। All the free tools which are freely available you can download from anywhere. सर एक और क्वेश्चन था मेरा, तो एक व्हाट्सएप के ऊपर आजकल क्या कहते हैं अभिनंदन करके APK आ जाता है लोगों के पास। मेरे फादर ने भी ओपन कर दिया था APK और फ़ोन पूरा हैक हो गया था उनका। उस बेसिकली इट वाज नॉट कम्प्लीटली हैक्ड। उसने क्या करा कि बेसिकली उसका जो होम UI था उसको चेंज करके अपनी UI पे कर दिया और उसको शिफ्ट करके वो बार बार में पॉपअप दिया जा रहा, सारे परेशान हो गए। और इट वाज डन बाय अ डिस्ट्रीब्यूटर जिसका फ़ोन हैक हुआ और उससे कम से कम 500 लोगों को, पब्लिशर्स को, सबके पास चला गया। वो आर नॉट नॉलेजेबल के कहते हैं। मेरे पास आया, मैंने कहा नाइस प्रैंक, मैंने उसको लिख के भेजा लिटरली, नाइस प्रैंक, आई यूज़ iPhone, आई डोंट यूज़ एंड्रॉयड। तो मैंने उसको ये लिख के भेजा। इतनी देर में मेरे फादर ने ओपन किया, मेरे फादर का कॉल आया, यार मेरे फ़ोन पे पता नहीं कुछ पॉपअप हो जा रहा है, कुछ हो जा रहा है। मैंने कहा तुरंत कोई नहीं, आप एक काम करो, डिस्कनेक्ट करो नेट से फ़ोन को। डिस्कनेक्ट करने के बाद फ़ोन स्विच ऑफ करके मेरे पास भेज दो। मैंने तुरंत उसका UI देखा, मैंने UI चेंज करा, मैंने देखा उसने होम का UI चेंज करके पॉपअप करना शुरू कर दिया। मैंने वो एप्लीकेशन को डिलीट करा और तुरंत क्लीन हो गया सारा। So this does not only happen inside your house, this happens inside your organization also. And if you see here, security awareness training, a CEO of your organization may not know what is the phishing email. So that's why we use security awareness training. It is mandatory for everyone. Everyone should do, everyone should know what kind of file can we open, what kind of phishing email can we see, how to identify phishing attempts, how to identify social engineering attacks. So these are the things which comes under social security awareness training, and this should happen in organization at least within every 6 months. That's why I've asked that ma'am who has made a presentation on CBSE, the case study. Yeah, so that's why I asked you that question. So why the kids who are just, rolling in the primary school, how they will be aware about all these things? What we as a mature person can contribute to that particular learning? So that's why technology understanding is very important, and subcategory as a cyber security, it should not be treated as a subcategory. It should be treated as a primary technology that should be learned and practiced by everyone, not only kids, but my mature persons as well. Okay. So moving to the next session by the Priya Gora is here. उनको हैंडओवर करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, आप लोग सब जानते हैं कि कार ड्राइव 50 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर ड्राइव करने पे सिटी में आपको फाइन होता है, राइट? लेकिन आप जब सिक्योरिटी कंप्लाइंस मेंटेन नहीं करते तो कितना फाइन होता है? किसी को पता है? सिक्योरिटी कंप्लाइंस अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको कितना फाइन होता है? मेजर ही नहीं करते हैं। अभी आपको पता लगेगा। So we have the right person who's going to tell you that कि compliance क्या है
उसकी ग्रेविटी क्या है और हमें क्यों मेंटेन करना चाहिए, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर द IT ऑर्गेनाइजेशन ओनली, not for the publishers only, not for the any X organizations. So over to you, ma'am. Thank you. I think, hi, good afternoon, everyone. Yeah. So I think we covered security, privacy. मैं थोड़ा सा नीचे ही आ जाती हूँ. I think let me start with, we talked about, आपने अगर अपनी personal file, health की file, Twitter पे डाली है. Let me start with that. आपने खुद डाली है. You know, you have put it there based on your interest. With the consent आपने खुद ही डाली है. क्या मैं उसको कंज्यूम कर सकती हूँ पब्लिकली? फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी हेल्थ ट्विटर पे डाली है. यू नो वॉट यू आर डूइंग, इट्स अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, यू मेड इट पब्लिक विद योर चॉइस. If as an organization I want to pull that, I am a publication, I want to do some publication or research on something, I pick that data, it's publicly available, right? Can I do that? It's publicly available. How many think it's okay to take that data and use it? Hands up. Ethically, nahi, I'm not talking about ethically. It is publicly available, right? It is publicly available. You can use it. As an organization, can you use it? For example, you have a ABC. Narendra has an organization. Can Narendra pick that data? You are going to go and say, can you just pick this data, whatever is available on Twitter? Look at all the PHI information and pick that. But you have already given in the consent when you are going to Twitter. It takes you and I accept. So that means it's available there. You have already given that consent. But can Narendra as an organization take this data? Use this data? How many people say yes? They can. But what is legally acceptable? Is it acceptable to use that data by any organization? It is publicly available. Why? Right. I think to answer the question, you cannot use that publicly available information even when you have made it public. Why? Any answers? See, Twitter, I'm just giving an example. I'm not just saying about Twitter. When they took that data from you, they took a consent from you, right? When you are using, by any organization, when it is using that data, Twitter has identified sub-processors where they agree and are in agreement with them that you can use whatever data is available on Twitter platform. But it has to go and you have to sign a contract with them. Whatever your public data is available, still you cannot use it. Legally, ethically, no. Legally also you can't take it. You have to buy it from the sub-processors that Twitter has identified. You can't take it from anybody. I can use a AI code and just pull it. But immediately they come to know that it's an organization that's pulling this data and they will send a legal notice to you. So compliances, even when you have made data public, it's still not allowed legally to pull that data. So that's how compliances are. Why I'm trying to put this point is, that is still a past. We have DPDP Act now. How many people know about DPDP Act? Everybody knows about it. There was a lot of struggle to get this. Thankfully, we have rules out. Do you know the implementation timelines? Implementation timelines of DPDPA. We had GDPR. It started with GDPR, right? Everybody knows GDPR. It was privacy rights first started with GDPR, where we had to get it implemented by 2018. Anybody working on EU data, European Union data. Then there was a lot of struggle that we should have same in India, and we should have. We are a large democracy. Now we have, I think after a lot of repercussions, discussions, finally we have DPDPA that was rolled out and as an act and a rule. Do you know the timelines for you all to implement it? By when you should be ready? Do you know how many months you have left? So 2025, 26 was preparation and system changes, where we went to Government of India and METI and gave them industry recommendation. I was part of that. And we told them that, you know, these are not what are really practical in scenario. You need to change the rules. Some were made, some were not taken into consideration. It is 2026. METI and Government of India have given you audit readiness time in 2027 May. If you are not compliant, penalties will start.
And how much penalty? Any idea? 250 crore. And then plus, plus, plus. For example, if there are 2 breaches, it will be 250 plus 250. It's nothing that 4 type of breaches and it will be 250. That's the kind of seriousness government of India has given it. I'm still seeing a lot of ground, people are not taking it seriously. So what is there for publications? Have you thought about it? You need to be compliant. You can't say I'll not be. Tomorrow, if I am writing a book on DPDPA and AI, tomorrow if my content somebody else take, I am taking you all as a publication unit, for example, and my content, IP, somebody else takes it, makes some changes and publishes it. Whom I'll go to? I'll go to the publication. That I gave my IP to you, you signed it. How my content was copied by somebody else? How will you prove it? So what will I do is, I'll write a case against you, right? How will you safeguard yourself? Have you thought about that? Have you thought about that? Because that is what DPDPA is all about. DPDPA wants you to prepare, identify what is important for you. Please, I think when I talk about this topic, most of the people really get scared. The idea is for your company, your. DPDPA is different for everyone. Why? Because for example, my organization, we have just employees from India. Rest all is outside India. So what is scope for me is only employee DPDPA. But if you are like Paytm, I'm just giving an example. If you are a Paytm, your customer base is all India. The kind of volume of data you are getting is all India. Imagine the kind of compliances you'll have to meet. So what is applicable to me as an organization will not be applicable to Paytm. Paytm maybe have to do thousands of things, but for your organization, you just may have to do 2 things. Have you start identifying that? What are those 2 things you need to do? What are those 10 for you? Maybe 100 for you. Have you that clear understanding that where is the risk? Am I at a low organization risk, am I a medium organization risk, or am I a serious organization risk? It all depends the type of work you do, right? Have you evaluated that as publishers? You need to ask that question to yourself, because you just have May time by which penalties will start. And they are waiting for that. I can assure you, when the draft and act was written, I was working closely with METI, very closely. We had multiple sessions also. They are waiting for those top penalties, which will set the expectation right. I don't want anybody to be part of that group. Please start, will be my recommendation. Call the right stakeholders, right consultants who understand your business. वो आपको डराना नहीं चाहिए आप लोगों को, उनको पता होना चाहिए आपका बिजनेस क्या है, कितना है, और आपके लिए एप्लीकेबल कितना है. हर एक का एप्लीकेबिलिटी सेम नहीं होगा. The first question you need to ask those guys is what is applicable for me, or what is that must to have I need to do in order to be compliant. You can't get away with it. एक एग्जांपल जैसे प्रिया मैं बताता हूँ, जैसे कि there is no should now. It is already, as you can see, after 2027 May, you will start getting penalties. They gave you 18 months. They gave all of us 18 months. But we are seeing people are not getting serious about it. Yeah. Because the publisher indirectly storing the child data. It is, yeah. Right? You are storing by your platform, like if you are providing a LMS system, right? कलम सर बात कर रहे थे LMS की. अगर आप LMS सिस्टम अपने बच्चे को दे रहे हैं, जैसे सर ने कहा कि क्लास मैप का ऐप डायरेक्ट आपके बच्चे को एक्सेस है. आपके बच्चे की इन्फॉर्मेशन है, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, एज, जेंडर, और उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी है उसमें, डेट ऑफ बर्थ. सो आपके चाइल्ड की इन्फॉर्मेशन है उसमें. इन द DPDP एक्ट इज़ हाईली कंसर्न डेटा, क्योंकि आपके चाइल्ड का डेटा स्टोर कर रहे हैं. आपने क्या कंसर्न लिया है उस बच्चे से, उसके पेरेंट्स से कंसर्न लिया है? द कंसर्न फॉर्म हैव यू साइंड विद द पेरेंट्स? किसी ने लिया है? तो अगर आप कोई ऐसा मटेरियल किसी को भी दे रहे हैं, कोई ऐसी सर्विस, चाहे वो SaaS बेस्ड सर्विस हो, क्लाउड बेस्ड सर्विस हो, या ऐसी सर्विस जिसमें आप किसी भी यूज़र से, किसी भी चाइल्ड से डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, उसका कंसर्न लेना इज़ मस्ट इन द DPDP एक्ट. इंडियन गवर्नमेंट लॉ में ये इम्प्लीमेंट कर दिया है. पहले GDPR में था कि आप GDPR EU का डेटा आप स्टोर कर रहे हैं अपने सर्वर के ऊपर या एप्लीकेशन के ऊपर, या आप ईमेल से डेटा ले रहे हैं, तो आपको कंसर्न लेना है. आपको उसकी बाउंड्री सेट करनी है कि आप यूए से बाहर डेटा नहीं ले जा सकते, वहाँ पे सर्वर होना चाहिए. द सेम थिंग्स इंडिया ऑल्सो हैज़ इम्प्लीमेंटेड. DPDP एक्ट इज मोर कंट्रोल्ड, मोर डिटेल्ड लेवल is implemented now, and now the timeline is already started. Yeah.
So it's not even a law, it's a rule and act. Where, for example, we have an IT Act where we talk about what are the IT aspects. Similarly, what they have given, they have first given the Act. When they rolled it out, they put it, what is the expectation in the Act? And for example, there is, I'm just giving an example. They are saying that you need to have bare minimum security. I'm just giving an example. That is there is a definition of it in Act. In rule, they are exactly telling you what needs to be done in that. So when you look at DPDPA, you have to look in conjunction of both. So to Narendra, just to quickly close on, that's why I said what is applicable for A organization may not be applicable for B. Maybe आपके पास child data है ही नहीं. So you don't need to worry, you don't need to do 20 things, you just need to do 10 things. But have you identified, have you gone to that level? कि मेरे पास किस type का data है and DPDPA में क्या करना है? I think nobody has done. What I have done is quickly we have identified must to have compliances from publication perspective. Yeah. So I'll just quickly walk through in the interest of time. Please start with legal and compliance. You need to first identify आपका business किन के साथ है, उनके contracts आपके साथ कैसे हैं. Because we do very business on trust based. In India, the pillar, when we look at security and privacy, it's divided into 4 towers. Security, it's technology, process, people, and culture. But in India, when you look at privacy, there is a 5th pillar. It's called social. We can't get away with it. There is a hardcore, it's not in GDPR, it's not anywhere. In India, it is social and it's an integral part of our privacy framework. We should never forget it. And it's not easy in a country like India also. But for you guys, when you start, the moment you start doing business, आप किसी के साथ भी नया contract sign कर रहे हैं, जो India based organization है, आपको उनसे कुछ सवाल पूछने हैं, आपको उनको पूछना है, मेरा data कहाँ secure रहेगा? There is a data processor agreement. You need to sign with it. अभी तक नहीं था, चलेगा, आगे जाके नहीं चलेगा. You need to have your data processor agreement with the vendors who are based out of India, in case you are transferring or processing your data with their support. Those are the very basic things. For example, legal and compliance, you need to have those. In case, abhi hum Narendra and I think Yogesh was explaining about third party aap lete hain, right? Third party ko aapne, are you making them, you need to kind of make sure कि they are obligated कि आपका data उनके पास है और उसको secure कैसे कर रहे हैं, right? क्या आपने वो contract में final किया है? You're not even thinking about that. That's what I'm trying to say. It starts with that contract and it flows down. So start with contract, जिनके साथ भी आप नया contract sign कर रहे हैं, उनके साथ आपका data processor agreement होना चाहिए as per DPDPA. Next is, अगर आपके subscribers है, like Narendra अभी कह रहे थे, child है, there is a explicit notice aspect in it और आपको consent लेना है parents से. उसके बिना आप applications को नहीं ले सकते हैं. It's not that. And government of India is taking it very seriously because बाकी countries में 13-14 year, India में तो भी उन्होंने 16 का benchmark रखा है. But then if you are taking child, for example, we saw a lot of apps, but आपने अपना workflow ऐसा बनाया कि वो आपके पास consent है. अगर नहीं है, you are breaching. और कल को अगर आपका audit हुआ और वो consent नहीं मिला या कोई breach हुआ, you will have a 250 crore plus penalty. Think about it. Content, revenue and protection, watermarks, जो आप book है, book की sales है, book का data कहाँ जाता है, उसको कैसे secure कर लेते हैं. In DPDPA, there is an explicit requirement about data. उस data को आप safeguard कैसे करते हैं. It's my book. I want to safeguard the interest and I enabled you guys to have that protection. क्या आपने उसको रखा है कि नहीं रखा है वैसे protected. Again, अगर कोई breach होता है, उसकी accountability आपकी होती है. So आपको क्या करना है? आपके पास ऐसे सिस्टम्स है क्या जो लॉग रखते हैं, ट्रेसिबिलिटी रखते हैं, जस्ट टू शो केस अगर कल को आपको कुछ प्रूव करना पड़ा कि मेरा ब्रीच नहीं है, मेरी गलती नहीं है, हाउ विल यू प्रूव इट? डू यू हैव राइट सिस्टम्स टू प्रूव इट? That is what you have to think. It's not only about compliance, it is about if tomorrow a breach happens, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सेफगार्ड करोगे? Have you thought about those? And what is that bare minimum? मैं नहीं कह रही बहुत ज़्यादा करना है, but at least to start with bare minimum by which you can protect your organization. छोटा सा एग्जांपल लेते हैं प्रिया यहाँ पे. जैसे कि आपके पास पब्लिशर ऑथर आता है, आपको कंटेंट देता है, आपने क्या किया, उसको ऑफलोड कर दिया थर्ड पार्टी पे. एक तो टिपिकल एग्जांपल, आपके पास वर्कलोड नहीं है, टीम नहीं है, अवेलेबल नहीं है. DPDP एक्ट में एक कॉन्सेप्ट है कि कौन डेटा प्रिंसिपल कौन है. मीन्स डेटा प्रिंसिपल जिसका एक्चुअल में डेटा है, जिसने डेटा बिल्ड किया है, वो है डेटा प्रिंसिपल. ऑथर इज डेटा प्रिंसिपल. एंड
आपको डेटा डेटा किसके पास आया? डेटा कंट्रोलर, द फिड्यूसरी ऑफ डेटा इज यू, पब्लिशर। आपके पास डेटा आया, आपने कहा कि मुझे ये डेटा, ये बुक्स में ये सारी चीज़ें दे दो आप मुझे, आपके ऑथर ने आपको सारी चीज़ें दे दी, और आपने क्या किया? ऑफलोड कर दिया। किसको? एक थर्ड पार्टी को ऑफलोड कर दिया। वो बुक प्रिंट करने जा रहा है, वो उसमें एडिटिंग कर रहा है, प्रूफ रीडिंग कर रहा है, बाइंडिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, आपके लिए कर रहा है। वो आपका थर्ड पार्टी वेंडर हो गया। उसको कहते हैं प्रोसेसर, डीपीडीपी एक्ट में। अगर प्रोसेसर ने आपकी कॉपी बना के मार्केट में बेच दी, अगर आपके ऑथर ने क्लेम किया आपके ऊपर, जबकि आपने नहीं किया वो, लेकिन जो पेनल्टी है आप पे ज़्यादा होगी, उस पे कम होगी, मतलब मिनिमम होगी। और अगर आप पे और भी ज़्यादा होगी अगर आपने थर्ड पार्टी रिस्क असेसमेंट नहीं किया है। थर्ड पार्टी रिस्क असेसमेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी थर्ड पार्टी को जब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंगेज कर रहे हैं, अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा उसके साथ शेयर कर रहे हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं, आप इंश्योर कर रहे हैं कि वो डेटा कैसे प्रोसेस करेगा, कहाँ स्टोर करेगा, क्या वो इनक्रिप्ट करेगा या नहीं करेगा, रोल बेस्ड एक्सेस इंप्लीमेंट कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं, सिक्योरिटी मेजर्स है या नहीं है, या फ्री एंटीवायरस यूज़ कर रहा है वो, ठीक है। तो आपकी सिक्योरिटी टीम का, आपकी आईटी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस भी थर्ड पार्टी को आप कॉन्ट्रैक्ट दें उसका सिक्योरिटी असेसमेंट करें। राइट, आई थिंक इसमें एक पॉइंट मैं कवर करूंगी। फॉर एग्जांपल, आप सब एआई फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशर्स बनना चाहते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसा है, ये भी एआई फर्स्ट। जब आप एआई फर्स्ट के बारे में सोचा, आई जस्ट गिव अ क्विक एग्जांपल। हमने एक स्क्रिप्ट क्रिएट की थी रिसेंटली, एंड ऑसम स्क्रिप्ट थी, कन्वर्ट कर रहा था जॉब को ए जॉब टू बी जॉब। सेम एनवायरनमेंट पे ए स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से चली, और बी स्क्रिप्ट ने ऑथेंटिकेशन को माइनस करके उसके चेकबॉक्स ही उड़ा दिए, एंड सडनली उसको डेटा को पब्लिक कर दिया। सेम स्क्रिप्ट्स सेम सिनेरियोज में दो अलग अलग तरीके से चली। सो जब आप कोई भी एआई फर्स्ट होने के लिए एज अ पब्लिकेशन यू वांट टू बी एआई फर्स्ट, बट जब आप किसी एआई को ले रहे हैं, please think about it. What is that bare minimum compliance check you need to do with them? You need to ask them right questions. अगर आपको वो right questions नहीं पता है ना, you will be sorry to say that, you know, you'll not be having right questions and you'll not be getting right vendor onboarded. So I'm just giving you a right example जहाँ हमारी build script AI की, it was behaving two scenarios differently. So when you are taking any AI system, tool, when you are integrated that in your organization, know what to ask. क्या मेरा डेटा इंटीग्रेट होगा आपका मॉडल ट्रेन के लिए? वो कहेंगे नहीं। आई रिसेंटली फेस्ड इट, जहाँ मैंने एक वी कॉल समबडी एंड वी आर यूजिंग दैट टूल एआई का, दे सेड स्टेटलेस। आई सेड ग्रेट, स्टेटलेस है? उन्होंने कहा ये तो मेमोरी में भी नहीं रखेंगे कुछ। आई वाज लाइक चलिए बढ़िया है। थोड़े दिनों पहले आई वाज डूइंग असेसमेंट ऑफ माई टीम, आई गेव सम कीवर्ड्स, कैन यू जस्ट ड्राफ्ट समथिंग फॉर मी बेस्ड ऑन ईयरली असेसमेंट आई हैड टू डू 6 ईयरली। मैंने 2 कीवर्ड्स डाले थे, उसने मुझे 10-12 लाइन्स बना के दी। वो डेटा जो उनने मुझे दिया वो मैंने 8 महीने पहले पूछा था। सो आई कॉल्ड, आई सेड यू सेड इट्स स्टेटलेस, हाउ डज इट रिमेंबर जो मैंने 8 महीने पहले दिया था? उसको ज्वाइन करके फीडबैक दिया उसने मुझे बना के। सो इवन ऑर्गेनाइजेशंस जायंट्स दे आर कमिटिंग इट्स स्टेटलेस, बट एक्चुअली है नहीं। सो व्हाट आई एम सेइंग, वी आर इन अ वेरी डिफिकल्ट ट्रिकी एनवायरनमेंट, बट जब आप किसी एआई सिस्टम को अपने में इंटीग्रेट कर रहे हैं, कॉल समबडी जिसको वो अंडरस्टैंडिंग हो कि वो आपका इंटीग्रेशन राइट कर रहे हैं क्या। That is really important, and you are able to ask right questions from AI compliance. It should be stateless, model integrate nahi hona chahiye, etc. Crisis readiness, vendor readiness. Crisis readiness is we all in a world always work in a scenario हमें crisis ready होना होता है. So जब आप कोई भी integration कर रहे हैं AI, if उसमें कुछ problem होगी, are you ready? उसको prove कैसे करेंगे आप कल को? You have to think about those elements. Next. Just let's come to next slide. I'll just quickly summarize in previously what I told about is. One, first, please go back and check what DPDPA requirements are applicable for your organization. If you don't have, call somebody, have that understanding, was it applicable for you? Whatever is applicable for you needs to get started. You should need to have an action plan of it. Else, starting 2027 May, you may start getting penalties. Think about it, every organization is different, every use case is different, and you need to have a structure to track those actions into closure. We call it risk assessment. Please get that done. Secondly, ask the right questions. When you are integrating any AI into your system, you should be aware what are those 10 questions at least to start with I need to ask. वो clarity होनी चाहिए. Once you have answer to those questions satisfactory, then only get any AI system integrated in your system. Last,
I'll just give an example quick here. Though these are, for example, when I go for any security integration with I say they should be ISO certified, SOC 2 certified. That's my requirement. See, based on work you do, what is your requirement based on which you will pull vendors? I don't work with vendors जिनके पास SOC 2 certification नहीं होती, because I know it's very tedious. बहुत मुश्किल से मिलती है. Some are there जो ISO 27000 है, and we tell them, okay, we'll work with you. Identify आपकी organization में जिन vendors के साथ आप काम कर रहे हैं, what is that bare minimum security they should have already in there. It's like their brand. Certifications are brand. Think about it. And secondly, I think जो एक point में I like to highlight, usually ऐसा होता है आप mail डालते हैं, for example आपने mail में एक book किसी को forward करी EU में, mail ही करी आप लोगों ने, right? It's a mail. आपको लगता है उसमें कुछ डेटा ट्रांसफ़र का कोई लीगल ऑब्लिगेशन हो गया कि नहीं? जस्ट एक मेल ही तो गई है. यू हैव अ ऑथराइज लीगल सिस्टम जहाँ किसी और EU की कंपनी में आपको काम करना है किसी के साथ, राइट? आपने एक मेल ही तो डाली उस ID पे. आपको लगता है कुछ लीगली मुझे फॉलो करना चाहिए था? नो? मोस्ट ऑफ द पीपल से नो. एनी आंसर? आपने किसी EU वेंडर या कस्टमर को मेल डाली है एंड देयर इज अ डेटा जिसमें PII है, आपने तो एक मेल ही डाली है ना, एंड दे आर अथराइज्ड, यू आर अथराइज्ड टू सेंड देम दोज डिटेल्स, बट इज देयर एनी ऑब्लिगेशन दैट यू हैव टू फॉलो? लाइक व्हाट? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, यू मे नीड टू गो बैक एंड इवैल्यूएट. जब भी आप कोई PII डेटा किसी EU का अगर किसी ने आपको भेजा है और आप उसको वापस मेल में भी भेज रहे हैं, आपके साथ SCC साइन होने चाहिए. अगर आपके SCC स्टैंडर्ड कंट्रैक्चुअल कंप्लायंसेस साइन नहीं है, आप ऑलरेडी वायलेशन में हैं. सो प्रिया एक चीज़ हाईलाइट कर देते हैं कि ये हम कंप्लायंसेस की बातें क्यों कर रहे हैं. हम तो इंडिया में खेल रहे हैं सब लोग. अगर हमें ग्लोबल जाना है, इवन दो इंडिया में भी सर्वाइव करना है, अब मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे सर्वाइव करना है, नहीं अब एक नेक्स्ट लेवल से नेक्स्ट लेवल जाना है, और या ग्लोबल मार्केट कैप्चर करना है आपको, ऑब्वियसली आपको सिक्योरिटी कंप्लायंस कंट्रोल इंप्रूव करने होंगे. द कंपनी हु इज वर्किंग ग्लोबली, they are looking for these controls, these compliances. Your team, your organization has to comply with the cyber security compliances. Then only they are going to share with the data. It's a business driven approach. It's not the mandatory और हमें करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है. It's a business driven approach कि अगर आपके business को grow करना है, आपको ग्लोबली जाना है, एक नेक्स्ट लेवल में अचीव करना है, तो आपको उस लेवल पे भी जाके सोचना पड़ेगा. Why? आप सोच रहे हो कि LMS लॉन्च कर देंगे, आप अपना AI टूल बना देंगे जिससे कि हम अपनी बुक, जैसे कि अजय ने आपको एग्जांपल दिया था, नेक्स्ट डे आपने इंप्लीमेंट कर लिया अपने एनवायरनमेंट में, आप बुक AI से बना रहे हो, आपका खुद का LLM है, खुद का रैग सिस्टम है, आपका डिफ्यूजन सिस्टम भी, आपका डिफ्यूजन सिस्टम भी खुद ही है, आपकी इमेजेस भी सारी जनरेट कर रहा है. बट आपका जब कंटेंट रेडी हो रहा है, वो ग्लोबली रेडी हो रहा है, जब आप क्लाउड पे शेयर कर रहे हो डेटा, तो क्या आपका क्लाउड एनवायरनमेंट SOC 2 टाइप 2 कंप्लाइंट, जैसा कि प्रिया ने बताया, क्या उससे कंप्लाइंट है या नहीं है? आप कितना सिक्योरली डेटा स्टोर करते हैं, किस राइट असाइनमेंट के साथ किसी को डेटा शेयर करते हैं, या ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैंडशेक करते हैं, इन सब के लिए ये जरूरी है. राइट, आई विल जस्ट क्लोज इट ऑन दिस नोट. वी ऑल वेयर ब्रांड्स, राइट? वी ऑल वेयर ब्रांड्स एंड वी वेयर लोकल स्टफ ऑल्सो इक्वली, राइट? बट इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आप ब्रांड पे क्यों जाते हैं. व्हाट डू वी मीन बाय ब्रांड? वी हैव दैट कि इनके पास स्टैंडर्डाइज एस्पेक्ट्स होंगे जो एक स्टोर पे मिल रहा होगा, दूसरे स्टोर पे मिल रहा होगा, with any, it can be with food, clothes, anything. It's similarly with security, privacy. The people who want to do business with you, they will want those basics in place for you. They will want that basic understanding, basic structure of security and privacy compliances. Your organization should know, and be compatible about it, right? Then only they will come and do business with you, one. Secondly, then only you will be able to pull more business. If you are not able to show those compliances and understanding of those compliances, you just, for example, I sit with 3 folks. One has awesome understanding, medium, and low. Whom will I go with my business with? I may have best of technology, but if I don't have best of understanding of compliances, I'll still go with first person because they have better understanding of compliances because that will take care of my legal aspects. And in today's world, that is the most critical layer. While you are working on security privacy, think about compliance and governance on top of it. Don't look at any structure which doesn't give you this structure. That was my closing note. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. Now everyone supports cybersecurity since penalties are announced. Nothing motivates investment in cybersecurity faster than a legal notice.
Over to you, Narendra. So I think हमें सेशन को आगे ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए. So I'll hand over to you, please. Thank you. अभी तो बहुत सारा केस स्टडी भी हम कर सकते थे, जैसे ईरान की केस स्टडी है कि उन्होंने किस तरह से अटैक किया दिस यूजिंग द क्लॉड, एंड यूएस गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर क्लॉड टू इंटीग्रेट विद द इनसाइड सिस्टम्स टू कंट्रोल एंटायर डिफेंस एनवायरनमेंट, राइट. सो कभी और करेंगे. थैंक यू. Thank you so very much. Thank you for this very, very valuable and very insightful session. I believe you all must be a little more curious about more things, but then once the platform is open for all of you, you can reach out to the team members and you can definitely ask your curious questions. But before actually announcing the results of the activity that we did, the results are already there with the team members. We would like to felicitate our keynote speakers who have given you some expert sessions today. And for that matter, I would like to invite once again the core member team of FEPI, our president, sir. Can we please have Mr. Gopal Kishanji? Also, following him, I would also like to invite our General Secretary, Mr. Rajesh Gupta ji. Joining him would be our Treasurer, Mr. Rajiv Goyal ji. Can we please have you here on stage? Everybody, can we have a huge round of applause for the entire Federation of Educational Publishers in India core member team committee, and a huge round of applause for yourself because you were literally taking part. That was the main motto of today. And first of all, I would like to invite here on stage Dr. Deepti. Can we please have you here? Dr. Deepti? Dr. Deepika Jain. Thank you so much. एक बार जोरदार तालियां. Can we please have it? Priya ma'am, can we please have you here? She just walked out. A huge round of applause. Can we please have Narendra Vishwakarma ji over here on the stage, please? Please come up. Please come up. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Narenji, please. Thank you so very much. Thank you so much. Can we please have Rakesh sir right here on the stage? Everybody, put your hands together. Louder. Now can we please have Mr. Yogesh Vishisht right here on the stage? Everybody, put your hands together. Thank you so very much. And also, sir, we had a brilliant session on behalf of ClassMap.
Can we please have Gaurav sir, Mr. Gaurav Jain and Mr. Akash Seth here, right here on the dais, please. The power-packed session that we have from both of them. Everybody put your hands together. Can we please match up their energy level? Thank you so much for a wonderful session. Thank you so much, sir. Now, I would like to invite here on the dais some of the core members from our event partners team. Can we have the core members of JC Publications here? Aditya, sir, if you're here. Mr. Aditya? Thank you so very much for the entire support that our event partners have given us. Without that support, I believe this workshop was not at all possible. So thank you so very much. A bigger round of applause. The kind of insights that we have received from today, I'm 100% sure that we are learning something new at least. Or if there was something which you already knew, maybe it was a good revision for us, because that is what education is all about. Thank you so much. Can we please have the core members from Tarun team? Team Tarun. Tarun Publications, can we please have you here? A huge round of applause, everybody. Such collaborators are very, very important for any event to be successful. And I am literally very, very thankful to you. Thank you, Tarun Publications. Thank you, JC Publication. Thank you for your support. Also, following them, we do have Prachi Smart Books for Smart Learners. Can we please have the core members here on this dais? Akshay, sir. Joining them, we do have one more gentleman. Thank you so very much for being here. Everybody, come on. Now can we please have the core member team from Rohan Books Corporation Private Limited. Can we please have? Okay, they're not here, but a huge round of applause for the team as well. Come on. So much. No, before that, sir. Before that, we do have the winners list, right? How can we forget them? The core members from our sponsorship team, the team members, the partners, event partners, can we please have you all here on the stage? Team members, Gaurav Jain sir, can we please have you here again? Akash sir, can we please have you here again? Aditya sir, can we please have you back here again? The event partners and our power sponsors, can we please have you here? Perfect. I think that would be a perfect scenario to give away the gifts to the winners. Naren sir, would you like to accompany me for this announcement? I'm super excited because I heard all of their ideas and I was very impressed by the ideas of some immersed books experience, virtual reality experience and whatnot. Can we please fix the mic? Can we please fix the mic? There is some hindrance. Thank you. Check one. Okay. You wish to do this? All right, everybody. So the results are here on my, on the behalf of our team to me now. So I'm very excited. Actually, you announced that there would be 3 positions, right? So basically the team thinks that there is no team that deserves to be on the 3rd position. So there is a tie in the 2nd position itself. Isn't that great?
So whenever there is a competition, I always believe that I should say this, that nobody loses. Either you win or you learn. How many of you think that you are the learners today? Please raise up your hands. How many of you think that you're the winners today? Make some noise. Okay, only people at the back think they are the winners. Okay, let's see. The second position is divided into two. So the first name is Sonia Mittal and team. Can we please have you here? See, I was right. Did I not guess it right? Perfect. Congratulations, Sonia Mittal and team. Wonderfully presented. What a remarkable idea. This is the second position, the first runner-up of the show. Congratulations. Thank you for sharing such a wonderful idea. From the audience, I would just like to ask, any one of you remember what idea did they give? Were you listening? Anything, any one-liner explanation only. Anybody? You were in the team, na? Nobody? Wonderful. In just one line, if you would just like to, just give a glimpse and tell them a recapitulation, not the full brief, just one line. So we have created one chapter, the most discussed one about, that is how to implement artificial intelligence using computational thinking at the primary level and along with the middle level, which can be extended further to the secondary level. And it definitely deserves the first runner-up title. Congratulations. And joining them here, as I just mentioned, that we do have a tie between two teams. The second team that I'm going to announce, they both have actually scored the same points, so there is no first or second in this. Any guesses? Anybody who heard all the ideas and maybe can be the judge for each one of them? Okay, nobody. Shubornu and team, can we please have you here? Well done. Congratulations. Congratulations. Very well done. What a great presentation it was. Anybody from the audience who would just like to enlighten one-liner from their presentation, whosoever remembers? या lunch के बाद हम सब भूल गए हैं अब. Is that so? यही हुआ है ना, उस टाइम तो याद था सब कुछ, अब भूल गए हैं. Great. Any one-liner you would like to present from your team? After the... this time not you. Just one-liner. In like one line you have to explain what did you present. So it was the use of AI to create the content with the digital videos that would be available for the students with the immersive classroom where the students will be feeling like they are immersed into the content completely to learn whatever the content is there in the books. You know, when I was listening to your presentation as a child, I used to hate history, and if I would be able to go back to the Harappan civilization and see how it actually went ahead, I would have just scored 100 or 100. So it is great. History is difficult to remember, but actually that is a very brilliant idea, which I believe that you should definitely create it, Thank you. Thank you. Perfect, perfect. That is what this workshop is all about. I love it when like-minded people come together and they share brilliant ideas together, and that is how one idea can become an opportunity in the market. So thank you so very much, Uborno and team. You should do it right now, actually. You should just call your patent partner. Yeah. Okay. Anybody excited for the first position holder? किसको मिल सकता है? Whosoever believe in themselves, please raise up your hand.
ओके, सिर्फ 2 लोगों का हाथ आया है. सो दीपिका शर्मा एंड टीम, कैन वी प्लीज हैव यू हियर? वाओ, एक्चुअली जो बिलीवर्स है ना वही लोग हाथ भी ऊपर लेकर जा रहे हैं और उन्हीं में से प्राइजेस भी आ रहे हैं. दिस इज हैपनिंग फॉर द सेकंड टाइम दिस इवनिंग. सो कंग्रेचुलेशंस, वेरी वेल डन. वेरी वेल डन. ये जो बैग्स हैं ये स्पेशल बच्चों ने बनाए हैं. Wow. Okay. So these bags are actually handcrafted by special kids. So I think we are particularly focusing on social responsibility as well while conducting this workshop. So I have a question for the winning team. So who won, AI or human? So the idea was generated using the AI or the idea was original? So idea was original. So still we can say that human are ahead than AI. Humans using AI are more powerful. Yes. But yeah, perfect. Thank you so much. How amazing it was. Anything, any one-liner you would like to describe about your idea before you leave? We need to use the tool very efficiently. We have to think every point whenever we are designing a book. If we want to design a book, we have to see each and every aspect of a teacher, of a student, and a parent also. Making a final a chapter is always a very, for higher classes, the chapter is a long one, like it has 5-6 pages. So summarizing the chapter in a way that a child, if he wants to revise, he just opens the last page and he can quickly have a review of the chapter and prepare for the exam if he has thoroughly read about it in previous days. So basically making a user-friendly, a child-friendly summary for the students for every chapter at the end of Thank you so very much. All right, everybody, thank you so very much for a wonderful participation. And it was so good to see all of you participating with your core heart and learning something new, adapting something new, and also sharing your experiences and your questions. But before we actually, end this session here, I would just like to request that I request our General Secretary of FEPI, Mr. Rajesh Gupta ji, to please take a step ahead on the stage and give away a very nice thank you note to the partners and everybody who collaborated. But sir, please ensure that right after the word of thanks, we can have a group picture. Yes? Thank you. There's a line here. हौसले हैं तो राहें अपने आप बन जाती हैं. हौसले हैं तो राहें अपने आप बन जाती है. करना सिर्फ ये है कि अपने हुनर को तराशिए. अपने हुनर को तराशिए. उसी में ये हमारी पहली पहल थी. जो हमारे टीम के पास हुनर है, हम उसको तराशने का काम कर रहे हैं. फेपी का भी यही टारगेट था कि हम अपने जितने भी हमारे फेलो पब्लिशर्स हैं, वो जो आजकल नई टेक्निक आ रही है उसको इस्तेमाल करें और अपनी टीम के हुनर को तराशें. सो आई होप मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूँगा जितने पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे. अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए. आपके पार्टिसिपेशन ने इस इवेंट को बड़ा सक्सेसफुल बनाया है. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. देन आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू थैंक्स Narinder, the Prayog Bharati team, those who have done this wonderful execution of this event. Deepika, Dr. Deepika is there, Narinder is there, Rakesh is there, Yogesh is there, and the whole team. Wonderful job you have done. And we're expecting that in future also we can do a lot of things in this. Then, हमारे जितने sponsors हैं, Class Map, Gaurav, thank you very much. Then, Rajiv ji, Aditya, thank you very much for this.
Then we have Tarun Raj. Thank you very much. Akshay, Mukesh ji, Prachi Publications. And then Rohan Book Company. They are not there, but thanks to them also. And our president साहब, जिन्होंने हमें पूरा freedom दिया काम करने का, जिनके छत्र छाया में पूरा काम करते हैं, और हमारे ट्रेजरर साहब जो हमारे को पूरा मौका देते हैं कि भाई खर्चो जो खर्चना आराम से. And all the fellow publishers, once again, thank you very much. And in future also, we'll be keeping all these things, you know, कुछ ना कुछ event आपके लिए लाते रहेंगे जिसमें education भी होगा, entertainment भी होगा. That's what we want. And government also says, you know, आजकल आप activity based learning करें, तो why not publishers? हमें क्या दिक्कत है, हम भी सारा activity based काम करेंगे ना. Right? So thank you very much. And